अल्लादीन बिन मैं जिन मैं बन गई सीन विच 2000 क्या तीन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दादिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मीन और let's go अल्लादीन बिन मैं जिन मैं बन गई सीन विच 2000 क्या तीन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दादिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन मेरी किस्मत हो चाहती बराबर दो नो ओजोन लेयर पर हूँ बैठा मैं देख रहा तेरी मंजिल सो लो तेज तरार में ब्रेक से वॉर है बार्स घातक बजे लो लो मेरी जीप फिसलती स्लो इनकी चीख निकलती ओ नो सीट के सीट में बैठा ठीक जैसे धोनी हर वक्त करीब मैं जीत के बीच में जी के ये बनते पहाड़ी पर हरकत देख मुझे लगते बीच के वो लगते नीचे से टीचर पे कीचड़ इनकी तरह इनके फैन भी फुद्दू और फीचर फटीचर फेक फूकते फीके ये सभी पर हम हसल हर दिन चिल जैसे सर्दी ना करते गुंडागर्दी जितने साथ मेरे कभी गिन हिल टॉप के स्टिल बाप ये हिल ना सकती हिल हाँ कुछ मिजाज क्योंकि खुद पे नाज पर खूनी बार अगर हिंसा हो तो अल्लादीन बिन मैं जिन मैं बन गई सीन विच 2000 क्या तीन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दादिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन अल्लादीन बिन मैं जिन मैं बन गई सीन विच 2000 क्या तीन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दादिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मीन और नीचे मेरे कालीन शब्दों में जादू में जीनी आग निकल लफ्जों से बेकाबू हुआ वेमी साथ है कट्टो दिल में छुपी बातें मैंने लिखी है शिटी रैपर्स नजरों से भागे बने भीगी दिल्ली अब उड़ाते इनकी खिली ये दिखावे के है शेर अपने आगे लगी चीटी जिसने इज्जत ना की थी हमने सोच करी सीधी ये चींदी अपनी बीवी को भी बोलेंगे अब दीदी यहाँ अंधे हो आप जनता बस देखे अब बंदे का नाम पहने नकाब ये इंडस्ट्री जाली यहाँ काम निकालो बजे घंटे पे आप कैसे देखे कोई ख्वाब हुक्म करो आका इनके चमचे है पास बाबा हिमाचल से लाए रियल ज्वाइंट ये सीन लगे फेक तो फिर करते हम साफ मत होश करे ये स्किल्स सच बोल तुझे क्या ना चिल शब्द कोश तुझे देंगे स्वपन दोष घुसे ये खरगोश अपने बिल में संकोच ना दिल में जब संगीत बजे हर दिन ये घंघोर कलयुग पावा हम ना रुकेंगे अगर तुम साथ हो तो So what's up guys, welcome back to the channel and the world of unpredictability। की हाल चाल सभी के भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। हेलो आरव भाई, क्या हाल चाल है? हेलो आशिफ भाई, राम राम मेरे भाई, की हाल चाल? हेलो जनरल नॉलेज, राम राम भाई, क्या हाल चाल? हेलो किलर भाई, हेलो कनाऊ भाई, की हाल चाल है? सात्विक भाई, बहुत टाइम बाद पीएमपीएल मेरे भाई, आज बहुत टाइम बाद पीएमपीएल आपका हो रहा है। आज लॉन्डो सबको बुला लीजिए। हम कर रहे हैं मतलब लाइव कर रहे हैं, पीएमपीएल लाइव कर रहे हैं। आ जाओ लॉन्जो, क्या हाल चाल है? आवाज सही से आ रही है? लेट मी चेक। हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग ऑडियो इज गुड ब्रो। 60 FPS फ्रेम आपको जा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया जी। 60 FPS फ्रेम PMSL मिस्टर डुम्बाई। और बोलिए, और बोलिए मिस्टर डुम्बाई। और हेलो हनी सिंह, यो हनी सिंह, की हाल चाल? माफिया मुंडीर। पबजी बैन होने से नेपाल गेमिंग को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला है। पबजी बैन होने से नेपाल गेमिंग, हेमलो भाई समझा नहीं आपकी बात, क्या बोलने जा रहे हैं आप? चलो इग्नोर दिस गाइस, बाय द वे लेट्स गो मूव इन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि IHCN लियो अच्छा खेल सकते हैं। लियो अच्छा खेल रही है, टीचू के भी गाइस अच्छा खेली है। सर बिग फैन, मी टू बिग फैन ऑफ यूएस मेरे भाई, मी टू बिग फैन ऑफ यूएस, मी टू बिग फैन ऑफ यूएस। हेलो निदू भूटान भाई, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो गाइज आज हम सबको वार्म वेलकम कर रहे हैं। तो गाइज सबको अगर वार्म गरम गरम वेलकम चाहिए तो आ जाओ चैट के अंदर, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम को, ठीक है? हेलो भाई, हेलो चिराग अग्रवाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे भाई? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? मतलब पहले दो स्लो होता था पीएमपीएल में नेपाल के लिए, बट अभी 10 स्लॉट है, सो हैप्पी। ओके ब्रो। कुलदीप पाटिल, हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है कुलदीप पाटिल के? क्या हाल चाल है? बताओ गाइस, क्या लग रहा है आज डे 1 पे कौन मचाने वाला है? गाइस डे 1 पे कौन मचाएगा? नेपाल मंगोलिया बांग्लादेश। ओ माय गॉड, 18% पे योगी गेमर भी है। गाइस वोट डालना ना भूले।
ब्रो मुझे ठंडा वेलकम दे दो। लो भाई ठंडा वेलकम ले लो। अयोगी मीन्स अयोगी, एक योग्य गेमर, अयोगी गेमर। मीनू भाई लाइक इट्स लाइक अभी देखो अपनी स्क्रीन के सामने, ए को अलग कर दो, योगी को अलग कर दो, गेमर को अलग कर लो। एक योग्य, योग्य को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे देख लेना, वर्ड जो भी होता है, एक योग्य गेमर। सो गाइस समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए? वह दिमाग लगता है नाम सोचने में, बनाने में। CD125 गेमर हाय हाय ब्रो व्हाट्सअप। EL नेक्स्ट वीक कब होगा? ब्रो अभी परसों 2 दिन बाद थर्सडे को, इसी वीक हो ना। DRS कम बैक, ये स्लॉट फ्रॉम इंडिया। ये नहीं किस लिए? बढ़िया भाई योगी ओपी। बाय द वे यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, थैंक यू सो मच मेरे भाई। हेलो CD125 भाई। तो PL में है भाई गेम साउंड बढ़ा देना भाई। अजीत थापा भाई आज आप जितना बोलोगे उतना गेम साउंड रखिए, ठीक है? लो साउंड में मत देखना PL की तरह। अरे अरे नहीं भाई, मुझे पता ही नहीं था लो साउंड पे PL हो रहा है अजीत थापा भाई। वो मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि अपनी साउंड ही लो रखी है। समझे बात आप? रुको मैं रिफ्रेश कर लूँ एक बार। Then we have the players of ओके MB गाइज Esports, इधर भी स्टार्ट हो Seal जाए। Esports, अभी वैसे Badger. मैच जब होगा तब मैं स्टार्ट कर दूंगा। ला 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 ला। अयोग्य एंड योगी थोड़ा अलग अलग ही है भाई। इनू भाई ओके भाई। हिंदी कमेंटेटर्स नहीं है क्या? नहीं मेरे भाई, हिंदी कमेंटेटर हम कर रहे हैं ना। सो गाइस आपकी स्क्रीन के सामने ओवरऑल रैंकिंग्स है, जहां पर मिरिकल वाइब्स है टॉप के अंदर 455 पॉइंट के साथ। स्टॉलवर्ट यहाँ पे है आपका ऑलमोस्ट 60 पॉइंट पीछे, देन 297। हेलो यस ब्रो। हाँ बोलो सर। अरे मैं कल बारिश होगी, मौसम खराब हो गया तो ड्रीम 11 पे टीम बनानी थी ना यार। कल से स्टार्ट कर रहा है मतलब। अच्छा अरे अरे सुन, मैं ऐसा करना, मेरे लिंक से करियो डाउनलोड। मैं तेरे को लिंक भेजूंगा ना उसको, और मेरा रेफरल कोड डाल दियो तो 200 का डिस्काउंट मिले। यार सबके अकाउंट पहले से बन रखे हैं भाई, जिसको भी पूछ रहा हूँ। भाई भाई तुम तो खेले हो। आज तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ और तेरी वॉइस भी स्ट्रीम पे जा रही है। मैंने लाउड स्पीकर पे फोन। वैसे अरे अरे नहीं, सट्टा नहीं बोलते, गेम बोलते। क्या बोलते हो? क्या कुछ नाम है इसका? फैंटेसी फैंटेसी फैंटेसी। अरे वो बेनिफिट है ना, इसमें मार्जिन बढ़ता है। ओ छोड़ परे, ये तो उसकी बात है। चल ठीक है। मैं आज वैसे मॉर्निंग पे चले गया था। बाकी तेरा जो जानने वाला बंदा है ना, उसका नाम क्या है? उसकी फोटो भेज दियो मेरे को, और मेरे को बता दियो कैसा दिखता है। मैं उससे बात कर लूंगा मॉर्निंग जाऊँ। बाय बाय बाय। अयोगी हु प्रोटेक्ट। ST#290 यस मेरा। हेलो योगी भाई, मुझे दोनों मिला के चॉकलेट। ओके अयोगी कब देखने मिलेगा यार इंडिया? बहुत जल्दी मेरे भाई। अयोगी मर तो PL है भाई। यस BGMI कब आएगा पता नहीं ब्रो। तो गाइज सारे के सारे लॉन्डे बी एक्साइटेड ऑल्सो गाइज। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो क्या? ड्रीम 11 पे फैंटेसी लीग खेलते हो क्या आप? यस और नो कमेंट पे बताओ। अगर आप खेलते हो तो गाइज, हम नहीं खेलते तो गाओ जाओ गाइस, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेशंस आते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। प्रैक्टिस सेशन में जाके आप ड्रीम 11 जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो। मैं आपको लिंक देता हूँ, बट हमारे लिंक से और हमारा रेफरल कोड डालना ना भूलना, तो आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है इसमें शायद। रुको मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको देता हूँ इनवाइट, लिंक देता हूँ, इसको आप लेना। अच्छा 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आप। मैं आपको भेजता। तो गाइज जितने भी लॉन्च है आज, हम ड्रीम 11, ओ माय गॉड आज फीमेल कास्टर्स। तो गाइज ये रहा। तो गाइज दिस इज द लिंक, एंड मेरा आपका इनवाइट कोड है हिप्पी 60U।
4MV क्यों स्पॉन्सर मिला है? क्या होगी? स्पॉन्सर नहीं मिला है ब्रो, स्पॉन्सर हमको कहाँ मिलते हैं गरीब आदमियों को। बाय द वे मैच स्टार्ट हो जाएगा आपका अभी जब ये आ जाता है भाई। पीएल कब से ब्रो? परसों से पीएल 4MV ओनर इज आल्सो फ्रॉम नेपाल। हम लोग भाई मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आई नो नेपाल ब्रो। 4MV के ओनर के बारे में मुझे पता है, ही फ्रॉम नेपाल मेरे भाई। सो गाइज ये चीज है। सो गाइज दिस इज द लिंक एंड रेफरल कोड उसको डाल लेना हमारा। लाइक कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं मिला है बाय द वे, ये तो हम ऐसे प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल गया क्या? एडवर्टाइजमेंट कौन सा पैसा एडवर्टाइजमेंट का ब्रो? एवरीथिंग हमको नहीं मिलता ब्रो, हमारा पैसा कटता है कल के दिन। लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच अजीत थापा भाई। कल भी यार हमारे को उसने कॉपीराइट दे दिया भाई, ब्लॉक हो गया। बाय द वे दैट इज ऑटो जनरेटेड, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हमको कॉपीराइट्स दे रहा है। यस हेलो एनवी पैरा बॉय, वो भाई क्या हाल चाल है भाई के? 4MBST मंगोलियन मॉन्स्टर्स, यप मेरे भाई। देखो आज कमबैक करेगी भाई टीम। कल तो खेला ही भी नहीं और सजेस्ट भी नहीं करता। लो भाई हियर वी गो, आपकी स्क्रीन के सामने मैच नंबर 1 एंड थैंक यू सो मच शुभंकर दास भाई फॉर द 44 रुपीज सुपर चैट एंड द शगुन। हमारे दिन का स्टार्ट हुआ है, थैंक यू सो मच शुभंकर दास भाई। लव यू टू मेरे भाई, लव यू 2, लव यू 3, लव यू 4। पहला मैच द सेंट्रल ऑलमोस्ट फ्लाइट पाथ अपना गटका से ऊपर जाता हुआ स्टैलबर पे फिनिश होता हुआ। काफी सारी टीम्स को कोई दिक्कत नहीं देने वाली है। कौन दे रहा? साउंड उठा दिया जी थापा भाई। साउंड इज आई थिंक ऑलरेडी गुड, साउंड ऑब्वियसली बेस्ट है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। लव यू होगी, लव यू टू मेरी जान। कुलदीप पाचल go to Georgopol because that's definitely a big city. We might see a couple going there. And I'm also expecting once the circle shows up for the teams in Ferrypier and Primost to go for a head-on-head. लग भाई लव यू टू मेरी जान। there is a possibility, but right now TRZ again going for their home top location that is going to be the होता है पहले मैच के अंदर। मैं तो भूल भी गया हूँ गाइस, वीक 1 और वीक 2 देखा है हमने। वीक 2 नहीं वीक 1 देखा हमने। वीक 2 में काफी चेंजेस हुए होंगे पेजेस, बट लास्ट में हम देख नहीं पाए थे कि हम स्ट्रीम कर नहीं कर पाए थे क्योंकि दिल कर रहे थे लियो गट का स्प्लिट पे लियो और लाइक TRZ एलिमेंट्रिक्स ईस्ट अपनी जा रही है। ओहो क्या बात है, क्या एंट्री डाली है हमने भाई। because 4MB might come हाय हाय मेरी जान, क्या एंट्री डाली है भाई। 4MB तो रुक गई भाई, गाड़ी लेके भागेगी मिलिट्री भाई। मिलिट्री जोन, कंप्लीटली मिलिट्री जोन भाई। बसडू जोन, ये तो हमारे लिए गाइस वो हो गई। अब तो आदत सी हो गई आपकी स्ट्रीम की, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। नेपाली कास्ट लगाओ भाई, एवरीथिंग यू वांट। काफी सारी हमारी ना हिंदी ऑडियंस भी है, काफी लाइक समझ रहे इंग्लिश ऑडियंस हिंदी, तो उस वे में ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश सुन लेंगे अपना, हिंदी वाले हमारा सुन लेंगे। सो आप प्लीज समझना इस चीज को। ओके आई सी ने रॉ को पकड़ा यहाँ पर। In this much time, I'm not even able to close my parachute off. Elementrix going up against the plus of 4ME and Apex has been taken down and fragged with that pistol, getting a knock onto Apex at the same time Orange with that vehicle going for a knock onto Dog. This is not looking good. The rivalry is definitely there between the plus of Elementrix. Apex भी knock finish हुआ Elementrix से। Elementrix का भी बंदा knock है, Mr. Smokey। Mr. Smokey is bringing down the numbers of Elementrix as Orange has been taken knock दिया। एक दूसरे को बेटी 3 टीम्स है, फ्रैग से knock पड़े हैं, Smokey भाई है। East is the last आई गेस सेकंड लास्ट गाय, मतलब 2 ही बंदे बचे। स्मोकी भाई नॉक हो सकते हैं। ओह एसटी अभी पूरी जाती। देखो आपको बोला दामी भाई नॉक, दामी भाई फिनिश्ड। टॉप भाई कांशा भाई को नॉक दिया फ्रॉम रॉ। इताउता भी नॉक हुआ, फिनिश्ड। Come on, Ashish bhai. Damage that has been taken, competition. And the rest of the team does not seem like they're going to be in a good position to go ahead and like aggression. देख लो guys, aggression ST का aggression. Two of them are already dead, and one of them was just trying to save his life. There's definitely going to be some ratting, and this is too quick in a game to see like a solo survivor bhai, क्या हाल चाल? But it seems like ST is
they're on the hunt. They're on वो the लगा hunt. एसटी गई, एसटी The का स्प्रे gypsies अगर वो on, सीन the हो weapons जाता, are on. एसटी के It's लौंडे literally सारे like एक going ही into a गाड़ी में, jungle trying to look गाड़ी for भी the फट bear. चुकी है गाइस ऑलमोst। Well, they are not 4 MV, hunting. They are ओहो trying to ईस्ट find बाई a खोल safe दी वे compound, a safe एलिमेंट्रिक्स, position to लास्ट hold बंदा on बचा है। to. Because look at the vehicle. Few bullets in the direction, and the vehicle will explode. And two of the players of Stalwart Esports might go down. So they need to have a safety net of the compound as soon as possible. But what is happening? Sky of प्रज्वल 8 बटा भाई was रेस्ट crossing करो यार, that. The स्टीम players लो, of Team आई विल Stalwart सजेस्ट Esports, एक things are not स्टीम looking good स्टीम at लो, all. स्टीम Even for the players of एक Leo वो Esports, आती है well, they लाइक मेडिसिन are आती है, उसको also डालो in the close एंड proximity गो of एंड 4MV. जाओ मुंह But बंद both करके these teams, all these कि teams, आई Farhana, they कैन have just अंडरस्टैंड dropped एंड in. आई कैन फील। They don't मेरे have को the अभी थोड़े perfect दिन पहले ही resources. They से, don't have the perfect weapon मैं in 2 their दिन तक तो hands to मैं go कुछ for the करा ही नहीं initial fights. रहा, वीडियो नहीं As डाली we थी can उस टाइम see, पे। Refuse was just और दो having a अभी पीछे crossbow. से की That is बात है, not enough to take down the संडे players के of Leo संडे को Esports, थोड़ा थोड़ा especially in सैटरडे such को a ना स्टार्ट distance. हुआ था, But मंडे from the backline, डे Sus एंड is थर्सडे coming मतलब in. Things are वेडनेसडे not looking good मैं for the players पीछे of जैसे की 4MV बात है, at मैं all. वीडियो भी नहीं डाली थी Well, अभी 4MV is टाइम पहले। definitely in a very मेरा tight भी सेम situation. हाल था, It's मैं तो उठ भी literally नहीं a पा रहा था। sandwich that they are not even aware of how ओ much ओ ओ ओ Purely एनबी, know the positioning of Fuse. अबे But अबे in the अबे अबे meanwhile, अबे आईसीवाई लकी in the तो है meanwhile, भाई। ST is definitely going to take some damage. This is not the team that they tried to shut down. It's a whole फुल different team सेटिंग है बे trying to एनबी, shut आईसीवाई them तो down गए। instead. I mean, they were looking for safety, you're right, but doesn't seem like safety is पॉइंट looking for them. सिस्टम भी इसमें 10 Safety is 6 का, definitely ब्रो looking अब wayward. 10 6 It's का ही not पॉइंट looking सिस्टम है, like they 15 have वाला any पॉइंट सिस्टम advantage खत्म here. मेरे A भाई। great hold onto the bridge. And this definitely is going to be a very, very beneficial गुड position for मॉर्निंग the कुंज अग्रवाल भाई, की हाल team of चाल? एंड गाइस enemy esports 219 लोग because देख रहे हैं, अगर आप in the स्ट्रीम के end, अंदर नए हो everyone सो is मेक going to श्योर have टू to द cross लाइक from एंड one सब्सक्राइब bridge टू or द the चैनल। other लो भाई, because साउंड आई the थिंक इतनी military base सफिशिएंट is होनी the चाहिए। biggest area inside the रिव्यूज circle. And I think gonna be the only playable area inside the circle in a while. 4MB refused with just a shotgun and on a sliver of HP. Not looking good at all. Leo Esports having the best weaponry, having the resources in their hands, and they are using it to the perfection. 4MB, the team, they should have performed really good in this particular one, but Liquid with a grenade is going to take down Refuse over there. Instant confirmation coming in. And with that, 4MV, well, East न्यू is the जोन only मेटा और man ओल्ड वन, standing from न्यू this ब्रो particular न्यू। team. अब And पुराना को भूल जाओ, Southern पुराना Circles कुछ भी ought नहीं to रहा, be the best पुराना game इज for the ओवर, players of 4ME and Stalwart नई की Esports. शुरुआत And हो looks चुकी like है ब्रो। this time these are the teams suffering. Stalwart Esports, will they manage to go back to the भाई safety on एसटी the को other डबल side? पॉइंट क्यों 4ME नहीं left है with only ब्रो? a डबल single पॉइंट है player ही नहीं down ना to यहाँ one पे, man. फॉर्मेट सब सेम Well, है this पीएल time की looks तरह, like the पॉइंट Southern सिस्टम भी सेम Circle है। बट is not favoring the teams who have their टीटू को home, क्या the एंट्रीज मिली, residency towards लेजेंडरी the military एंट्रीज base. भाई। भाई Well, जलवा है there's हमारा, definitely टीटू के gonna भी be a लाइक जलवा है possibility of हमारा। easy rotation though, ये चीजें because यार 4MB की तरफ से 4MV, गलत होगी, even though दो they प्लेयर have जो a उनके great position, स्टार्टिंग it's में just one पकड़े गए ना, person वो standing. गलत सीन हो गया। So there's not much that can be done, no matter how much trigger discipline you have, no matter how good of a aim you have. If you're in a tier 1 game and अभी if you लियो ने have कंट्रोल another ले रखा हुआ team है पूरा with मिलिट्री। more man count advantage, you cannot do much. And I feel ये like क्या at this stage it पीएमपीएल does not पीके even में 2 matter वीक है और how इसमें many यस फहीम how भाई ऐसा ही much है, better your फॉर्मेट weapon है। is, how much better your ऑफिशियल्स के लिए utility is. ऑफिशियल्स को It's बोलना all बड़ा about the मुश्किल है भाई। mind games, 4MB का because when रूल्स it comes to एक्सप्लेन कर skills, दो। I think ईस्ट all है, these रिव्यूज players are है, at a ईस्ट subpar है, level with डॉक each है, other, and रिव्यूज है, it's definitely डिफ्यूज something है, that और puts your brain to test. कौन है This गाइस? एक is प्लेयर का more नाम like बताओ। chess than like हो PUBG हो Mobile हो। right now. East with that AKM is trying to knock down Liquid over there, but he has got no helmet, no vest, and nothing at all. Few bullets, and East is going to go down, and Liquid with the big weapon in his hand. Nothing could have been done in this situation because 1v4 where T was ओके way too गाइस, much for जो 4 टीम in the आपकी East. And हैशटैग with 1 पे that, चल रही है well, ओवरऑल 4MV रैंकिंग में wins भी, by back. ऐसे भी Something वो unheard टीम of. अभी आपकी अर्ली But for एलिमिनेशन the हुई है। first नॉट team, अ गुड 4MV स्टार्ट becomes फॉर the द first team to be 4MV eliminated एंड from the बैड lobby. इंटेंशंस। On the other इन side, we टीम have के the लिए players of Bad एक्सपीरियंस Intention बोल सकता हूँ, around इस the टीम के city लिए of काफी ruins. They have to move जरूर inside मिल the रहा होगा circle, इस have to लॉबी go के for अंदर। a very फर्स्ट big एवर टाइम rotation. आई गेस But खेल Bad रहे हैं Intention, प्लेयर्स this team यंग also, ब्लड्स, Hana, everything was अगर मैं broken गलत about them. नहीं। They were not able to perform at all एंड in week number बांग्लादेश टीम 1. को बिलोंग Week करती number है 2, टीम, they started तो अच्छा showcasing good एक्सपीरियंस individual टूर्नामेंट fights. में But मिलेगा। other than that, मीनवाइल 4 यहाँ पे Bad ऑफ गार्ड Intention still डीई के suffering. स्प्रेस And से this नहीं week बच also पाए, up to 2 a प्लेयर very bad start as नॉक्ड a एंड plus of फिनिश्ड अर्जेंटली, एंड DE. They are 4 going to take प्लेयर। down not just ओ
ओ on माय two गॉड, players during the एक ही rotation. व्हीकल के अंदर। Well. भाई भोजपुरी कास्टिंग नहीं है क्या ब्रो? Let's see किसी को how भोजपुरी far they आती है क्या? can go ahead, because as of now it seems like quite a few teams are in a similar एनबीबीएस का रेगुलर situation. And ड्रॉप if in case एंजल we भाई see हमारा, the यस मेरे teams भाई। on the upper side of the team chart, we might see some more dangerous situations coming in for them as well, and eventually it might just level down to having two or one men each team. If that happens, that's the only ray of hope that और एमवी Vitex, में EX and आइजल Raw can कौन है और actually असॉल्टर कौन है? go by. आइजल But ब्रो other than that, आपका oh, look at the है circle.
It's literally just a 50% टॉक playable टॉक area, इज द आइजल और and the असॉल्टर teams are भी still यही है, struggling to दोनों go ही back आपके in. असॉल्टर है। ओहो भाई, Coaching आज teams, जोन की excuse करवटें me, will you please कुछ come अलग back, ही मांग रही please? है भाई। Sitam is so far away. एएसएल What do you T2K make of this, Bhavan? DRS अभी भी मिल्टा की Well, Satan तरफ need the एंड points. I'm ब्रिज not कैंप worried कर about रखा them. है Late टीम rotation is ने, coming in. ब्रिज This के is just the ऊपर दिख second रही circle. टीम, The blue zone एनबी damage की is not टीम। going to be so much. But look at the position of the players हाय of हाय हाय हाय, Seal Esports and Leo लियो की Esports. They टीम were थोड़ा up सा close to आगे, each other, डीई की so टीम nearby अभी each other भी on the bridge जोन के area. अंदर पुचिंकी पे है। For a बैट second, it इंटेंशंस के looked दो like a प्लेयर potential close तो fight to आगे से start with, नोवो but से that's यहाँ not going to happen. रोटेशंस But at डालने the का southern ट्राई side, we करने have the वाले हैं। players of एसआई टीम Abrupt players, से we भी have the काफी लेट players मूव of इन कर रही T2K as well. This time, भाई। T2K, they went for a very early rotation. They do have a good compound. The entire military base was there, but now bit cautious they need to be, because Abrupt players देखिए भाई कैसे are सवाल also भाई one एकदम of the बढ़िया। strongest ब्रो team, रो not the ऑनर वर्सेस strongest नेपाली but a टॉस में very समझा strong नहीं and ब्रो, क्या capable बोलना चाह team रहे हो in the तुम? lobby right now. But talking about NB Esports, well, they are sticking to the bridge area, maybe going for the bridge camp. भाई So let's स्टार्टिंग see if they can find someone. गेम में से चुरा है क्या पीएम? Well, पता they're नहीं भाई, definitely रूल्स going to be भाई looking for पकड़ लिया someone, or मिल्टा पे maybe not. Maybe अपने just भाई ने looking हमारे for यहाँ पे बैड इंटेंशंस के दो the लौंडे जो opportunity बचे of थे not उनको भी having to पकड़ face लिया। anyone. I डेल्टा don't know भाई if एक that और is फिनिश यहाँ से निकालने वाले if हैं, that is the मोस्ट case प्रोबेबली even now इसी से when यहाँ पे Chicken Dinner रोटेशंस does not मारने hold वाले हैं as क्या? many points as it used to. एक But there it एक is. आईफोन गिफ्ट A कर दो sweet भाई, treat मुझे कर दो कोई welcome from the आईफोन side of गिफ्ट लॉल। DRS to Bitex. The moment they मुझे come out, आईफोन they are आईपैड going to be गिफ्ट shut कर दो down. But गाइस। this is still a fight that I do तो not want them to participate in or wait भाई for, स्टार्टिंग भाई because the blue एसटी zone की is लूट definitely नहीं pushing them है in, and that शायद, pressure is hard to क्या handle. एसटी की लूट नहीं हुई है And nonetheless, कि फार्म से an उतरे और उसके बाद unrequired जल्दी से one. This is an निकल गए थे वो। unnecessary fight, in my opinion, because you're having a hard time trying to find the person and pick them off. And in the हेलो meanwhile, दानिश you're भाई, definitely taking circle damage. किटी के तो And फ्री एंट्री also, किया जोन में। being अरे late सात्विक into भाई the टाइमिंग्स rotation बोलते तो टाइमिंग्स means that काफी you अच्छी are है। going to be gate लियो kept. के बंदे And you जो are थे going to उस have टाइम a पे lack of उनका real ध्यान estate that अलग you हो can रखा हुआ keep for था, yourself. Because in लाइक the उन्होंने end, उस टाइम पे when एक it comes to बंदा PUBG नॉक Mobile, फिनिश there's मारा था। अगर definitely a आप great रीफिनिश role नहीं that देगा the क्या? amount of area थैंक you यू। have under your control plays. डायरेक्ट यहाँ से किल And जाने that's वाला है। definitely डेल्टा something that बाजी you miss काम out कर on रहे हैं, बट if you're हियर वी late गो, प्ले into the जोन rotation. नॉक हुआ है। मेहदी ईएमएफ एंड बैड इंटेंशन की टीम भी Late यहाँ से आउट हुई है। rotations तो गाइस coming from the एपेक्स side of ईस्ट DRS, but DRS चोकर is more of फ्रैगर a एंड रिव्यू strategic team सपोर्ट। ओके as compared to the aggressive team. This showcase aggression only when required. This is something I like about the players of DRS. That is where they are in the top 5. भाई मुझे गेमिंग Consistency पीसी is का the key, आईफोन and का भाई DRS खुद knows it. They were बड़ा the most consistent one सेव in कर week number करके अभी हम 1, week ऐसा number 2 as well. लैपटॉप लिया है गाइस, And things are looking good. Yes, late हमारी भी rotation is है, coming in, बट आने but वाले I टाइम think पे if they manage to cross the bridge, गेमिंग पीसी which the करेंगे players of भाई NB डार्क भाई, Esports are camping right now, हम I भी कर think ले। DRS might perform good because of the numbers ओ advantage भाई they have. चलो On the भाई other बहुत side, we have बढ़िया the ये players of सर, Abrupt players लेट्स have गो a good एचएल, tone लेट्स to गो। their name, फर्स्ट but वीक आई है एचएल का inconsistency परफॉर्मेंस was the थोड़ा सा problem for the डाउन players देखने of को मिला था, Abrupt अगर players, मैं because yes, they managed to रैंकिंग देखी step थी। up their game from the mid of week number 1, but week number 2, Abrupt players, they were at the bottom. Well, भाई इस पोस्ट Abrupt players are में घुसने के definitely, लिए भाई मेहनत looking करनी like a पड़ेगी, team that is on a हार्ड sinusoidal वर्क, graph. ग्राइंड, यूनिक But दिखना we'll have पड़ेगा, to see what the next wave brings कर in, पाओगे? what week 3 looks like. क्या Because बात I है? feel like the single day that was given as a break between week 2 and week 3 यार इसकी must have रोटेशन definitely played a great role in setting up the ईश्वरी लग रही है momentum, भाई। setting up the mindset, setting up the pace for the teams, and giving them enough time to go ahead and टीआरएस का एक पैटर्न reanalyze what देखना, they want to सेकंड do सर्कल for the बिल्कुल rest लेट of है, the जोन week. बिल्कुल Because क्लोज again, इन्होंने, the more and देन more जहाँ closer पे you जोन get to the एंड हुआ होता है finals, देन the वहाँ more पे and more रुक वो diverse the आगे का game मूवमेंट starts तैयार getting. करते And हैं, I तभी feel like रुके हैं। मैं that's बहुत टाइम से definitely नोटिस कर रहा हूँ टीआरएस something का that ये the वाला चीज। teams have some great optimal opportunities in, because in the end this is बढ़िया, what they came for, टीआरएस के साथ right? साथ मैप So की I टीम feel like है specifically जिस the teams that feel like there's not much that can be एसटी done क्या आ might रही go है, ahead, एंड एसआई टीम ने भी take a few more fights than they're comfortable with, and the डिड teams on यूज the इन top वीक टू आई might just do डार्क वेनम whatever भाई? they नहीं want भाई because ऐसा तो they're on तो the top. It's not going to move them मिस out of हुआ the finals anyways. Obviously क्या है भाई, wanting to win लाइव is मिलेगा। definitely something they would like to do, but I feel like this definitely gives a एसटी का great एक प्लेयर कैसे experiment मर गया zone ब्रो? वो to those आईसी teams. आइजल साहब हमारे आगे जा रहे थे ब्रिज, वहाँ पे Certainly, एनबी but वालों ने yeah, यहाँ Sky पे has been taken होल्ड किया down, हुआ and था right
right now. Viper with that M16 tap shots is going to take down Mondo from the side of NB Esports. Sick is going for the revival onto his fallen teammate. At the same time, Viper do have the soft cover of the spokes, but Fistboy all by himself out there in the open has been spotted on and surviving on a sliver of HP. NB Esports, the split that is coming from their side is not looking so very promising. They have to do something, Fistboy, otherwise you are going to be eliminated very soon. Well, that's true. That's true.
I remember ब्रो long time प्रैक्टिस ago, लाइक me अच्छी and my लॉबीज team used to देखो आपकी literally just climb on these जहाँ पे भी aeroplanes होती and है try to go to the कि highest आपकी peak possible. Have you ever जहाँ पे done अच्छी that? लॉबीज आती है ट्राई करो वहाँ पे स्लॉट्स लेने Oh, का एंड certainly, ज्यादा से having ज्यादा a खेलना control of the cliff or a आफ्टर height दैट advantage is going लाइक to be so क्योंकि very आपके beneficial. टूर्नामेंट्स होते But हैं वहाँ पे defending ट्राई is करो it is a तो big मीनवाइल challenge. ओ We हो have NB Esports ओ going हो up against the plus of नाइस System डेबू Esports, and Akaze has been taken down. And NB Esports डेबू not looking so very good. Dobu with that Info 16 might be looking for a confirmation, and Fistboy is all stuck in that particular area. But Mondo out there in the open, receiving a hefty damage. NB Esports, you guys need cover as soon as possible. Absolutely. I was expecting the circle to have more water body inside of it, but somehow the circle has managed to go almost towards all land, and the next one might just be Oh, completely on land. This is a lot of, you know, emergency health needed signs that I'm seeing on the map. There's a lot of people that are knocked down, need revivals. A lot of teams are going to try to use their smoke utilities, and this is एक्शन definitely बाइक के going नेट से to दो बंदे जाने वाले result in a very polluted environment nonetheless, एक गया but at the same लो time भाई one that gives more opportunity वाइब्ड to the teams that have standing players that can actually go ahead and capitalize on this opportunity. well, Great certainly shutdown. Action, a 1v2 against the plus of System Esports. System Esports not in a good spot at all. But right now, Action has been taken down by Fistboy over there. And Fistboy with the grenade is looking for a knock onto Tops as well. Tops is also going to भाई retaliate. And perfect nade on the face of Fistboy. टॉप भाई Takes ने him जहाँ down. नेड On the करा other ना वहाँ side, पे we have फिश D बॉय खींच के going गया up against चुंबक the की plus of तरह कि C. मैं तो But यहीं right now, the जाऊंगा entire focus is on Stalwart Esports and NB Esports, as the numbers of NB Esports are not supporting their case at पीएल all. की अगली And स्टेज ब्रो Fistboy, well, थर्सडे he को has been वीरवार को eliminated now. थर्सडे अब इस थर्सडे That didn't take बाकी long. सब्सक्राइब करके That didn't take नोटिफिकेशन long बेल at को ऑल all. पे कर And look देना at this, आपको we're पता लग already in जाएगा stage यू 4, ऑल नो but बेटर we've किस only तरीके lost से करना है 3 teams so far. There's a lot of man फर्स्ट count रिची damage that कंटेनर has हो happened. बाय There's द only 40 एएसएल players एंड remaining, सेकंड but we बाय still have डीआरएस एंड 13 आईएच teams on board. The real estate नाइस is gonna be एनबी harder स्पोर्ट्स and मीनवाइल harder to गॉन keep control of, because the lesser members you have on your team, the lesser backup you have to actually go ahead and capitalize more and more area into the map. Illuminate, however, they're definitely taking care of players of Leo in the worst way possible by literally sending them all the way back to the lobby. Quite some nourishment, huh? थोड़ा And गाइस Rubs चैट players वगैरह पे looks नहीं like जाएगा they ध्यान are अभी trying मैच to देख रहा हूँ redeem अभी मैच themselves. पे 2 फोकस करो defeat points भाई already in मैच their देख favor, रहा हूँ and they're looking अब so समझने very की strong. चीजें The ट्राई plus of कर रहा हूँ TRZ, ब्लैक वीक a blind rush come ट्राइंग towards the compound of Abruptless, and they have managed to defend it without losing any of their own number. 3 defeat points on the other side. Like you mentioned, I8, they're also going against the few of the players and getting good defeat points in their favor. But look at the position of Matrix भाई अब Esports एसटी and मैच Elementrix. Well, निकाल the लेगी last player उनका from the ये side of वाला जोन Elementrix काफी has ज्यादा managed to survive up until now. Let's see for how इससे long ज्यादा can he स्ट्रांग है इनका survive, दूसरे because we वाला have जोन 12 जो teams आपका and मिड 35 players remaining, and आज it जो is एंड already stage 4 का circle. बहुत ज्यादा स्ट्रांग जोन इससे स्ट्रांग That's it sure is, but the circle, बट it's डीआरएस not creating as much pressure एंकर on the थर्ड players just yet फोर्थ as we क्लोज would इन होते expect, होते considering लाइक 12 थर्ड teams क्लोज are इन on होते board, होते and that is because काफी there's अच्छा only इन्होंने 35 स्पेस players बना लिया remaining. It does not फोर्थ क्लोज matter इन the होके number of teams जोन if the density एडवांटेज of population is आई8 going to be आई8 that आई8 low. आई8 फोर There's मैन definitely स्ट्रांग room to, वाइपर एंड वर्फ hide, पीछे room पीछे to एसटीई stay protected in. And I feel like there is a great advantage towards the team that have only one person remaining. They're gonna have an easy time एसटी के hiding. 8 So, किल्स है like एसटी के it's hard to suspect the पे single जीरो person एंड because 8 they अलग can है भाई literally तुम be पुराने anywhere, वाले while a फॉन्ट को team लेके मत requires चलो a ये compound एसटी के or a 8 ridge, एलिमिनेशंस है something much जोन इज more, अबाउट टू क्लोज गाइस concentrated to hide behind. So yeah, they might have this advantage, but that's just one advantage against all the things that are gonna be in their odds. So we'll see how that works out for these भाई teams. एनवी Raw कहाँ है and एनवी TRZ अपने पीएल पे होगी alongside प्रैक्टिस कर EX रही होगी definitely in a very bad position. The circle is already putting pressure on the team. So that's a situation they would want to avoid. एक्शन भाई However, currently around the plains, there's quite some damage. There's quite some damage onto a lot of ठीक है players. भाई ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है And with the डीआरएस ठीक है circle भाई shift, ठीक है I8, they are डीआरएस looking बिल्कुल so ठीक है promising right in the epicenter, but भाई साहब defending their position is not going to be so easy, because we have DRS on one side, अयो we have the players of Stalwart Esports on the other side. On the other hand, if you have a look towards the southern side of the circle, we have the players of Abroad players on the periphery. इस So बैंड होने वाले good position मुझे to hold on to from the लेजी northern मेरे को ये भी front. नहीं We पता have the players of सच्ची Dead बोलो Eyes coming in, but Mapex भाई Esports, हाय Leo has been taken down from a भाई moving vehicle by Incas, a cheeky one, the hiding one, a snake from the side of Elementrix Esports. He's being one with the nature, but now he should better be prepared, because the players
players of Matrix Esports will start looking for him. Guys, rules bhai OP the in way the he's chat out there in open, not looking so very promising, but Matrix, they have their own worries to deal with. That is the players of T2K, as CEO with a grenade T2K might OP in the try chat and take करने down का भी time Valley, आने but वाला he's है not going to have the आय नेड आया ओ वैली to realize the circle is coming in, but grenade right on the face of नॉक दिया संदेश भाई ने CEO ट्रेड पे takes him वैली down. को वैली का नेड आया था जिस Well, as of now, मैं the बोलने circle is वाला था ये definitely चीज उठा closing के in, लेके and MAB definitely is in a ये very, जोन very में bad बाहर आप बिल्कुल position. नहीं रह They सकते do want to नोवा make sure that नॉक there's एंड enough स्काई भी HP नॉक लियो से to sustain उसने यहाँ पे themselves. स्लेयर को There's दिया enough, ओके you know, स्काई का फिनिश लिया support coming in for this वाइपर player, ट्रू लव because सर it क्या does not क्या seem डिफेंड like कर रही है ये there is any किल at फिट this पढ़ते रहो moment. गाइस And losing players so far back into the circle बाजी definitely लिया makes it इनको harder and देगा harder for a team कैसे to का go further. But look at that, T2K, your team is also पैरन taking some कैसे damage. However, there's still 4 men standing, so I'm scared. Luzet knocked Viper का Valley is finish still bleeding. कैसे out there Lose that open, again. taken to my उसको यहाँ पे Inquest, knock करा and and IET Raven eliminated comes from guys the IET back eliminated eliminates the last man ESL from के the side पास of Elementrix मौका as well, but enough थोड़े damage बाद has been फिनिशेस done on उठाने the का side of एंड Matrix एक और Esports, टीम गाइस यहाँ पे and क्या that प्यारे T2K तरीके से Sandesh वाइप is करे going to T2K find the OP last यार player as T2K well, OP and in the Matrix chat Esports bids bye-bye at the 10th spot with just a single point to their name. Stalwart Esports having 3 players running very high on भाई the PL का horses, फाइनल्स looking so very 19 को है confident, 11 इस बार defeat का points, ओवरऑल having में the entire control of the northern front. देखो This देखो game क्या कुछ ought to be the game of Stalwart Esports. भाई DRS का क्या ही रोटी भाई बहुत Well, प्यारा we'll see. They do have a great number of eliminations, 11. Like nobody else has even crossed 5 yet, so they have more than double of the team at the second position when it comes to frag points. But yeah, these भाई क्या eliminations फिनिश are निकाला definitely adding up to their final total. 12 एलिमिनेशंस Make it टीम 12 STE गाइस on a one-man ST की loss. टीम अभी अगर एलिमिनेट भी हो What जाती है बहुत great डिसेंट पॉइंट ratio लेके must a जाने team वाले इन have to केस अगर reach that. एलिमिनेट भी हो जाता बहुत ही ज्यादा डिसेंट एंड गाइस जोन में देखो स्पेसिंग भाई हर एक छोटी Certainly, छोटी Stalwart दूरी पे Esports बंदे is there, has been Luzet taken को down by बहुत प्यारा नॉक DRS दिया किलर भाई ने DRS, the way the players are sticking together, they are susceptible to the grenades that might come in, but Action has been taken down. He was going for the rescue mission and save his fallen comrade, but DRS rolls with that mini tap shots, take him down, and Zed is still bleeding. There is no hope coming for him. There is no help coming for him. But DRS can defend their compound. That's the main thing. And for now, they are succeeding. All the 4 players are still surviving. Not the aggressive force in the lobby, but a very strategic team that is DRS. Let's see if they can eliminate the entirety of Stalwart Esports, because it looks like स्वागत है hello I'm Chin bhai Toke bhai welcome to the stream कैसे हो long time by the way your on the verge of elimination. the machine bro आपकी टीम बहुत अच्छा मार रही है बचा रही है 12 एलिमिनेशन The निकाल smoke दी is है definitely trying to help a पर little, DRS की रोटेशन so far successfully. बहुत प्यारी But the shots are not going to stop. Seal Esports from a long पनौती distance. लगा दी भाई trying to जिनेश get भाई यही back तो into काम the है मेरा fight. पनौती लगा दूंगा Not इसमें नाम लेता हूँ successfully टीम just yet, एलिमिनेट हो जाती है पता है आपको अभी मैं बोल रहा हूँ सील This does एलिमिनेट not हो look जाएगी like the best एलिमिनेट opportunity for any of the teams that are still inside lower edge compounds, specifically DRS. T2 के एलिमिनेट क्या हो There's जाएगी way या too नहीं many teams surrounding them, and the moment they have to push out of the compound, it's gonna get more and more एडवांटेज पे difficult. If the circle shifts not in their favor, टाइटन might अनीश just भाई push them DRS out. ऑलवेज कैंप ठीक Same है for टाइटन भाई Leo. ठीक है भाई ये भी ठीक है आपका कमेंट मतलब I feel DRS like को there's टाइटन भाई के definitely अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना अच्छा lot जोन of मिला है room अच्छा कंपाउंड है हार्ड कंपाउंड उसको छोड़ that के needs to be टीओ पे worked पुश upon. करना चाहिए Wait a second. टाइटन भाई यही कहना चाह Sharak, रहे please give me your क्या ना opinion on पूरा 2B, एसटी पे घुस के पुश करना चाहिए I mean, एक I'm लाइक वैलो seeing जैसे a guy वैलोरेंट from में the वॉल side of होती है ना Deadeye, all वैसी the way वॉल बना behind के the airplane. कि लाइक आगे पीछे से तो पड़ेगी ही नहीं कहीं से That does not seem like है the ना best भाई cover, does it? तो आपका बोलने का मतलब है But जिस he's टीम just के a पास solo अच्छा man जोन है standing. अच्छा He एडवांटेज है can't हार्ड engage in the कंपाउंड है fight. He has to वो stay on the होल्ड ना periphery करे of the वहां पे circle. वो So I बाहर believe निकल it's a जाए good बोले position. आ जाओ He's मुझे not मारो grabbing the attention टाइटन भाई यही कहना चाह रहे हो from ना all आप the teams टाइटन in the अनीश भाई lobby. He's fighting for the placement points because right now 19's 22 players still remaining in the lobby. So on top, Salt आपका is बोलने doing का मतलब everything यही to था the बिल्कुल यही था perfection ना that is ऐसे required in ऐसे this तो कॉम्पी में particular टॉप situation. करते हैं ब्रो But right now the जोन players of छोड़ Seal के Esports, they जोन better be क्या है careful यार of the मतलब grenade जोन पे क्यों like रुकना coming है from रुकना ही Stalwart क्यों है गेम रुकने Esports का ही and नहीं है vice जोन versa. पे But TRZ, well, they have been उसके eliminated. मारो Leo, they do have a good compound to their name. GRS looking so very fantastic, having a very good compound for themselves. But right now, Stalwart Esports and Nized is trying to find some opening through the grenades. The dynamites are down, but Nized is not able to find the knock. आई थिंक DRS गलत खेलेगा इस DRS A ने lot of भाई utility रोटेशन तो deployment इतनी प्यारी दी ही नहीं to no थी value as of now, but look at that. Stalwart Esports
finally क्या बोले securing भाई? some nades damage. डेल्टा भाई बहुत प्यारा, बहुत अच्छा DRS को यूटिलाइजेशन हो There's a सकता है good अच्छे से। knock. They must wanna capitalize on it रिक as पाजी soon as possible. बढ़िया, Probably विशाल का push नॉक it दिया। in enough time to actually let that rescue mission fail. But no, they already let that go to waste. But in the same time, they did make sure there was a trade-off for that. So with Aero now on the knees, it's definitely gonna keep one player less on the side of Seal Esports. Stalwart Esports, the man count of fighting men is still equalized, but this fight is something that they're gonna have to be very cautious about. Seal Esports एक्शन going न्यूज़ in को for that बचाने आया था, revival. खुद एलिमिनेट हो गया। Still not looking like they are gonna तो be able to यही have होता an upper hand भाईचारा। just yet. The man count is not gonna be the only thing that decides who wins this one. Seal Agreed. Esports. Yeah. Perfect grenade, and Nirzel has been taken भाई एक down from नेड the और side of खत्म Rog, कहानी। and Tops is also on a very low प्यारा HP नेड as और he's खत्म trying to कहानी। patch himself up. He has job to ओ do. भाई, He has to go for the rescue टॉप mission. की किस्मत But तो है this भाई। barrage of grenades from the side of Seal Esports is not looking good for the नेड है players of सील के Stalwart पास यार, Esports. नेड This time काउंट आ it's a जाता मजा आ Molotov, जाता। but the perfect नेड मॉली projectile is यूटी still काउंट missing ये from आनी the चाहिए players of चीजें। Seal Esports, and Stalwart by some भाई miracle टॉप की still किस्मत surviving. But this अलग ही grenade लेवल brings पे है in the lives भाई, of Nirzel, अलग लेवल की leaving जो Tops किस्मत under होती 10 है ना, HP. वो टॉप की थी। बट सोलेस भाई पता नहीं That was कितने नेड्स definitely पड़े इनके quite a पास। good nade. रॉज के पास तो मुझे एक भी नेड नहीं, एक Only नेड दिख रहा है one towards the भाई। कितने ही side नेड of फेंके Seal इन्होंने, कितने ही नेड फेंके हैं। Esports. One frag each. And well, Aero literally has none. So, 2 frags, 3 players. I mean, great way to survive, but not a great way to HTE make yourself a अभी place on the है leaderboard. #7 पे, बट Stalwart अभी ऊपर आएगी। Esports 12 frag पॉइंट points, है उनके great 12, numbers on their 5 back, टीमें but अलाइव still है। left डेल्टा भाई alone at नॉक्ड 7th है, उनको position. So that's रिवाइव just going to देंगे। give them लियो, one extra point. स्टील, रॉ। Not the ओ best माय situation so गॉड, far. रॉ का एक बंदा कहाँ से आया भाई? रॉ पे तो हमने There बिल्कुल it ध्यान is. नहीं दिया भाई, क्योंकि रॉ की टीम हमने देखा था स्टार्टिंग The में circle एलिमिनेट हो गई getting थी। मुझे लगा smaller उस and टाइम पे सीन smaller, हो the चुका है, pressure बट getting नहीं। higher रॉ and का एक higher. बंदा काफी अच्छा यूटिलाइज कर Stage चुका है 7 सिनारियोस को, already. पोजीशंस यहाँ पे With लेके आ 4 चुका teams है। on board एंड and अभी जाके 13 नॉक एंड players. फिनिश हुआ है, बट #5 ले आया, बहुत ही बड़ी Who बात। is it gonna be? T2K, as Bhavna expected, DRS, Seal, or Leo? What are the things that you feel like are in the best advantages for T2K right now, Bhavna? The chances are very high ऑल्सो because they गाइज, have अगर the आप numbers advantage, चैनल के they अंदर have the नए हो majority तो of the मेक real श्योर टू estate हिट द as they are लाइक trying to एंड move from the सब्सक्राइब टू southern द side, चैनल। and they're not लाइक एंड grabbing the सब्सक्राइब कर देना attention of गाइज so एक बार many चैनल teams. को। But I have a question from the players of Seal Esports. How many grenades do you guys have? After that barrage of DRS का grenades, चिकन they होगा। सो still गाइज एक have बार कमेंट करके grenades, बताओ, no 4 टीम्स triggers in बताओ, their आपको क्या hands लग रहा है as किसका they're चिकन trying आने to वाला find knock है। onto the एंड players जो of Leo बिल्कुल सही Esports. बताएगा ना, Well, उसको हम Seal, एक टॉफी देने वाले गाइज। अभी जस्ट kudos to the resources जस्ट they're मैं having, उसको the पेटीएम कर दूंगा micromanagement टॉफी of के लिए, resources that जो is सही coming from the बताएगा। players of Seal Esports right now. On the other side, we have here Mr. Smokey going down, and Aero with that M416 trying to go for looking for the confirmation, but it's going to be the play zone on DRS. अरे मैं Delta, नाम yes, नहीं the लिया last यार, man मैं from the side यार of Leo अप्रिशिएट Esports. किया Now we मैंने have उसको, वो 3 नॉक teams, हो and गया, उस T2K, they दूसरे पल में have a क्या very high करूंगा chance. बताओ। Ahana, they have the majority of the पनौती नहीं real बोलते estate, the गाइज, circle. Look at the पनौती नहीं है split यार, वो that पता is नहीं coming from the कुछ players तो of हुआ, T2K. बस They पता have नहीं the लगा, control बस of कुछ the हो गया। entire final circle. Well, they sure do, and they are gonna make sure that they do not give anyone else any entry at भाई all into the T2K को देख circle, के इतनी because खुशी हो रही है ना, दिल से, that मतलब would दिल से just खुशी हो रही add है to the T2K को benefits देख that they के। already have आफ्टर on their लेजेंड side. पाजी, They might T2K be इज able प्लेइंग to डैम just गुड। increase the pressure on a टच team वुड by नजर ना keeping them लगे, outside the टच circle वुड and है भाई, making them fear not करे only of T2K, their own मजा players आएगा। but also of the लाइक blue circle दे that आर is वन ऑफ द placed फेवरेट behind. टीम लाइक सिंस The number of 2 teams इयर्स has बैक। shrunk down all the की way टीम to just बढ़िया लगती है अपन को, जब से T2K 11. ने, याद है आपको एक बार Yeah. 4 बंदे उठा लिए Your थे, चारों के prediction seems चारों like it's आपके gonna be very on असॉल्टर्स, point. टॉप फ्रैगर्स, फिर उनका डाउनफॉल आया But था, फिर right उन्होंने now, बैलेंस टीम here on the बनाई, southern एंड island लेजेंड of भाई का military एड ऑन base, हुआ पीएन क्रू। we see these teams दैट coming जर्नी, together, मतलब but ये तो not भाई for a स्टार्टिंग से meal, पूरी for टीम a है एक fight, तरीके से। a एंड द bone वे to pick, दे आर डूइंग भाई, so that they can have चिकन आ a जाए भाई। chicken of चीचू their का own. DRS भी बहुत बढ़िया टीम भाई। टीटू के चिकन ठीक है भाई, जिसका सबसे पहले कमेंट आया Always ना so टीटू का, quick रुको मैं because देख लेता हूँ DRS is still DRS in एंड the टीटू lobby. का। DRS are always the cheeky ones, but DRS बोला soulless M4 finds a नावेद perfect ने, knock और onto Gyate सील over बोला there. But नाइटमेयर thankfully, ने, एंड DRS टीटू they के do बोला have a good दानिश ने। compound to their ये name. 3 At the टीम same time, Rog is bringing down the numbers of T2K as well. Sandesh has been taken down, जैसे किसी and हुआ Sanhok is going for ट्रॉफी the जाने वाली। revival. The perfect smoke wall has been deployed, but that is not going to हेलो save हेलो वाली, Aero as एकदम he has बढ़िया। been taken down.
At the same time, Rose with an A-cam, 6 times on an A-cam. What did just see? And he takes down Rogue over then. Seal Esports surviving with only a single player. The perfect
spray that was coming with an EKM, the amount of recoil this weapon Falcon को had. रिंग ने 1v4 On top नियर of it, you are having a 1v4 6 मारा था, times उसके scope. अलावा भी और Kudos to the plus of TRS, the amount of time they have spent in the 7 training ground. But elimination Soulless all by himself, T2K, they have the numbers देखा advantage, था ब्रो, and हमने लाइव so देखा। do the plus of DRS. Who is going to get this one? And looks like T2K Soulless, की फॉर्मेशन he has an सेट eye. करो, देख लिया ब्रो, एक बंदा ऑफ एंगल Grabbing में। the attention of the plus of DRS. Well, DRS are definitely going to be looking in that direction very soon. But T2K is literally present every single place. They have their eyes everywhere on the map. They are everywhere on the map. It's going to be harder to find one player of T2K and then be able to recognize the position of the rest of the team. But here they are charging in it's a hardcore move on the way towards DRS. The shots are coming in. There are knocks coming in as well alongside. The background advantage is already in the side of देश भाई T2K right now. देश भाई 4v1. सोलेस भाई, अरे 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 क्या बात है गाइस। T2K OP in the chat guys, and T2 Seal and DRS. So guys 557 लोग देख रहे हो, T2K OP in the chat कर दो boys. Let's go boys, मजा आ गया भाई। T2K क्या खेल है भाई, T2K भाई मजा आ गया भाई, मौज दिला दी भाई। फुल एजीज का कंट्रोल लेके T2K ने जस्ट इनसेन कर दिया सीन, बहुत बढ़िया गाइस। T2K ओपन द चैट एंड T2 DRS #4 के ओवरऑल रैंकिंग पे आ चुके गाइस टीम T2K। व्हाट द गेम प्ले, 13 एलिमिनेशंस, टोटल 23 पॉइंट्स, 10 पॉइंट चिकन डिनर के। संदेश पाजी ओपन द चैट कर देना गाइस। आई एम विन, दानिश भाई इज द विनर। दानिश भाई आपको क्लियर्स मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको क्लियर्स, ये हमारा वादा है आपसे, वादा रहा हमारा आपसे दिल से दिल तक। T2K बोलते हैं हाय ब्रो, कैसे हो आप लोग? विष्णु भाई एकदम बढ़िया। गाइस 2 मिनट, कसम कसम HT gives is to blood Titan भाई, don't compare bro, don't। लो भाई संदेश पाजी 6 एलिमिनेशंस एंड द MVP ऑफ द मैच। क्या बात है, क्या बात है भाई। लड्डू माटो ब्रो, जो T2K चिकन बोला। अरे अरे नेक्स्ट मैच कब होगा बस, थोड़ी सी देर के अंदर, ज्यादा देर की बात नहीं, रुके बस, सबर रखो, सबर सबर इज द की, सबर रखोगे तो सब। DRS फाइनल में थोड़ी गए, DRS फाइनल में टॉप 5 एलिमिनेशंस मिस भाई, 3 एलिमिनेशन बाजी 4 एंड डेल्टा भाई 3 एलिमिनेशन। हेलो की हेलो शुभम गेमर मेरे भाई, क्या हाल चाल है? T2 को कौन सी कंट्री का टीम है? नेपाल का टीम है मेरे भाई मुन भाई, नेपाल नेपाल। T2K ब्रो नेपाल कंट्री का टीम है ऑल। अखियों की क्या कर, मैं जब दिखता है यार मैं क्या करूं।
हेलो हेलो सच कब से एसएससी कब से चालू? 27 अप्रैल से मेरे। एसजी नहीं खेल रही है क्या ब्रो? ब्रो खेल रही है सारी टीम्स, राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है तो टीम्स बैठती है। फोर्थ विल डोमिनेट दिस वीक ऑल्सो। ओके बिग फैन ब्रो, आप कस्ट करो। ओके भाई 82 के बता दिया मेरे भाई। पीएमजीसी ब्रो नवंबर दिसंबर की बात है यार, कहाँ पे अभी आप पूछो, नवंबर में होगा। पीएमजीसी एसटी टॉप, यस मेरे भाई। रैंकिंग्स गाइस अभी की आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, और देखो आगे क्या होता है सेकंड मैच की। कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई। Do you know when elementary series to global stage time and their practice MS? अजय था पापा, आई गेस दैट वाज द टाइम जब एलिमेंट्रिक्स का फैन बेस शायद उसी वजह से काफी ज्यादा एक्टिव एंड कॉलेज में तगड़ा फैन बेस की बात करें एलिमेंट्रिक्स का ही है जितना मैंने सुना। उसी टाइम की आप बात कर, गलत नहीं होता। काफी सारी चीजें ऊपर, बट दैट एरा आप पक्का उसे एरा गया। भाई लॉर्ड पुनीत ने भी भाई गाड़ी ले ली यार। डू यू नो हवा भाई? यस यस, आप शायद उसी एरा की बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो, फिर मैं गलत हो सकता है, हम गलत भी एक चीज कर देते हैं। चलो चलो भाई, मैच नंबर 2 स्टार्टेड, बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया, ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी। कास्टर के है साउंड क्यों नहीं आ रहा? कास्टर का साउंड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऑफ करा है, जब गेम स्टार्ट होगा तभी ऑन होगा। यस एक्स यूज हैव लॉट ऑफ फैंस। यस फर्स्ट पीएम से साउथ एशिया, हाँ जब कोई था वैली इवेंट। यस यस दैट वाज द एरा ना उस ओ भाई करेक्टेड प्रिडिक्शन 6। गाइस सुर सुर लगा रहा हूँ, लेजेंड ने टी2 के छोड़ा ब्रो, एनी ब्रो फर्दर स्टडीज, लाइक स्टडी को लेके। भाई सीन क्या वो था? यस पीएम साउथ एशिया स्टडी के लिए ब्रो, लेजेंड भाई स्टडी के लिए थोड़ा सा अपना ऑस्ट्रेलिया आई गेस, यूके ऑस्ट्रेलिया कहीं गए, यूके तो शायद अपने जोकर भाई है। एसएलवी, यस यस एसएलवी पता है। इन इंडिया टॉप 5 आईजीएल अकॉर्डिंग टू हर्षित सचिन भाई, अभी तो सारी चीज बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। एक बार अगर गेम, सबसे पहले तो गेम आ जाए, जल्दी आए, गेम आने के बाद ही बात करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी चेंज होने वाली है, एंड अभी पूरा का पूरा मैटर ही जब कंप्लीट चेंज होगा, बहुत सारी चीजें करेगा, इफेक्ट आएगा, क्या सीन होता है आगे। तो मेरे लिए आया एक बार नेपाली कास्टिंग लगा ये प्रज्वल भट्टा भाई, श्योर अभी इसके बाद लगाते हैं क्योंकि अभी तो मैच स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद मैं लगा देता हूँ, ठीक है नेपाली कास्टिंग एक बार पक्का लगा दूंगा बस मुझे याद दिला देना। अभी आप पहले बोलते कि आपने पहले नहीं बोला, तो अभी तो मैच जस्ट स्टार्ट हो चुका है, सो अगर आप पहले बोलते हम लगा देते कुछ, बस बता देना। बीटीएस भी अच्छी खेलती है यार। यस नेपाली कास्ट, यस इन इंडियन तो मेरे लिए एक नंबर लगा देंगे प्रज्वल भाई। थोड़ी देर पहले बात होते पीएल मेटा विल बी इन बीजेमआई ऑल्सो ब्रो। हर्षित सचिन भाई अगर बीजेमआई पे आता है तो ऑब्वियस ही बात है यार, बीजेमआई में लाइक हर एक रीजन पे मेटा चेंज होता है। इट्स नॉट अबाउट द पीएल का जो फॉर्मेट था, फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल के डबल फिनिशेस को काउंट नहीं कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ।
Here we go guys, match number 2 I on like your screen. mostly if मिरामार there का are मैच multiple है, काफी islands सारी because टीम्स that ऐड just ऑन होगी होगी, एक tests ग्रुप the आपका रेस्ट कर players रहा at a होगा. whole new मीनवाइल level because एक चीज rotations आपको बता become देता हूँ, much more लाइक जो पीएल unusual, का जो फॉर्मेट है, and that जोन just helps फॉर्मेटेड डैमेज का, you know, वो ग्लोबली आ that just चुका helps है. create चाहे a वो lot of साउथ chaos, and एशिया whenever रीजन there's हो, chaos on stream, ओवरऑल टीम there's बात happiness in my करें, eyes. चाहे वो अफ्रीका रीजन हो, I sound चाहे like a वो sadist. अरेबिया Chaos. रीजन हो, चाहे वो No, अमेरिका even I रीजन am हो, a चाहे वो sadist. I आपका सी love the रीजन हो, action, the हर एक drama रीजन पे that वही unfolds, फॉर्मेट हो and रहा है. death बट and एक छोटी destruction which चीज है these कि teams bring हैशटैग in. 1 और Well, हैशटैग soon the 2 map of सर्कल्स the के अंदर sand of डबल फिनिश या Miramar डबल is बोनस. going to turn red. हर So एक रीजन में जब not फॉलो हो just गया, you, अगर it's me बीजेएमआई also. अगर इन We केस all are कमबैक sadists. We करता है तो love the फिर drama and the मैंने action. कबूल. That is what we are बट here क्या for, अब वो and भी what चीज अब डिपेंड these करता है teams also love. But ऑर्गेनाइज करवा since रहा you होगा like the इवेंट, southern क्या circles, क्या Ahana, सीन रहता है. let me tell you, we see so many southern circles. कौन सी Even गेम me है and ब्रो? Blotter, well, we both are अच्छी so वेलकास्ट bored of लीग, अगर southern एसटी circles. भी We थर्ड always hope लास्ट that we जोन get to होल्ड witness a करती northern circle. बच But I जाती है hope टीम. this time you are going to be happy because maybe हर there एक is a टीम का अपना possibility we खेलने can का तरीका see है, अपना one मतलब more southern circle, maybe towards Los तो Leones बकवास. or maybe towards हर the एक side टीम of का अपना Valle de खेलने का Mar. तरीका है, अपनी But if it एंट्रीज है. goes to Valle एसटी de ने Mar, it's अपना, going to be अगर so आप very देख, interesting. Well, yes, it अगर मैं absolutely गलत is ना हूँ, gonna be one of एंट्रीज the most, chaotic circles of the map. साइड से Not only will it push एनडीआरएस ने teams एंट्रीज आ रही towards है the नोको से, very बट उन्होंने opposite direction of where they're थोड़ी सी already लेट trying to एंट्रीज एंड go, पीछे but also Valle घूम del Mar एंड definitely gives एजिस the पर teams. करा. एंड क्या Oh, ही जोन बन रहे, sound सारे like a जोन Like I नीचे की said, तरफ ही southern आ जाओ. circle. yay! It's वेल्डेमार ये जोन मेरे always, को सबसे always a भसड़ वाला southern जोन लगता है. circle. बहुत भसड़ वाला जोन लगता है ड्यू PUBG टू द gods, टीरेन please. One जोन की Oasis है. एंड circle. कहीं ना कहीं ये जोन होता है मिनास Okay, के आसपास या I'm एमबी a root के for आसपास Oasis क्या फिनिश करे Circle वेल्डेमार for तो the next Miramar because we तो have आपको two लाइन today. दिख This रही is है, the first one, रोड दिख रहा है उधर कहीं आसपास. and in Hard this luck, one, मिड में Ahana. एंड कर uh, बाकी देखोगे. इनवेल एक्शन पाची I'll नॉक try to keep all of my blessings कैसे. on. Can someone get me some more of all the good omens, please? व्हाट Yeah, इज योर फेवरेट please get आईपीएल them टीम? delivered. ऑडियंस In the मेरी फेवरेट meanwhile, आईपीएल टीम I जल्दी से feel like बताओ यार, action मैंने is इतनी gonna बार get बता delivered रखा to है. the lobby, and गॉड this मैक्स भाई rental आपका icy ऑडियंस helps him हमारी out जनता quite ही a देगी. bit. और एक बार उसका वो इमोट भी स्पैम Talwar कर देना Esports looks जो like उस they टीम need का a good कलर है. omen because action was taken out pretty early in the game, and I believe it was the players आएगी of आर टीम, Seal एक कलर. Esports because Seal they यस are ब्रो, आर also in the टीम close आएगी. proximity. But for now, everything is fine. The players are क्वालिटी fine. बढ़ाओ भाई Everything शेख is भाई. going good. But DRS rolls well with that VSS. He's समय going to बढ़ा take नहीं down रहा, फिर Sanjay स्ट्रीम over वो there, and लैग Seal करेगा अभी. Esports Sanjay बाकी all यही by क्वालिटी है himself आपकी. was spotted on, and looks like his days are numbered. There is no help coming in for him. Even if a player comes in to rescue him, I don't think at this point there is any chance that Sanchar can be saved. And Delta, okay, with the shotgun in the hand, will go for an easy confirmation. तो भाई Okay, there it delta is. भाई ने अर्ली निकाला. There it is. Complete elimination. First blood has been drawn, and देखो Miramar गाइस keeps मेरी on फेवरेट getting टीम है redder ये. and redder day by day. कमेंट कर. There's so much bloodshed on this map, and so much area to actually put it on. आप भी ऐसे कमेंट करके Yeah, सीधी मूड. I feel like this is gonna be चलो one भाई, मैं कितनी where बार the बता चुका हूँ. proximity isn't really gonna play और much of a आज role, no मैच matter how भी है far you गाइस, are. हमारे को 7 I बजे mean, टीम भी बना है. obviously, unless you're in completely different islands and like completely different poles. I know you get it, so I'm just gonna keep it brief. No matter how far you are, there is long range guns that are gonna be sent all around on the map that can result in great eliminations. But look at that. Oh, Talking about great multiple eliminations, knocks. There's a double coming in. DRS. And DRS already in trouble. Seeing a team go all the way to top 2 क्या in मुझे the एक last fight game याद आ and जाती. then just getting, halfway shut Okay, down and already DRS in the early first 2 finishes. stage. एक फिनिश A सील का little लिया bit है, 2 disheartening, फिनिश isn't it? DRS के. It is certainly disheartening after such a good performance from the side of Seal Esports. They lost one of their own, but they have managed to get 2 defeat points. DRS, again, good performance in one game. Next very game, they lost 2 players, now down to 2 players. Not looking good. And talking about not looking good, the team that needs to look very good are the players of bad intention, because in the overall ranking, they are sitting right at the bottom. And if this continues बिट्टी in सोलंकी this भाई particular माही week as well, की बैटिंग maybe देख के तो यार सुकून bad ही मिलता है. intention won't qualify for the grand बॉले चाहे finals. कम खेले भाई, बट So वो this is something एंट्रीज bad भाई अलग ही है intention भाई. needs to think. ये चीजें कभी देखने Right को now, मिलेंगी ब्रो. yes, ये the चीजें players आगे are बहुत sticking together, मिलेगी आफ्टर आईपीएल. क्या पता क्या but सीन हो जाए. still bad intention. They need to aim for that winner chicken dinner title. If not क्या that, पता at भाई least लास्ट second spot, आईपीएल because that is the only way they can कब फील्ड पे qualify for देखने the को grand मिलेगा भाई. finals. ऐसा सिनारियो. Well, ट्राई करो मूवमेंट्स. qualification is definitely gonna be one of the main reasons What do you how think? teams go ahead and give us their best shots.
instead of just getting shot at मोहम्मद फिरोज का in return. And I mean, this is आई very, very थिंक difficult. What we're asking of these teams जितना right वो now is बाहर literally जाके go to खेलेंगे war, टीम्स उतना but don't lose your एक्सपीरियंस एंड players. सेकेंडली एक ऐसा लाइनअप And it's जो literally जैसे 4 आईएच का लाइनअप against 60. एंड वो बाहर भी खेल रहे हैं क्वालिफाई हो It's a रहे हैं hard देन task that we ask of our प्लस teams. वन And what's amazing is कोई भी they लाइनअप deliver. जैसे They still deliver बाहर every खेल के single time. एक्सपीरियंस आ रही है तो Because स्टिक रह के I'm खेलते रहे sure गलतियां 90% एक of the साथ हो times we एनर्जी see a full 4-man और squad पता winning लगेगा the अंडरस्टैंडिंग circle. So you're surviving, you're और क्या saving ही your बोल own सकते हैं souls all the way end of the circle, यही चीज and है then making sure that you pick as many as you can. It's just unthinkable, but it's also something that they are still doing anyways. I agree. Every single death puts you at a disadvantage. The numbers do come handy, especially in the final बोनस circles. पॉइंट But ब्रो in a वीक map, के बाद in a game of battle royale, it's not so रैंकिंग easy अकॉर्डिंग to लाइक survive रैंकिंग till the आप final circles with all the 4+ alive. You have to go for the perfect rotation. A little bit of the luck factor also needs to be in your favor. On the other side, Maprex Leo, well, he has been taken down by a vehicle run over, and Baron was placed perfectly to get the confirmation as well. No, the confirmation has not been made. Leo is still bleeding. On the other side, bad intention. They are also looking for one more knock. Mehndi, well, he needs to heal up, but there is no chance as Valley will get the confirmation onto Mehdi. Oh, and bad intention gave very bad start to this team. Well, their intentions were already to give bad starts to teams so that they cannot go on further anyways, but Wally's position here is going to be definitely crucial to this one fight. And I'm definitely using too many times, so a swap of words, I am open to suggestions, Bhavna. But in the meanwhile, what Bad Intentions is open for is an opening into the compound that will result in an elimination for maybe. Still watching the stairs, still making sure that every single peak is punished. Whew. This does not look like an optimal situation for either one, but MAV is still trying to make the best of it. The Molly did do great damage. अबे But यार there is a sandwich, and that थैंक यू सो मच sandwich रिलैक्सिंग shuts भाई down फॉर द another player 22 from the रुपीस side सुपर of चैट Bad मेरी जान Intentions, and well, फेस के मजीद भाई सुन it is bad destination for this map as well. पहले माइक लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं भाई Well, माइक का such भी a good करना है यार इस synergy मंथ coming in माइक from the करना है plus of यार माइक Maptex Esports without losing any of their own player. They managed to annihilate the entirety of Bad Intention. Bad Intention not looking good again, being eliminated at the 16th spot. But this इस time, thankfully, for MV, they महीने are in a good माइक का spot. करना है एंड ऑफ द Last मंथ ही time, हो पाएगा आई गेस 4MV and Elementrix, they में went माइक against करेंगे फिर each other, आगे and 4MV not having good दुख resources in पाजी their hands दुख because of this. They lost the initial fights, but now they are again back in the form, have good resources, have good position to hold on to right now. They are in the city of Chumasera, looking so very good. But again, look at the plus of Elementrix. Just loving this rivalry that is brewing up between the plus of 4MV, be it Erangel, be it Miramar, any map, these two teams go up against each other, and the one to lose in the long run is going to be Elementrix. चलो Because 4MV, चलो they have got जोन nothing to एक lose. साइड They are चलो sitting on the right चलो on the top चलो of the leaderboard. जोन And एक साइड Elementrix, they चलो are at the bottom. They need the points. This एक rivalry साइड is चलो not going to favor the case of Elementrix. If they want to qualify for the grand finals, they're risking their qualification, Ahana. They definitely are, but well, high risk, high reward is the mindset, I guess, at this moment. And there you go, Circle. Thank you. Thank you for not giving me what I wanted and not giving Bhavna what she wanted. But however, I feel like some teams are definitely happy. Specifically, the one you picked the last time, T2K, having a great time at a great spot inside नहीं the विक्रम circle, भाई but वो it's रूल नहीं है crowded. It's very crowded. This डबल पॉइंट रूल crowd नहीं यहाँ is पे नहीं gonna ब्रो create इवन डिडंट chaos. क्वालिफाई This बीएमसी chaos is gonna create deaths. Those deaths are gonna create less crowd. Then less crowd is gonna result in less chaos. Ooh, a vicious cycle. Certainly, but we have a first airdrop coming in with the AUG, the big weapon. And talking about the weapon, Ahana, which weapon you love the most in the map of Miramar? Well, I'ma have to think about it. Any suggestions from you? Pick the one
with which is in the current meta. DBS, a shotgun, shotgun supremacy. I've seen so many gameplays, even in the final circles. Players are like, say hello to the shotgun and bye bye to the lobby. That has been happening in every single map. The way these players use S12K and DBS. Oh, भाई मैच देख well, के नींद I'm आ just रही loving it. है But my तो favorite weapon is always my ट्राई go-to करो यार weapon, मैच देखने का Pmw. आपको But right दिखेगा now, Raw अच्छे with से it, मेरे का AKM न्यू is going to bring down Gangstar from अलग से Abruxlers and शाकिब get the भाई क्योंकि यार confirmation. At the उनका same time, अलग है Vishal अपना has been रीजन knocked down. Things are not looking good for the players of Abruxlers as Shari all by अलग हो himself चुका है in a 1v4 situation against the players of Raw. Well, it doesn't seem like Roy is looking forward to this fight at all at this moment. They're probably unaware of the position of or of the possibility that he might just be, sitting alone in that area. But yeah, talking about the weapon. I have no idea, to be very honest, Bhavna, because it seems like one of the maps that is for long range, but I'm not a good long range player, anyways. So what I do is serve as an extra loot box for my team. Till I'm alive, I keep giving them supplies, and my bag is filled with supplies that they might need. It has nades, it has medkits and stuff. And once I'm dead, I'm Amazon delivery service for the people who kill me. So that's just how it is. डीवीएस की बात चल ही रही थी But yeah, इनकस भाई ने the डीवीएस one में weapon दिखाई दिया भाई the one game that I'm happy, one gun I'm happy using all the time is Groza. But on Miramar, it doesn't help me as much as I would expect it to. Or I think that's my skill, probably. Two teams have been eliminated, and IHC, well, they are also in the close proximity to the players of Elementrix, but Elementrix, IHC, they have to prioritize the circle, and looks like IHC, they're already heading for a good rotation coming from their side, and Seal Esports, not a very good start to their game in the map of Miramar, being eliminated at the very early stage, but Maptex Esports, this time they showcased a very early rotation. Otherwise, Skylar's Gaming, Maptex, they always like to have northern control for themselves. Skylar's, they might have to engage in too many fights, because last I saw they were in the close proximity to the plus of High Voltage and to the plus of Stalwart Esports as well, and things are not looking so very good, because making rotation from northern side where there's such cluster, there's so much traffic present, it's going to be a bit tricky. On the other side, Elementrix, they do have a good spot for themselves. Well, they definitely have a good spot, but how long are they going to be able to hold on to it is the question, because currently they are in the play area, but once the circle shrinks, I feel like Chumasera just won't be a city that resides in it, considering the fact that it's all the way towards the edge. But yeah, right now they can very well gatekeep the situation. They can very well gatekeep the teams that are trying to come in, and at the same time maybe take a peek at it at their neighbors and, like, say a friendly hi and hello with a couple of bullets, because that's just how we serve in the maps of PUBG Mobile. Oh, look at that. HV. Once they have their sights at the right side, they आईपीएल might जीतेगी be भाई able to use गेमर की all टीम that height advantage that they have to actually become a great trouble for Elementrix कास्टर्स का alongside बजट 4 बढ़वा देते हैं एटलीस्ट क्योंकि भाई आप तो हर एक डिस्कॉर्ड सर्वर में ऑफिशियल Well, के साथ Elementrix, कनेक्टेड होंगे नॉट they have तो managed आप to get पहुंचाइए 350 जरूर मैसेज उन points तक in their favor. DE Venom, this team I would like to talk about, because DE Venom in the previous week they were having too many frag points for themselves. The placement points were the problem. I hope DE Venom, they have worked on it, and this time they're going to showcase a very good performance. But ISC Demo has been taken down by Prince Boy, and Zoil is right. आज नहीं हो रहा PMSL. Perfect info 1-6 spray coming in, but the vehicle is going to save Zoil for now. At the same time, look at the position of Mondo. He's going for a flank angle, trying to get the confirmation or a knock onto the plus of IHC, and Zoil has been taken down by DRS. Rules doing a perfect third party in the situation. No, it was Raw officials. DRS, they are engaged with some other team, and Godless trying to make a quick escape and scuttle back to the safety. Will he be allowed? That's the main question. And yes, he has been allowed, but IHC, well, they suffered heavy casualty in this particular situation. Well, it's definitely some damage that they don't want to have on themselves. This casualty is definitely going to result in something very devious for the coming rounds, and not devious on their favor, nonetheless. As of now, Team NB Esports definitely at a very bad position. Raw officials might just be able to, take their shots and make sure that NB Esports does not make their way back into the circle.
However, this fight is gonna delay their own push by quite some time. Ooh, there is definitely some damage. It's not as much as you would expect, but raw officials, you need to know that the vehicles coming in might just run over you. Grab them for yourself in the meanwhile. There's great awareness of sound cues to make sure no one gets crushed under the buggies that are coming around roaring. However, that has definitely bought quite some time for the team to go ahead and repair their own wounds. While NB Esports licks their wounds, there's definitely going to be some rage coming in from the side of NB Esports trying to move in closer. There is one knock in their favor already, making a man count advantage to their side. This is going to result in another, and yes, there it is. The third one coming in. Is this going to be a tata bye-bye to raw officials? No. One of them survives. Survives for the sake of the team. NB Esports are fighting from the low ground. The grenades are the only thing that can bring an opening to the plus of T2K and the DBS, and moreover the DBS is going to oh hi. From a different angle is going to bring down the numbers of T2K. Rig has been down, also Yog and Jane. They have to save the day for the team as the players of NB Esports are already charging towards them, and moreover the DBS right on the face of Jane. Oh bhai! Monjo bhai! Retaliate and take down more. Nice try. Those shots. Now he has been taken down. The things are looking promising for the players of T2K, but only for a bit of time as Rig has been eliminated and the players of T2K, well, they have been brought down to a single player. But on the other side, NB Esports, they are not stopping the aggression as Akaze brings down Rally from the sort of DE Venom right on the low ground. भाई साउंड बंद कर दे अरे क्यों क्या हो गया भाई चलो गाइस लेट्स गो मैं थोड़ा सा मैं टीम पे ध्यान दे रहा था अपनी आईपीएल वाली टीम पे अभी थोड़ा स्टैट्स टूट देख रहा था चलो भाई आ जाओ एनबी डीई एनबी 6 एलिमिनेशंस इसने निकाल रखे हैं 2-1v1 एनबी का फाइट अप्रोच काफी बढ़िया है बिग वन पे हमने देखा था जो इंप्रूव हुआ था काफी ज्यादा मीनवाइल वाइब्स एंड एलिमेंट्रिक्स एंट्री को नॉक दिया ओके बॉयज फाइट हो चुकी है एंगेज डीई वन ऑफ द बेस्टेस्ट फाइट हमको देखने को मिली है वीक 2 के अंदर जिस तरीके से लास्ट डे पे जिनका कमबैक आया था वीक 1 पे एंड जो इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया था डे 1 एंड डे 2 पे जब तक हमने स्ट्रीम करा था दैट वाज इनसेन एंड मैसिव एनबी के एक प्लेयर को नॉक दिया है धीरे-धीरे आगे पुश करने के लिए तैयार डीई की टीम नेड्स की बात करें 2 नेड्स है पोंडो भाई के पास रिवाइव दिया एनबी के प्लेयर जो फिस्ट बॉय जो नॉक हुआ था बहुत बढ़िया but now the circle is going to shift where the circle is going to go. That is going to decide the fate of so many other teams that might be looking in the direction of NB Esports, but DE Venom this is the main guy. This is the main guy from team DE Venom. जो क्रीटा है एक तरफ से सहयोग मीनवाइल चरी भाई ने डीआरएस किलर वाइटी को नॉक दिया है मतलब डीआरएस के लास्ट बंदे ही बचे रूल्स पाजी एंड उन्होंने यहाँ पे चरी भाई को नॉक दिया है सो मल्टीपल फाइट एंगेजमेंट एंड डीआरएस यहाँ पे एलिमिनेट गाइस किलर वाइटी एंड रूल्स भाई यहाँ पे एएसएल ने एलिमिनेट करा है क्रीटा भाई फुल ऑफ एंगल बनाने के लिए रेडी है यहाँ पे with 0 points or a single point. धीरे-धीरे करके एज से पुश इन आगे की तरफ 12 teams 38 players still remaining and the circle has shifted bit towards the northern side. NB Esports Venom DE this time they have to pride as a circle. It is stage 5 circle and they can't afford to take the damage of the blue. Well, currently it seems like the teams have quite some on their plates. DE, SG Nima knocked and finished. Skylights Gaming already getting their players picked off. And T2K leaving the lobby. Okay, DE, hi. Oh. Dog पाजी नहीं मानते डॉग पाजी की मिनी नहीं मानती अरे डी ने पूरा प्लान बनाया इनको घेरने का चारों तरफ से बट आगे पीछे ऊपर नीचे से सारा ओपन एरिया एंड पड़ी एंड नॉक एंड फिनिश्ड एंड यहाँ पे डीई की टीम भी है तो फिर को भी गिराया भाई क्या खेल रही है भाई डी और यहाँ पे करा फॉल बैक जोन को क्या प्रायोरिटाइज माफिया निंजा एंड एजे भाई ने स्लेयर भाई को यहाँ पे रिवाइव देंगे देन टाइम बनाया जाएगा मैंने 2 बार 20 रुपए टीम बनाई और 160 जीते अरे सुई भाई बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशंस टू यू मेरे भाई
we have quite a few teams still surviving with all fours. There's 6 nonetheless out of 10, while the rest have to do with just 2, and IHC the only team with a solo survivor. They are surviving. Yeah. They are surviving, and Mapex, like you were pointing 5 elimination on their name and looking for some more onto the plus of A+B+, but A+B+, well, yes, Bro, the जब मैं vehicle team might अपनी have finalize received some करूंगा मैं damage, आपको but बता players दूंगा are safe. But Mapex अभी Esports तक मैंने ban कुछ comes out in the करी open, नहीं and बस in मैं the 7 Esports, बज के is 25 there मिनट any में stopping for the plus of ME Esports? Because Kakaze, he takes on Meanwhile not नैप just one, के 2 लियो plus अभी of मैं स्टैट देख Mapex रहा था Esports. क्या क्या सी स्टैट वगैरह Sure does, and Maptex Esports have to recover from the injury that they have faced, and in the meanwhile, Solid Esports getting more and more stronger in their position. No frags to them yet, but they are still gonna be standing all 4 men on the feet, and that's definitely something that will help them towards the last circles. And well, frag points can be collected towards the end as well. If you have the chicken in your pockets, it's a great number of total points that can be added to your board to go further. In the meanwhile, towards the east of Shumasera, we see all these teams coming together for a bullet party. Maptex Esports gotten all 4 back on board, but on the other side, NB Esports also has all their men count to go forward with. Both the teams are surviving on the edge of the circle. Once the circle shifts, the push begins. The teams are gonna have to rethink their strategies for a second. Maptex Esports is still playing with fire right now, or let me say blue zone. There's the moment the zone starts shifting, they will have to take their buggies and run away, and might also attract attention at that point. नेपाल की फेवरेट टीम ब्रो नेपाल की फेवरेट टीम नेपाल की फेवरेट टीम ब्रो नेपाल की फेवरेट टीम ब्रोज बहुत सारी है नाम मैं बता चुका हूँ T2K DRS SG for a fight against HV these are the teams आपके स्क्रीन के सामने आ रही है at a great pace. हाई वोल्टेज अभी कुछ टाइम को पहले गाइस हमारा यहाँ पे फाइट हुआ था मीरामार में हम यही मैच खेल रहे थे एंड यही हमारा एंड जोन का फाइट हुआ था High voltage on a very high horse right now. मैं पीछे एक गाड़ी होती है कंटेनर टाइप आता है उसके अंदर था उस टाइम पे Stalwart Esports. पीछे दिख रही है आपको गाड़ी सी A third party possibility ट्रक नहीं दिख रहा resides खाली very सा close to them. मैं बता रहा था जो अभी आप यहाँ था एक बंदा फ्लैंक And मार रहा that था यहाँ might पे just give एलिमेंट्रिक्स है capitalization बग्गी to a पे completely ये different बाकी team. उसके 2-3 बंदे आगे वाले कंपाउंड में थे और हमारी टीम यहाँ पे होल्ड करी थी यहाँ पे ऐसे Stalwart Esports, they उसको have to मेरी defend this पोजीशन नहीं compound पता at था any cost because of players of high मैं वहाँ voltage पर are हूँ challenging them. And Stalwart Esports, yes, this is a very potential compound to go for the big ना victory, उनके big 3 win, बंदों को win पता a था chicken dinner for themselves. And ना Stalwart उसको Esports, पता they था just जो don't फ्लैंक have मार to रहा deal with the players of high voltage. We have the remaining 2 players of voltage also, Skylights also coming in. AJ having the cheeky angle. Malik might want to lob some grenade, but on the other side of the map, we have D going up against the players of Maptex, where Baron has been taken down, and Praveen right in the crosses of top survive, but AJ is not going to survive. The action is going to bring him down, and now Skylights Gaming, well, they have been reduced down to a single player who doesn't have the circle, who doesn't have the good position, and how he's going to transition himself inside the circle, that's a big question. But Jiggle has been spotted on when Z, and he has been taken down. Now the numbers are in the favor of Stalwart Esports. Stalwart Esports, one of the most strongest and most synergetic team in lobby. Now, high voltage, they have to bring down the numbers of Stalwart Esports if they want to be in this compound. It looks like Stalwart Esports are not going to let them do so because they have the height advantage. They are going for the lower flank. And Praveen with only down to 10 HP action. So close to him. Look at the position of IC from the backlines. He's providing the necessary cover fire and backup. नहीं हुआ नीजेड ने यहाँ पे भी नॉक दिया आईसी आगे मार्चिन कर चुके हैं नीजेड एंड एक्शन की जोड़ी ऊपर मलिक भाई आगे मलिक भाई भी नॉक व्हाट अग्रेसिव पुश असैसिन भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग ओह नाइस वन एसटी they have been designed entry inside the circle, and Stalwart Esports, without losing any player, they have managed to take down one player from the side of Skylights Gaming in the entirety of high voltage. Season 11 सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ओके मेरे भाई ओके it seems like it's getting more and more difficult for teams with great names ये भी गया continue their legacy. And with that come knocks left and right.
across the boards for 4MV and NB Esports. 4MV might just not have enough time to actually go for the revival though. Will they be able to get all fours back on? but They Dog have भाई ने shut संभाला down थोड़ा सा. 2 नॉक पड़ा एनबी के भी. IHC NB completely. 9 elimination, ST 5 NB elimination, Esports 4 man completely strong. in NB trouble. का प्लेयर जा Only रहा one रिवाइव player देने के trying लिए. to पकड़ा revive एक the प्लेयर rest को of the भी. team, मैप. while one has to watch for the cover. This might not result in the best position for the side of 4MV. और ये फटा कोई तो. It's a fight they want to put a result to, तो put फटा. an end to, and walk डैमेज away आया. from. तीनों को डैमेज है. 30 Damage has been 30 done, का डैमेज आया है. स्प्लैश but the डैमेज पड़ा repairs है will नेट का. begin just in time. All four from the side of NB ड्यूटी Esports हारे होंगे recovered यहाँ and से ready और to आगे fight बढ़ेंगे. one more न्यूज़ेट time. माफिया निंजा लास्ट In मैन the All these meanwhile, teams स्टैंडिंग are fighting on the knock and periphery of the finished. circle, Hana. Let's have a look at the abrupt players. They are the only ones inside the circle. well, that's true. And they might have all the circle advantage, but I'm not seeing the team trying to capitalize more and more area anymore. But look at that. They get picked off TE, STE, 4MB, quickly after we MAB say and B. everything Okay, good about आयोगी them. पिंपल Sarcastic की plus, फाइनल्स real thing. लास्ट डे की स्ट्रीम करो 7 But in the 8 meanwhile, 9 the entry for आज the क्या side of तारीख है. Stalwarts Esports into the क्लोज इन compound, PL के actually into the circle out बाद of the compound, अगर has been सीन quite एनर्जी easy, रही and तो they आई are विल ट्राई taking माय more बेस्ट. and more area to themselves. It's a dispersed entry from the northern side. The teams on both the sides are Apex. already busy in their own fights. So if they third party with their 2 men standing, they might get great advantage. But they have to Map be की बंद careful and cautious. यहाँ पे. Look at Wally. It's a great way to make sure that your team is able to invest in the fight that they have in hand. If you are able to take care of the backstabbers that could be lurking in the dark. There they go, first pick, second pick coming in. In the meanwhile, Stalwart Esports burying the dead bodies of 4MV. The funerals have begun all across the board. Every Also team guys, is अगर आप losing चैनल के players अंदर नए हो except so make for sure your to hit pick, the like that and is subscribe to Stalwart the channel. Esports. ऐसे ही ग्लोबल टूर्नामेंट्स के कंपटीशन हम No आपको दिखाते losses रहेंगे. for that team when ऐसे ही it comes guys, to ऐसे ही manpower. हमारा चलता रहेगा सीन. 4MV So in make a sure to hit the like and terrible subscribe to the position channel. as of now. भाई ये कास्टर कौन है They bro? also hit the double पता नहीं तो digit कि भाई कौन है कास्टर. elimination marker नहीं already. कॉलेज Stalwart Esports. Your predictions are ओ falling ओ right ओ on ओ point. ओ NB. Right now, Mapex Esports on the perfect spot. Takes down not just 1, 2 plus of NB ST Esports. भाई. And the last one as well. Stalwart Esports from the backlines takes on the last player of Maptex Esports. 2 teams have been eliminated. Now we have 4 teams and 10 players remaining. Stalwart Esports looking for ST knocks advantage everywhere as they bring down the numbers of Maptex as well. And 4MV has also been eliminated. They were standing with a single ST ने ये player निकाल on the दिया 4th तो spot with 5 elimination of their own. NB Esports not in a very good position. Stalwart Esports, this is they came to lose, and he nice. was trying to transition himself in the circle, but action, there is no stopping to his action as he takes him down. And now the numbers of DE are also not looking so very good. Look at the position of the remaining 2 players of Dead Eyes. 1 grenade and Dead Eyes are done and dusted. And there it is. IC trying to find some opening, but he has no resources, no grenade, no molotov whatsoever, just the smokes in his hand. But they have the weapons. The smokes are being locked to deny vision to the plus of DE over there, and Slayer goes down through the M416 of action over there. And now the only player remaining is Churu Love. Sir, what can he do in this situation? PL grind it is करके an आई entire टीम game पूरा of Stalwart स्मोक. Esports as IC is going to shut down the plus of Dead Eyes, and we have only 2 teams remaining. The split that is coming from the side of NB Esports is not going to favor the situation as NZ has an idea where exactly Mondo is. बहुत अच्छा डिफेंड करा. Especially DE Well, को, Mondo is definitely going to be in grave map को situation once the position gets early revealed, and eliminations there's a निकाले. great बहुत charge ज़्यादा coming बढ़िया. in from the एक side of knock. Stalwart Esports. They are IC looking great at लास्ट the गाय fight. कौन लेता है Better फिनिश. advantage ये रेस when it लगी हुई comes थी to man कि down, कौन man लेगा. well, IC 4MV लेगा या wins. एक्शन लेगा और एक्शन लेगा लास्ट में. एंड गाइस हियर वी गो. द चिकन डिनर गोस टू टीम STE Stalwart Esports. एंड अगर आप चैनल के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. वी आर वेरी क्लोज टू 55.6 के सब्सक्राइबर. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. सॉरी फॉर द डिले सर. कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 64 आज एसएससी के फॉर्मेट के बारे में पता कुछ. यस भाई
कुशक। सो लेट्स गो बॉयज। हैशटैग 2 पे ही है अभी STE 2586 डैमेज। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें हैशटैग 1 पे वाइब्स होगी 18 एलिमिनेशंस, लास्ट मैच 12 एलिमिनेशंस एंड टोटल 28 का जो इनका पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन के आया हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़िया। एक बार गाइस STOP एंड एंटी कर देना यहाँ पे NB के लिए, एंटी टू टीम DE, एंटी 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 मैप एक बार OP कर देना चैट के अंदर सारी टीम्स के लिए गाइस। जो आपकी फेवरेट टीम है सब टीम्स के लिए OP इन द चैट कर दीजिए, OP इन दी चैट। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। ओए नी मेरी जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे। एसटी फुल सीरियस गेम प्ले स्टार्ट आई गेस। यस मेरे भाई। और गाइस अगले मैच पे तो और मजा आएगा। आई गेस अगला मैच शैनॉक का है। डोंट मिस इट आउट गाइस, डोंट मिस इट आउट द नेक्स्ट मैच, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है शैनॉक का, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैप हम उसको बोलते हैं। अगर स्ट्रीम के अंदर नए हो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कर देना गाइस, मजा। 1000 लाइक का टारगेट है आज के दिन पे, कंप्लीट करवा दो गाइस, मजा आ जाएगा। 800 लोग देख रहे हो, सब एक साथ करोगे लाइक, अभी हमारे हो जाएंगे लाइक कंप्लीट कितने 1000 करवा दो गाइस। एक साथ सारे लोग सब्सक्राइब करना, चलो मत करना बट लाइक करके आप बटन दबा सकते हो, लाइक कर दो। हेलो बड़ी, सॉरी कोई दिक्कत की बात नहीं ब्रो, अपना ही अपनी फैमिली, क्या दिक्कत है, सॉरी सॉरी बोलने की कोई दिक्कत नहीं है। एंटी टू ऑल द टीम्स। यस STE गुस्से में है। अरे बड़े ST थोड़ा सा पता नहीं कुछ अलग चीजें आज खा के आइए गाइस। आज लगता है ब्रेकफास्ट डिनर में कुछ अलग ही चीजें हैं के साथ आई है भाई टीम, मर्जी बोलो। बट आगे और ज्यादा फन होने वाला है, स्पेशली शैनॉक का मैच, देखो क्या होता है। अरे ये वाला ट्रेलर तो नहीं आता था पहले, ये नया ट्रेलर आया है कोई। फेस रिवील वैन, जब हमारे पास एक गुल्लक हमारा भर जाएगा, हमारे पास सेविंग होगी। पहले तो माइक लेना है मेरे भाई, पहले माइक फिर फेस कैम देखेंगे, उसके बाद माइक इज इम्पोर्टेंट। लाइक डिस्कॉर्ड वगैरह पे हम फिर बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे फिर हमारे साथ वॉच पार्टी। Yes, so first of all the mic, after that all the things, mic then face cam, everything तब करेंगे भाई। तरकिया नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, this is what happened when ST get, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाला गेमिंग आप देखते हो वैसे, PUBG वगैरह देखते हो तब तो समझ आ जाना चाहिए, मैथ गणित है नहीं। 4MV कहा हैशटैग 1 पे है ओवरऑल पे, बाकी रैंकिंग अभी आ जाएगी आपके सामने, बता देंगे। इस वीकेंड की वजह से ST ओवरऑल टॉप पे आ जाएगी, हो सकता है प्रिंस रावत भाई लीग चैंपियंस बन सकते, हो सकता है। बट देखो आगे, वाइब्स भी अभी इतना जल्दी मतलब, इट्स जस्ट डे 1 एंड मैच नंबर 2 ही हुआ है। तो वाइब्स अगर आपको याद हो फर्स्ट डे उनका डाउनफॉल हुआ था वीक 2 में भी, तो क्या पता कल के दिन पे क्या अप्रोच हो। अभी आगे के 4 मैचेस, 2 मैचेस और बचे टीम्स के लिए, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जस्ट वेट एंड वॉच। आई गिव लिक्विपीडिया में देखो ना पॉइंट्स टेबल, ओके नाइस। यस गाइस, ये बंदे का दिमाग था जिसने भी बोला लिक्विपीडिया पे देखो पॉइंट्स टेबल, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? दीपक शाह भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए, और मैं भी भूल गया था। नूब नूब हूं ना, क्या करूं, नूब हूं ना क्या करूं, अपडेट भी कहाँ हुए पॉइंट्स टेबल, ये पहले मैच का पॉइंट्स अपडेट हुआ है इस 2 मिनट थर्ड, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। आई नी मेरी जिंदगानी की कहानी, अब लिक्विपीडिया पे अपडेट नहीं किया अभी वही। अरे इन्फर्नो भाई, लिक्विपीडिया का नाम सुन के आप एकदम से आ जाते हो, तो है गाइस, कुछ तो है दया, कुछ तो है। पर लिक्विपीडिया पब्लिकली एडिट कर सकते हैं क्या, वो कंट्रोल्स, हु कंट्रोल्स इट? आपका नाम, मुझको इसके बारे में नॉलेज। डू यू थिंक I8 कैन गेट द नंबर 1 पोजीशन इन ऐसे चैंपियनशिप? दे आर द कॉम्पिटिटर्स, बट कंपटीशन भी बहुत है ना ब्रो, इनमें से भी तो कोई टीम आएगी ऐसे चैंपियनशिप के लिए, आने में आ सकती है। दे आर द टफेस्ट कॉम्पिटिटर, अगर आप वन ऑफ द कॉम्पिटिटर हैशटैग 1 के लिए बात करते हो, दम है, बट ये भी तो टीम्स है यहाँ पे, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो कंपटीशन तो टफ होगा, दे आर द कॉम्पिटिटर। अब बात करो आप लोग की टीम पे, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्सो, साथ बैटल करना पड़ेगा। ये वाली कमेंट्री लगा दी मेरे भाई, लगा दिया, टेंशन क्यों ले रहे हो, पॉइंट से अपडेट नहीं हो रहा है इस 2 मिनट में, क्या चल रहा है। लिक्विपीडिया टीम आज बहुत ज्यादा लेट होगी भाई, लिक्विपीडिया की टीम। MVP हमारे भाई, टॉप प्लेयर्स आपकी स्क्रीन के सामने। इज दैट 6 एलिमिनेशन
Akaze 3.4, Doc 2, Action 5. These are the eliminator leaderboard जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं. Your top 3 predictions in SA Championship. अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मैं आफ्टर लीग स्टेज बता सकता हूँ. आफ्टर लीग स्टेज अगर आप मेरे से टोटली बता दो. टॉप 3 पे अगर आप मेरे से बात करते हो अभी के टाइम पे, तो आफ्टर वीक 3, इसका वीक 3 खत्म होने के बाद मैं आपको इसका आंसर आई नहीं मेरी जिंदगानी कहानी ऐसे. गाइस ये तो अपडेट ही नहीं कर रहे गाइस. लिखी पीजे चीम अगर आप देख रहे हो गाइस, हमने आपकी पास्ट में बहुत ज़्यादा तारीफ करी है. प्लीज़ हमें, हमारे ऑडियंस को लाइव पे अभी है जो वेट कर रही है, प्लीज़ वो ट्रस्ट बरकरार रखिए. लिखी टीम इफ वॉचिंग. लीग चैंपियन एसटी होगा भाई, लेकिन टाइटल डीआरएस टी2 और एचवी. मैच रैंकिंग गाइस 28 पॉइंट्स. आई थिंक हैशटैग 1 पे आ चुकी है एसटी. मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ओवरऑल रैंकिंग. आई नी मेरी जिंदगानी ऐसे. एसटी का एंट्री फ्रैगर कौन है? सभी मार रहे हैं. एंट्री फ्रैगर ब्रो अपना नूर, नीरजेट एंड टॉप ही होंगे मोस्टली. तो मेरे को दिख रहा है एक्शन भी एंट्री मार रहा है. वैसे फ्रंट एंट्रीज देखा होगा अपने फाइट के अंदर, मार रहा है. एक्शन भी एंट्रीज. आज मैंने 9 कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लिया ब्रो. भयंकर. छोड़ो यार, बार बार कौन करता रहेगा, एक जगह पे रहने देते टेबल. जब तक पॉइंट्स टेबल नहीं आएगा तब तक अपडेट नहीं हुआ. अच्छा ओके, ऐसा भी होता है क्या? अब हो जाएगा अपडेट, है ना? अभी भी नहीं हुआ. पॉइंट्स टेबल तो आ गया. मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस. आजा पॉइंट्स टेबल. आए नहीं मेरी जिंदगानी. आई थिंक भाई मेरे को लग रहा है ओवरऑल स्टैंडिंग यहीं पे ना आ जाए तब तक, जब तक ये आ जाना. नहीं आ रहा भाई, छोड़ो. इजड एन एक्शन फ्रंट में रहते हैं, टॉप एन ऐसी बैकअप. आए नहीं मेरी जिंदगानी की कहा, जब तक नेक्स्ट में. ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है. ओके ओके गाइस. गाइस बाय द वे गाइस, अगर आप भी ड्रीम 11 लाइक खेलना चाहो, अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो. ये गाइस आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा. तो गाइस जस्ट प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता. जाओ, ये हमारा लिंक है, हमारा रेफरल कोड डाल के आप ज्वाइन करके आप ट्राई कर सकते हो. आईपी लाइक आईपीएल अगर आप देखते हो सो आ जाओ. मैं इसमें ना एक ग्रुप भी बनता है, मैं करूंगा. बाय द वे गाइस, ओवरऑल रैंकिंग यहीं पे आ गई लिक्विपीडिया से पहले. स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स 41 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट डबल पॉइंट है टी2 के जो #2 पे चल रही है. एंड गाइस 30 एलिमिनेशन 2 मैचेस के अंदर भाई, बहुत बढ़िया गाइस. अपना हाई रखा है इन्होंने, बूस्ट अप. देन एनबी 19, डेड आई गाइस 16, डीआरएस 14, मिरेकल 11, 10 10 10, सील, लियो, मैप एंड अब्रप्ट स्लेयर्स 9 पॉइंट. गैप इतना नहीं है बट फर्स्ट का गैप बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है. सेकंड थर्ड का गैप देखते हो 24 19 6, ठीक है, डिसेंट है. बट और का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया. देन एलिमेंट्रिक्स, रॉ, आईएचसी, हाई वोल्टेज, स्काईलैस गेमिंग, आई8, वेनम, बैड इंटेंशन, SITM स्पोर्ट्स एंड कुन्यो टियाजा. दीज आर द टीम्स जो 11th to 20th रैंक है. 29 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया. मे बी मैं भी आ गया, अभी आया. ओके भाई, व्हाट्सअप, क्या हालचाल? अभी ये #2 पे है ओवरऑल. यस जलाल भाई. एंड अभी तक जितना मुझे लग रहा है, मैथ गणित लगा लीजिए. अगर रुको मैं थोड़ा सा स्ट्रीम पीछे करूं, यहाँ पे मैथ गणित लगा देना. आई गेस 55 और 459 पॉइंट का फर्क था ओवरऑल रैंकिंग्स में. तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो. मिरेकल के 11 पॉइंट है. 11 41 में से अगर आप करो 11
और 41 कितने हुए, इनमें से कमा जोड़ करके मुझे बता दो कितना पॉइंट का ओवरऑल पे डिफरेंस आ गया होगा। कर दे, आप कर लोगे इतना मैथ तो आप कर ही लोगे, हमारे हमारे जितना कम थोड़ी ना आपका वीक होगा मैथ। PEL is best in fast points table में, ओके यस 29 पॉइंट डिफरेंस इन ओवरऑल रैंकिंग, ओके 29 गाइस, ST का ओवरऑल के अंदर 29 पॉइंट का डिफरेंस आ गया जिसमें मैं खेल रही है, हो सकता है कि आज ही सीन हो जाए। मेक हेल्प अस मेक अस गाइस, क्या था ये, हेल्प अस मेक पबजी वाली पोस्ट बेटर, ओके फीडबैक, ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी, ये फीडबैक वाला सीन है ना, काफी बढ़िया होता है। आए नी मेरी जिंदगानी की कहानी है गाइस, शैनॉक का मैच मत मिस करना, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैप हर एक फील्ड के अंदर। 29 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है, ओके PL इज द बेस्ट इन फास्ट पॉइंट्स टेबल में, इतना भाई यस, उसके लिए तो आपको मानना पड़ेगा, तो है गाइस। करेक्टेड प्रिडिक्शन 0, अच्छा आज का दिन अभी स्टार्ट ही हुआ है, करेक्टेड प्रिडिक्शंस अभी हर एक कास्टर्स की अभी 0 ही है। People Deep Ansh are the casters for NP नेपाल Pmpl रीजन के लिए, हमारी जनता के लिए। आए नी ऐसी जिंदगानी, हाँ भाई ST ने इस दिन में पूरा अग्रेसिव हो, देखो ब्रो ये तो शैनॉक है, शैनॉक में ऑलवेज अग्रेसिवनेस आपकी अलग ही देखने को मिलती है, देखो क्या सीन रहता है यहाँ पे भी भाई। बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, सॉरी Pmpl ऐसे देख रहे हैं, बट ड्रीम 11 का वीडियो कब बनाओगे, अरे ड्रीम 11 का कोई सीन, मैं बोल रहा था एक चीज आपको बताना जा रहा था भाई, ब्राजील का हमने एक ही मैच देखा, वही रैंडम उठाया और भाई उसमें मेरी फटके 4 हो गई भाई, क्या खेला बंदा, कल आपने देखी ना हमारी स्ट्रीम, ओ भाई आय हाय हाय हाय, कल की स्ट्रीम देखी आप लोगों ने हमारी, ये बताना प्लीज, कल कौन कौन था हमारी स्ट्रीम पे, जल्दी से यस करके बताओ, और उस बंदे का नाम बताओ जिसने कल क्लच निकाला था, कौन सी टीम का बंदा था, अगर आपने हमारी स्ट्रीम देखी है तो आप पक्का आंसर करोगे इसी। वाचिंग इतनी कम क्यों आ रही है, डिसेंट है, अभी तो वैसे मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर आ जाएगी वाचिंग। फास्ट पॉइंट्स टेबल बोलना क्या चाहते हैं, वहां पे तो ऐसा ही आता है, फास्ट पॉइंट्स टेबल गोट मेसी भाई का बोलने का मतलब ये था, मैच खत्म होने के इंस्टेंट बाद ही रैंकिंग आ जाती थी विद इन 20-30 सेकेंड, बोलने का मतलब वो है भाई का ओवरऑल स्टैंडिंग्स। सेकेंडली जो उनकी रैंकिंग्स होती है वो राइट हैंड साइड पे भी लाइव अपडेट हो रहती है, वहां से भी काफी आइडिया लग जाता है, बट इसका भी अपना मजा है ना, सस्पेंस रखने का, सस्पेंस होगा तभी तो फील्ड में मजा आएगा, हर एक चीज का अपना मजा है ब्रो, खुशियां ढूंढनी चाहिए, हर एक चीज में मिल जाती है। Here we go guys, let's go boys, match number 3, Sanhok, the most unpredictable map of the universe, of the community, of the era, that is Sanhok on your screen. F का बंदा था वो, #4 है वो, बट मैसी ने कल हमारी स्ट्रीम, गाइस हमारी स्ट्रीम मेरे को लग रहा है कल अभी तक स्ट्रीम नहीं देखी आपने, कल आपको मैं क्लच दिखाता हूं, चलो इस मैच के बाद मैं आपको क्लच दिखाऊंगा, कल मैं कल की स्ट्रीम पे आपको क्लच दिखाऊंगा, आपने देखा फ्लैमिंगो का बंदा है वो भाई, F का बंदा नहीं है, फ्लैमिंगो का बंदा है भाई, क्या लिख रहे हो, क्या बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा। बाय द वे गाइस, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मीनवाइल टीम्स के स्प्लिट आप देख सकते हो, ISC फैटमॉक के इलाके पे एंड ब्रिज के कंपाउंड पे कंट्रोल देने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी पे जोन जाएगा। मीनवाइल I8 वर्सेस NB आपकी स्क्रीन के सामने मार्च इन कर दिया है टीम आपकी I8 ने, काफी क्लोज प्लेयर है, NB के प्लेयर स्प्लिट्स पे। पैराडाइज की फाइट्स हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रही है गाइस, हमेशा से इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिला है, बुक को डैमेज यहाँ पे काफी मिला हुआ है, I8 को थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा, मोंडो काफी ज्यादा डैमेज, नेट पुल इन हो रहे हैं, अगर नेट कनेक्ट हुआ तो नॉक आ सकते हैं। मीनवाइल SITM एंड HV का फाइट, परवीन को नॉक दिया है, मल्टीपल फाइट्स ऑन गोइंग है गाइस,
हीरो ने यहाँ पे असासिन को भी फिनिश किया है एंड यहाँ पे हाई वोल्टेज अर्ली एलिमिनेशन जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग। स्काई को बहुत ज्यादा डैमेज गैदर करा हुआ है, हेलमेट ऑलमोस्ट खत्म। यहाँ पे हील करेंगे, हील किट है, वाइपर बाइट थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं जब तक स्काई अपनी हीलिंग लगा रहे हैं। एनबी के बंदे अलग अलग एंगल्स पे एंड जहां पर आईगेट के प्लेयर हल्का सा एक्सपोज हो गए तो एनबी के बंदे तो नहीं छोड़ने वाले। इनवाइल यहाँ पे एक और फाइट एएसएल स्लीपी ने टीआरजेड मांबा को किया है फिनिश। तो मल्टीपल फाइट्स एज यूजुअल जो शैनॉक का मैच होता है जहां पे हम बोलते हैं कभी आप अर्ली चीजें मत मिस करो। डिग्री ने गाइस यहाँ पे एक और नॉक स्लीपी को फिनिश कर दिया है। ट्रेड गेम हाई हो चुका है टीआरजेड का एंड एएसएल का। फाइट आपकी स्क्रीन के सामने तिर जहाँ टीआरजी कम्पाउन्ड तिर रहेछ बट मैट क्याट फेरि फिनिश भएको देख्न पाएँ मैले कम्पाउन्डमा छन् भन्दा भन्दै एएसएल शैनॉक पीएल में नहीं, पीएमपीएल साउथ एशिया में नहीं, हर एक रीजन के अंदर शैनॉक इज अ गेम चेंजर मैप। इसी टीम की अर्ली एलिमिनेशन जिसके पॉइंट्स उनको जरूरी हो, किसी टीम के लिए बहुत सारे पॉइंट बहुत सारे भर भर के वेहिकल रहेछ ओके एएसएल सँग मेबी उनलाई रेस्क्यू गर्न सकिन्छ तर पुरै ओपन एरिया पनि रहेको छ। कभर आउँदैन अथवा सपोर्ट आउँदैन कि एक साइडबाट प्रेस गरिदैन, अलिकति गाह्रो पर्ने देखियो। यहाँ एएसएल लाई चरी पछाडीको एंगलबाट चेक गर्न खोजिरहेका छन् तर चरी स्टिल शट एउटा कुनै डिफरेन्ट एंगल हेर्दैछन्, स्पेशली ग्याङ्गस्टा भएकै एंगल तर्फ स्टिल शटको भिजन रहेको छ भने 90 डिग्री त चुपचाप नै बसेका छन्। आल्सो गाइस अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल चरी भाई। यहाँ पे स्टील शॉट को पूरा पिन गर्दैन, मतलब स्टील शॉट पता है उनको वहां पर है। अगर स्टील शॉट को ये भी पता है कि एएसएल का कोई स्टन तर्फको जुन बनेको थियो नि चरी भाई काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपने एएसएल के लिए। द मेन गाय इज आल्सो लेफ्ट द लॉबी गाइस। अभी 3 मैन पे एएसएल है, 3 मैन पे टीआरजेड है। देखते हैं आगे का एग्जीक्यूट तरीके से टीम्स का आता है। मीनवाइल पैराडाइज पे क्या चल रहा है अगर हमको देखने को मिल जाता तो बहुत ज्यादा मजा आता। मीनवाइल नीमा भाई यहाँ पे पिंग करके रखा हुआ है डी के प्लेयर्स को। पीएल कब से लास्ट स्टोन भाई? पीएल आपका होगा इसी थर्सडे से, वीरवार से, जो मैं हमेशा से बोल रहा थर्सडे गाइस वीरवार, मतलब अभी जो आपका आने वाला है मतलब 2 दिन बाद वहीं से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 3 बजे हम लाइव करेंगे। नोटिफिकेशन बेल कॉल पे कर लो, चेक कर लो अगर आपने नहीं करा हुआ है। इंटरेस्टेड पो हो कि सानो एरियामा बसेको छ टिम भनेर पनि टार्गेट गरेको हुन सक्छ। यता विशालको लागि 1-on-1 स्टिल शटको एक फाइट रहेको छ बट उताबाट चरीले दिइरहेछन्। ओ स्टिल शट गया, एक गोली डैमेज पनि गर्न बढ़िया। अभियसली बाहिर नक छ प्लेयर भनेपछि फिनिश गर्न पनि खासै गाह्रो हुने भएन। ग्याङ्गस्टर भाइ क्लोजिङ गर्दै एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। नक प्लेयरलाई हान्ने कुनै पनि चाहना देखाइरहेको छैन। टीआरजेड लास्ट गया, उनको पता है क्लोजिङ हो गया, तीनों क्लोजिङ कर दिए। प्लेयरलाई रिवाइव हुन अरे 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 मुझे कुछ अलग ही चीज देखने को मिली भाई। सॉरी अगाडिपट्टि बढ्दै छन्, पछाडिबाट कभर फायर पनि रहनेछ। एयरसेल वाइप टीआरएस2 वर्ल्ड एलिमिनेशन थोड़े ही मिनट के अंदर 2 वर्ल्ड एलिमिनेशन। मैपमा शॉट गर्नु एक गोलीको मात्रै कुरा हो। भाई कॉन्फिडेंस तो था भाई डिग्री का, ऊपर का एक अलग एंगल था यहाँ पे चली भाई अपने सफल रहे। टीआरजी लाई फेरि पनि वाइप गर्न सफल रहे। एएसएल बसदी क्लासमा भनौं खुट्टा देखेको छन् माफिया निन्जाले फेरि यहाँ एक गर्दै आई नि मेरी जिन्दगी अझै पनि नक छ आएन अथवा रिजल्ट आएन। टिम कमिट गर्छ होला र किन भन्दा मैले भर्खर यसो नोट गरे पछि भाई एसजी को देखो पूरा अपर साइड है उनके पास। यस मेरे भाई लियोको टिम तात्विक रेडी भाई देख लिया मेरे भाई। गेमिङको अगाडिपट्टि 3 जना प्लेयरलाई मैले देखिरहेको छु। स्टलवर्ट पनि त्यही एरियातर्फ आउँदैछ। ओके यो जुन पहिलो हप्ता स्टलवर्टले स्टार्ट गरेको थियो दोस्रो हप्ताबाट बाकी टिमले पनि एडाप्ट माफी निन्जा भाई, माफी निन्जा दाइजो साहब। सेंटर तर्फ टीमहरु अलि बढी नै कमिट गरिरहेका छन्। अब पीएल में तो इस वीक बस टॉप 10 आना है। बस तो तुम ऐसे बोल रहे हो भाई कि कोई टीम तो मेहनत ही नहीं करने वाली। बस मत बोलो भाई ऐसे मत बोलो। बस टॉप 10 आना है, ऐसे तो बस टॉप 5 ही आना था। मीनवाइल लियो सस नॉक्ड नीमा पाजी नीमालाई डाउन गरिएको छ सुसको तर्फबाट। यो हप्ता सुसलाई देख्न पायौं। ओके एक गाना हो जाए, गाना सुनाओ। ओ भाई डी वालों की अपनी मस्ती चल रही है, बहुत बढ़िया। डी वाले हमें क्या, हमारे पास तो कंपाउंड है, हमारे पास तो जोन है, हमें क्या नंबर वाइज मुझे क्या आएको छैन। एकजना प्लेयर एसजी ले नक फेस गरायो। चलो भाई गाना सुनाते रिवाइभ गर्न भ्याएछन् उनीहरुले। यता डी वेनमले पनि आफ्नो नकलाई रिवाइभ गर्यो भने उता निमालाई पनि रिवाइभ गरिएको छ भर्खर। अब सर्कलको कुरा गर्ने त सबै टिमहरु उस गाने का नाम क्या था? सो यु क्यान एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जुन बन्ने छ त्यो पनि यही नजिकै क्लोज बाइ कतै नै बन्ने छ भनेर। लियो पनि जुन नक निकाल्दै थियो टाढाबाट निकाल्दै थियो, रेन्ज थियो, सो द्याट्स वाइ खासै फरक परेन। गाडीको नाममा यहाँ नमुना भेहिकलहरु रहेका छन् एसजी सँग।
आर्मर टोटली ड्यामेज भयो। तो गाइस मेरे को थोड़ी सी आवाज चेंज करने देना त्यसको लागि अझै पनि फोकस गर्नुपर्ने पतली सी आवाज में गाएंगे ठीक है। राइट साइडमा उनले यसो हेरे भने पनि त्यही साइडमा लिएका प्लेयर रहेका छन्, गाह्रो पर्नेछ त्यहाँबाट। अब त्यति टाढा गएर नक भयो भने उनी फिनिश नै हुने हुन्, उनलाई रिभाइभ गर्न कसैले पनि टाइम दिन झ्याउने छैन। गन पनि खासै राम्रो छ निमासँग रेन्जको लागि कुरा गर्ने हो भने। एसआई टिम भर्खर निस्किँदैछ, बाँकी सबै टिमहरू सेटल ठाउँमा पुगिसकेका छन्। आइएको पनि म कुरा गर्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ कहाँ छ उनीहरू एक्ज्याक्टली। बाँकी स्टलवर्ट पनि क्वारी साइडमा पुगिसकेको छ। स्टलवर्ट धमाधम कुद्छ, सुने सर्कल बन्छ, बेसिक लुट पाउँछ, लुट पनि खासै प्रब्लम हुँदैन सानोकमा ओभरमा नै। त्यो बिचमा I8 को प्लेयर एकजना नक भएको देख्यो। नेक्स्ट सर्कल केही टाइममा बन्ने छ भने डी त कहाँ हो कहाँ छ उनीहरूलाई सर्कल आउन अझै थोरै टाइम लाग्नेछ। डी मैं हूँ एक निंजा। एसे हेर्ने हो त कहाँ हो कहाँको पनि अझ पछाडी कहाँ रहेछ। सामी तर्फबाट गाइस उनीहरू ओहो निक्लिँदै हो गएको क्या रहेछन्, देखने को डी मिल गया आज बिस्तारै के move दिन। गर्दैछ। ओके जुन मैले कुरा जोन कहाँ जाएगा गाइस, दुईटा यही बनेगा approach या हुन फिर सक्यो जहाँ यो पे खालको ठीक है टिमको प्लेइङ प्याटर्नबाट, ठीक है यानी जुन सेन्टर बिल्कुल कुदिरहेका टिम छन् सेंट्रलाइज सेन्टर कुद्न दियो, आफू सेंट्रलाइज ढिलो जोन स्टेज बिल्कुल खाली पाइन्छ भन्दा। त्यही फुट्टे बिचमा से नाप के सर्कलको शिफ्ट आउँछ बिल्कुल जहाँ एक क्या अलि बोलते बढी हैं फुट्टे cluster को रहेको इंग्लिश में जो भी त्यो बोलते हैं। जान्छ। सर्कल पनि वानको एरियालाई अलि बढी सेन्ट्रिक अप्रोच त लिएको छ। स्कालेज वाह क्या आवाज है देखियो, आपकी अब मुंबई स्कालेज यहाँ से। गेमिङले यस कुन प्रतीक अप्रोचमा भाई खेल्ने हो त, किनकि जुन डोरेमोन एरियामा लगा भाई रहेको छ, ऐसा नहीं हो त्यहाँ आउने ये सबै खुद फाइट गया हुआ गर्दैछ, सॉन्ग है, थर्ड खुद पार्टी गया फर्स्ट हुआ पार्टी कमिटमेन्ट हामी डोरेमोन का देख्न सॉन्ग खुद पाउँदैछौँ। गया हुआ था यार। BIT ले ब्याक अफ द म्यापबाट रोटेट गर्न खोज्दैछ, स्पेसली लकाउलीतिरबाट एन्टर गरेर खोज्ने हो कि जस्तो म देखिरहेको छु। इभन लियोको मुभमेन्ट त्यहाँदेखि गाडीको साथमा पनि यता यताउता आएका छन्। स्किल गाडी से लिएर ST का ओ प्लेयरलाई एक्शन डाउन बाय गरिएको थियो। मीनवाइल नॉक देन फिनिश पनि फिनिश्ड गरियो त्यहाँ vehicle निंजा elimination को हथौड़ी साथमा। के बीच में एक्सनलाई लुज गरेको छ ST ले। ओके न्यू यसमा टैलेंट अलिकति भए पनि डिस्कवर्ड। ब्रेक यस लाग्यो कि आरु फायर भाई फायर कैसे फायर हो गर्नु पर्यो। आरु भाई आप गर्दा फेरि पीएमपीएल पहिलो ब्राजील मैच देख रहे हो आउँछ, क्या? आइसीलाई लुज गरे हम भी भने देखने वाले हैं टिक क्योंकि रोकिएको पीएमपीएल थिएन ब्राजील का चलाउन। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्यारह एक ही मैच देखा और मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। स्टलवर्ट र यार रकको पीएमपीएल बिचमा ब्राजील तो अलिकता देखना पड़ेगा। इन्टेन्स हिटअप भएको हामीले देख्दै थियौँ गेममा पनि अनि त्यसपछि बाहिर सोशल मिडिया पीएमपीएल ब्राजील अगर आप देख रहे हो बताओ टीम्स टू वॉच आपके नजर में कौन यसले गर्दा उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो कुन टिम हो भनेर पनि। ओ ओ ओ ओ ओ ओ एउटा सानो मिस्टेक, एक स्पेमा 2 डाउन अनि त्यसपछि फिनिश पनि। आइसीले बचुले पोइन्ट्स त्यहाँ भनौँ अर्को नक त्यहाँ रिभाइभल हुन सक्छ भन्ने चान्स रहेको छ। बट स्टलवर्ट Who is the IGL in ST? ओके IC. फोरेम्बीको According to me, प्लेयरहरू it's पनि क्लोज IC. बाई हो कि जस्तो नोट गरेको छु मैले। सो अर्को क्लास पनि त्यहाँ इनिसिएट चाहिँ हुन सक्छ। रक एउटा सानो मिस्टेक रहेको थियो, क्लक अफ फिनिस चोरिएको छ या फोरेम्बी मुखमै आइसकेको छ। नाउ दे नो कि एक्ज्याक्टली कसको क्लास चलिरहेको छ कोसँग, बिकज किलफिल्डमा देखियो फोरेम्बीले स्टलवर्टलाई वाइप गरेको रले एउटा प्लेयरलाई, एन्ड देन भाइस वर्सा भएको पनि उनीहरूले देख्यो। सो अब थाहा छ उनीहरूले कसको एगेन्स्टमा ब्याटल लिन थालिरहेको छ भनेर। यता रिफ्युज डी भेनमको एगेन्स्टमा सर्ट दिए। डी भेनम लास्ट टाइम निमाको नकपछि यो सानो स्पेसमा थियो, अझै पनि त्यही छ, हल्लिएको छैन, हल्लिनु पर्ने पनि अवस्था छैन एटलिस्ट जोन हेरेर त। नक त फेस गर्नु परेको थियो। इभन 4MB को साइडबाट पनि उनीहरूलाई सर्ट आएको मैले देखिरहेको थिएँ, तर फेरि पनि रिभाइभल गर्ने मौका थियो अनि त्यो मौकामा उनीहरूले फाइदा पनि उठाए, रिभाइभल पनि गरिसके। 4MB ले 2 एलिमिनेसन उठाइसकेको छ। स्ट्र्यापेक्सको नाममा एक एलिमिनेसन हामीले देख्न पाएका छौँ। उनीहरू पनि वैसे आरु भाई कौन सी टीम पे खेलने वाले हैं दीजिए अब आउने बेला हुँदैछ। मलाई अचम्म आरु भाई लाग्यो आंसर यसो नहीं करेंगे मुझे। अझै आरु पनि भाई ASL का 2 जना प्लेयर सामीमै रहेका छन्। अझै आरु पनि भाई move गरेका वाज पे छैनन्। ही खेल ग्याङ्स्टा रहे अगाडि हैं। आउने प्रयास गर्दैछन्। उनी पनि अझै ब्लू जोनमा नै रहेका छन्। यदि तपाईँले साइडमा स्क्रिनमा भएको अलाइभ र्याङ्किङमा हेर्नुहुन्छ भने ASL को वरिपरि एउटा ब्लू बोर्डर लागेको छ, त्यसले पनि जनाउँछ कि त्यो टिम जोनभन्दा बाहिर छ, जोनको ड्यामेज फेस गर्दैछ अझै पनि भनेर। इनफ्याक्ट 2 जना प्लेयरले त्यो ड्यामेज फेस गर्दैछन्। चरी र विशाल अब चाहिँ मुभ गरे भेहिकल लिएर। त्यही बिचमा यहाँ 4MB नजर लाउँदैछ, जहाँ भर्खरै प्लेयर उनीहरूले नक गरेका थिए केही टाइम अगाडि डी भेनमको एगेन्स्टमा। उता र पनि सुरुवात राम्रो गर्यो, एक्सनलाई फिनिस गर्यो, तर 3 जना प्लेयर लुज गर्नु पर्यो भने SITM का डेजर्ट यहाँ सिलका प्लेयरको नजिकै आउँदैछन्। रकको हातमा DBS रहेको छ, रक चुपचाप प्रोन गरिरहेका छन्। यदि त्यो घरमा छिर्छन् डेजर्ट भने आरु भाई अट्याक उनले फेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। किनकि आरु भाई ओपी प्लेयर फ्रॉम हायर ओआर कन्फिडेन्स हाई भोल्टेजलाई आरु भाई प्लस जेली भाई की जोड़ी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पाउन सक्छ। या लास्ट टाइम पनि हामीले देखेको थियो यस्तै चाहिँ एक्ज्याक्टली। ओके गाडीमा बसुन्जेल पुरे सिलले गरेको छ सानोकमा। यो एक जनालाई कहाँ हो कहाँ उसले अయ్యా आचो कहाँ के किन कसरी थाहा नपाउँदै एलिमिनेट भइरहेको यो हामीले धेरैचोटि देखिसकेको छ। स्पट गर्नेछन् सोलेसलाई खेलेको देखिरहेको छौँ। म त अहिलेसम्म उनले इम्प्रेस गर्न सकेको चाहिँ छैनन् पर्फर्मेन्स वाइज कुरा गर्ने भने। उता क्युबीलाई पनि सायद सोलेसले देख्नेछन्, सर्ट सायद केही टाइमको लागि होल्ड गरिनेछ। नयाँ सर्कल सिफ्ट आइसकेको छ अनि नयाँ सर्कल सिफ्टले अलमोस्ट टिमहरूलाई चाहिँ एकदम अल्फातिर धकेलेको। भाई मुझे कुछ एक हल्का सा कुछ सुनाई दिया, बिल्कुल हल्का सा टोन आता है इंग्लिश में ना, बिल्कुल पतलू सा चालमा हिंदी में कुछ सुनाई दिया गरेको थियो। अलमोस्ट त्यही चालमा आफू पनि फसेको देख्न पाइयो भने आइएससीले राम्रो स्पेस समातेको। अरे सोलेस भाई राम्रो स्प्रे रहेको थियो सोलेसबाट। फाइनली आपने लोकेशन भी दे दी एसपी सायद बारमा त आएन बट येट नक पनि भएन।
101 को ड्यामेज डिल भयो भन्दा तपाईले त्यहाँ सोल्नेसलाई पनि स्पट गरियो कि यहाँबाट शट आएको थियो भने उता भाई ठीक है भाई ठीक बनाउन खोजे भने that is the IGL for ST ICB IGL सब IGL शट दिन चाहन्छन् M16 6x को रेगुलर कम्बो रहेको थियो तर डाउन गर्न सकेन भने 4MB र लियोको टिम पनि फाइटमा आएको छ 4MB SG सँग पनि लड्दैछ ओके मल्टिपल टिमसँग SG पनि लडिरहेको छ 4MB बाट एकजना प्लेयर डाउन भएका थिए त्यो फियर फिनिश नै भयो भने I8 सँग लड्दै एन्ड I8 SG को गर्दै बीटी भाई गरियो अनि कन्डिसन मैन स्टैंडिंग एंड लियो का आ गया पुश के लागि एज उफिजले त्यहाँ निमालाई ओहो लियो वेनम शट दिइरहेको छ किल फिट जे चलिरहेको छ अंधा क्लस्टर भाई एंट्रीज देखो यार ऊपर से हाय हाय क्या एंट्रीज हुई है कैंप ब्रावो मुंगने की साइड से गएको थियो एसजी को अगेंस्ट पर डैमेज माफिया निजाका एचपी और आपकी आईएचसी होगी एक झन डाउन गरियो एचपी पनि तर प्रब्लम लाइक बन्ने सब यहाँबाट आई8 चढ्न चाहन्छ अगले मैच में ध्यान दिया जाएगा इन चीजों के ऊपर पूरा क्लस्टर जो था आपका लड़ाई बड़ी वेस्टर्न साउथ वेस्ट साउथ की तरफ से बना शायद नाम ले रहे हैं से टीम आगे मूविंग करते थे उन्हीं क्लस्टर पे टीम्स की फाइट ऊपर से पूरा का पूरा क्लस्टर फाइट पास किया जा भाइपरले शट ट्राई गरेछ अब लास्ट प्लेयर बचेको छन् त्यहाँ त्यो लास्ट प्लेयर पनि बचेनन् अघिल्लो म्याचमा 1 पॉइंट यो म्याचमा 0 पॉइंट सो आज बाइनरी गेम एसजी को जाँदै छ सुपर इन्कन्सिस्टेन्ट देखिएको पनि छ बट यहाँ त अलमोस्ट हेल्पलेस सायद सबै टिमहरु पनि भयो उता रले पनि 4MB लाई शट दियो इनिशियल फाइटमा 4MB ले रको एकजनालाई चाहिँ फिनिश गरेको थियो अब हेरौँ त कति डी छ I8 छ 4MB को टिम रहेको छ अनि त्यसपछि र पनि थियो यहीसम्म लियोले पनि यही शट्स लिएको थियो एसजी थियो अब लबीमै छैन 5-6 वटा टिम यहाँ मोर काउन्ट गर्न सकिन्छ होला उता डी को लागि चाहिँ राम्रो स्पट बनिसकेको छ यता डी भेनम यो सानो स्पेसमा कहिलेबाट कोचिएको थियो अल्सो एलिमिनेटेड अब निस्किन पाउँछ अनि निस्किन पाउँदाखेरि कपल अफ नक निकाल्न पायो अनफर्चुनेटली अझै पनि त्यो पहिलो पॉइन्ट एलिमिनेसनको थ्रुबाट आएको छैन सर्भाइभल त टप 12 भनेपछि आउने कुरै भएन आईएचसी त मजे ले अझै मेहनत गर्नुपर्ने छ भने एसआईटीएम जोस देखाउन खोज्दै थियो 4 एलिमिनेसन निकालेको थियो कपल अफ प्लेयर डाउन पनि भएका थिए त्यहाँ तर उनीहरु एलिमिनेसन भने स्टलवर्ट स्पट गरेको छ भने अलमोस्ट त्यहाँ फिनिश हुने कन्डिसनमा पुगिसकेको छ निर्जेटको साइडबाट बस ब्रो वैसे आईएचसी है कहां पे मेरे भाई थियो ओके लोन एचपी गरियो त मेरे को एनबी दिख रही डी ओके रमाइलो रह्यो त्यहाँ कति पटक नक भयो कति पटक रिभाइभ भयो तर एलिमिनेसन आएको छैन स्मोकको साथमा सफ्ट वाल क्रिएट गरेर त्यो भिजन ब्लक गर्न खोजिरहेको छ स्टलवर्टले पनि प्लेयर त लुज गरेको छ एकजना प्लेयर लुज गरेको छ तीनजना रहेका छन् अनि डीको मुखैबाट यहाँ आईएचसी का एकजना प्लेयरले गाडी लिएर गए पछाडीबाट आईएचसी का अर्का प्लेयर कभर दिन खोजिरहेका छन् अन टपले त्यहाँ गडलेसलाई फाइनली डाउन गरे भने अब जुअल रहनेछन् जुन डिफरेन्ट एंगलमा पनि रहेका छन् उता 4MB र बीआईटी को बीचमा पनि फाइट त कन्टिन्यू नै छ स्लेयर पिक गर्न चाहन्थे अर्को कुनै एंगलबाट पनि उनी स्पट भएका थिए डाउन गरियो स्लेयरलाई क्विकली त्यहाँ उनी ढुङ्गाको पछाडी आउने प्रयास गर्नेछन् तर उले पनि एलेक्सलाई त्यो भन्दा अगाडि डाउन गरेका रहेछन् ओके पार्टी इन्भल्भमेन्ट आएको रहेछ डीबीएस को साथमा अन टप पुश गर्न जाँदैछन् अगाडि तर नजिकै धेरै प्लेयर रहेका छैनन् एलेक्स डाउन भएका थिए जो घस्रिदै आफ्नो टिममेटको नजिकै जाने प्रयास गर्दैछन् ओके राम्रो रेन्ज रहेको छ डीबीएस अलिकति कनेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ यो रेन्जमा प्रिफरेबल हुन्थ्यो एआरमा स्विच गर्थे भने तर उनको साइडमा पनि शट आउँछ अनि उनलाई पनि डाउन गरिन्छ मोन्डोको साइडबाट यो टिम शायद भर्खरसम्म थिएन किल फीडमा अथवा इक्वेशनमा बट आईएचसी वाले गेट कीप का ट्राई कर सकते थोरै डिफिकल्ट बनाएको छ दुईजना प्लेयर डाउन छन् रिभाइभल पोसिबल छ र थोरै डिफिकल्ट त्यहाँ पनि मैले देखिरहेको छु बट एउटा मात्रै पोजिटिभ पार्ट मैले यो देख्दैछु कि जोन छ उनके पास पूरा कंट्रोल था ओके स्लेयर का एचपी एकदमै कम भइसक्यो जहाँ छन् त्यही रिभाइभ गर्नुपर्छ होला ओपनमा एक्सपोज हुनेछन् प्रिसियस गन पछाडी राखेर 1 सेकेन्ड अगाडि दौडेको भए पनि ओहो लकी ह्यान्ड्स स्लेयरको एचपी कहाँ खोज्ने होला मैले त्यहाँ त देखिन बट यो रिभाइभल पाए नजिकै आइसकेको छ एनबी को टिम पनि सोरी खतरा बनाउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई बट त्यो रिजले बचाउँछ जस्तो छ डी को आजको दिन पनि राम्रो जाने अलमोस्ट तय भइसक्यो भर्खर एउटा फाइटबाट बल्ल तल्ल बचेर आईएचसी को टिम आएको थियो अनि I8 को पूरे स्क्वाड नै आइसक्यो यो स्पेसमा जेमा कुरेर बसेको छन् एउटा हार्ड पिक सायद उफिजले पनि नोट गरे कि त्यो साइडमा कोही छ भनेर यार उनले नोट गरेका रहेछन् शट्स पनि दिए त्यो प्लेयरलाई थोरै ब्याकअप गर्न मजबुर बनाइएको छ अनि त्यसपछि अब पुश पनि गर्न थालिसकेको छ I8 पनि कन्फिडेन्ट देखियो उता स्टिल को एन्ट्री त्यही वाइपर का स्प्रे भाई स्ट्यान्ड फिनिश पनि गरिनेछ वाइपरको राम्रो कनेक्सन भन्छ त्यो आईएचसी ले यो खतराको बारेमा शेयर गरेको थिएन आर्के एउटा टिम उनीहरु I8 सँग लड्न चाहन्थ्यो बट स्टिल आइसकेको छ मुखैमा आईएचसी लाई डिफिकल्ट बन्यो भने उता डी ले बदला लिँदैछ नक निकालेको थियो एनबी ले प्यारा नक दिया एकदमै क्यूटिक फाइटहरु परिरहेको छ कति देखिरहेका छौं नम्बर अफ टिम फाइट गरिरहेका छौं एएसएल लड्दैछ that knock was Zul and टिमको अगेन्स्टमा डिफेन्ड गर्नु थियो Viper was insane भाई बहुत प्यारे नॉक्स दिए फेरि पनि डाउन निकाल्दैछ ओके यो फाइट Pml से कहीं 3 वीक्स और यस मेरे अगाडिदेखि फाइटमा उनीहरु बचिरहेका थिए 5 एलिमिनेसन पनि निकालिसकेका छन् सो अलिकति भए पनि केही हदसम्म राम्रो म्याच यहाँ जान्छ कि भन्ने अपेक्षा बीआईटी ले गर्नेछ सोल्लेस यहाँ रहेका छन् अब सिलका लागि एकजना प्लेयर भने अर्को प्लेयर पनि अलि पछाडीपट्टि रहेका छन् I8 सँग थ्रोएबलको काउन्ट कति छ मैले उफिजको इन्भेन्टरीमा त
देखेको छैन ड्यामेज दिने थ्रोएबल कुनै पनि इनफ्याक्ट स्मोक नै पनि रहेनछ उनीसँग त भने एमबी को मुभमेन्ट पनि उनीहरूले हेरे ओके भाइपरले त्यहाँ डाउन गरेका छन् सोलेसलाई भाइपर वान्स अगेन त्यो टिमका लागि पुरै फ्र्यागिङको मेरुदण्ड बनिरहेका छन् अलङ साइड नोभाको कन्ट्रिब्युसन अफलेट देख्न पाइरहेका छौँ ओके घर बाहिर निक्लिएको थियो बाहिरबाट यति सर्ट आयो उनीहरू क्विकली फर्केर घरभित्र आयो कि अब काम छैन बाहिर गएर भन्ने उता सिलले रिभाइभल थाल्यो भने यताउता जो अन्तिम प्लेयर रहेका छन् रका लागि केही टाइम अगाडि डाउन गर्दै थियो अब यहाँ लामो डिस्टेन्समा सर्ट गर्न अलि गाह्रो हुन्छ कनेक्ट गर्न अनि अल्फा आउँछन् डाउन गर्छ यताउता एलिमिनेट भइसक्यो पनि यहाँबाट निस्किएको छ भने बिआइटीको नाममा एलिमिनेसन नम्बर 6 सैकोटलाई रिभाइभल चाहिएको छ कभर होला र अलिकति ओपन नै रहेको छ सिचुएसन त्यही बिचमा डी भेनमले सीले भन्दा कितने बार नक हो गए डी भेनम यत्रो बेर चुपचाप लागेर बस्यो हल्लिने अवस्था पनि रहेको थिएन बट जब हल्लिने अवस्था आउँछ अब उनीहरूले म्याच जित्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिरहेको छु मैले मिनी म्याप हेर्नुहुन्छ भने कसले रोक्ने अब उनीहरूलाई स्टलवर्ड छ एउटा अभियसली स्टलवर्डलाई टेक डाउन गरियो भने देन डी भेनमको लागि म्याच इजी हुन सक्छ बट क्रिटालाई हेल्प गर्न कोही पनि गएन उल्टै क्रिटाले ब्याकअप गरेको छ अनि अब त्यहाँ कुरा गर्ने भने स्टलवर्डले फेरि पनि रिकभरीको टाइम पायो त्यसपछि सरप्राइजिङ लाग्यो मलाई त्यहाँ कम्पाउन्ड हेरौँ डी को लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ होला सायद आई8 को कन्फर्म गर्दैन बट जितना मुझे लगा वाइपर का ही साउन्ड छ उनीहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन नक पिच गरेको थियो बट खासै एफेक्ट गरेन भने आईसीले स्पट गर्छन् एएसएल को प्लेयरलाई जसको अगेन्स्टमा ड्यामेज दिन खोजेका थिए बट एक पनि शट कनेक्ट भएन आईसी को पोजिसन अब अलिकति आइडिया भयो एटलिस्ट एनिमीको अलिकति आइडिया भयो एएसएलले अब कता हेर्नुपर्छ भनेर त्यो बीचमा एएसएलले सीएमएफ को प्लेयरलाई डाउन गर्छन् दुवै बचेका थिए एकजना त आउट अफ द जोन छन् सील जुन आएको थियो रफ इन्ट्रीको साथमा आई8 को नजिकै त्यहाँ नक निकाल्दैछ विथ द नेड सील छ त्यहाँ अनि त्यसपछि आई8 छ घर बाडेर बसिरहेको छन् उनीहरू पीआईटी का प्लेयर रिभाइभल दिनका लागि जाने प्रयास गर्दै थिए एकजना प्लेयर डाउन पनि गरेछन् जाँदा जाँदै अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टनरलाई रिभाइभ गर्ने मौका पायो भने ओके क्लोज बाइ आइसकेका रहेछन् ग्याङ्स्टर एनबी के बंदे ने भी नॉक दिया था जितना मुझे याद है बट वो वाइपर का ही नॉक ठीक है भाई बैड इंटेंशंस एलिमिनेटेड धेरै गाह्रो नपारोस् एएसएल लाई ओके त्यही बीचमा डी पॉइंट्स के साथ टेक डाउन गरिन्छ एएसएल आल्सो प्ले जोन सपोर्ट दिने प्रयास गर्दै थिए डी को नजिकै उनी रहेको दो लन्डे बच्चे स्पॉट पनि गरे डाउन पनि गरे भने यहाँ नोभा स्पॉट करा सिलले दुईजना प्लेयरको साथमा डी ने अच्छा एलिमिनेशन टाइगर्स मैच से डी गनको साथमा केही बेटर देखिएको छ स्पेशली दोस्रो हप्ताको मिडबाट अनि त्यो कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ फर्मलाई भने यहाँ एसटी जसो तसो गरेर डिफेन्ड गर्ने प्रयास गरिरहेको छ आफ्नो एरियालाई उता स्काईले डाउन गरे सोललेसलाई सिल अब फाइनली लास्ट प्लेयरमा कन्भर्ट भएको छ ग्याङ्स्टरको फिनिश फाउन्डेसन टुरले आफ्नो नाममा भने नम्बर अफ ट्रेबल गएको छ प्रोजेक्टाइल हेरौँ न एकजना प्लेयरले अलिकति लोअर ट्राजेक्टरीमा नेट फाल्छन् अर्को जनाको जान्छ हायर ट्राजेक्टरीमा दुईटै गएर मुखमै पड्किन्छ नक पनि भयो अर्को प्लेयर फिनिश पनि भयो त्यहाँ स्काईले सोललेसलाई फिनिश गर्दा प्लेयरमा कन्भर्ट भयो भने एसटी बग्गी भएको साइडमा सर्ट दिन चाहन्छ तर त्यहाँ कोही प्लेयर रहेका छैनन् अनि जोनको नयाँ सिफ्ट जुन आउनेछ यसले धेरै हदसम्म डिसाइड गर्नेछ डी भेनम अझै पनि तीनजना प्लेयर रहेका छन् तर उनीहरू भएको साइडमा त्यति यस विक्रम भाइ यस नहीं ये आई8 नेपाल की टिम है भाई ये आई8 अलग है वो आई8 इजियर हुन्छ होला किन भन्दा त्यो कम्पाउन्डको एटलिस्ट एज रियुले पनि पाउनेछ माथि स्लोप छ तलपट्टि झर्दा रुखको कभर हो म्याक्स टु म्याक्स सो खासै हेल्पफुल त्यहाँ अवस्था रहेको छैन यता अनटप जाँदैछन् नजिकै सिलको प्लेयरले कुरेर बसेको छन् सातो जाने गरी त्यो प्लेयरले सर्ट दिनेछ केही टाइममा सर्ट दियो भने उता एनबीले डी भेनमको जुन टिम रहेको थियो उनीहरूको मुभमेन्ट ब्लक गर्न चाहँदैछ डीको यो म्याचमा पनि फ्लो राम्रो देखियो अलरेडी कति गाह्रो रोटेसन गरेर आएको थियो एट द एन्डमा एउटा सानो सर्कलले साथ दियो अनि त्यसलाई क्यापिटलाइज कसरी गर्ने अलमोस्ट देखाउँदैछ उनीहरूले 4 एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकालिसक्यो अगाडिपट्टि जानै पर्ने हुन्छ यो फाइट लिनै पर्ने हुन्छ यो कम्पाउन्ड आफ्नो नाममा गर्नै पर्ने हुन्छ बट अगाडि कमिट गरेको पनि छैन उनीहरूले बिकज दे नो कि पारीबाट थ्रोएबल्स आउन सक्छ एक नक त निकालेको हामीले भर्खर देखियो डीको 4 जना प्लेयर छन् त्यहाँ शान्तिले हेरेर बसेको छन् कतिखेर एक नक दुई नक अब 1v1 को कुरा गर्छ बट समहाउ त्यो क्रुशियल शट गनले बचाएको छ त्यहाँ डीको टिमलाई उता स्लेयरको नेट गएर पारी दुईटा नक निकालेको त थियो उनी सोचिरहेको थियो पुश गर्न पाएको भए कति मजाले त्यो कम्पाउन्ड पनि आफ्नो हातमा आउँथ्यो भनेर बट अहिलेको लागि आफ्नो पार्टनरलाई बचाउनु जरुरी देख्दैछु एन्ड यस रिभाइभल त्यहाँ स्लेयरले पाइसके बिग टेस्टको पनि फिट एन्ड फाइन सिचुएसन आइसक्यो भने अब एएसएलको लागि एलिमिनेसन पोइन्ट त आएको थियो जोन एन्ट्री अलमोस्ट देख्दिनँ पिन गरेर राखिएको छ टुरलभले पुरै त्यो साइडमा स्कोप अन गरेर बसेका छन् थाहा छ उनलाई त्यहाँ कोही प्लेयर रहेका छन् तर इनफ्याक्ट केही टाइम अगाडि फ्रिज नै पनि गरिएको थियो भने एएसएल नै हो भन्ने पनि अझ कन्फर्मेसन पनि पाउनुपर्ने हो चरीको साइडमा स्कोप अन गर्दै थिए भने अब आई8 तर्फ उनी एग्रेस गर्न खोज्छन् त्यो कम्पाउन्डमा एकजना प्लेयर छ दुईजनालाई स्लेयरको नेट दिएर जोन बाहिर बसेर ओके एउटा पोजिसन त माथि लिएर आए डी भेनम भन्दा त माथि आउनेछन् उनी टप 5 मा म्याच कन्भर्ट भएको छ घुस्दै अगाडिसम्म आउने प्रयास उनको रहनेछ पछाडिबाट जोनले पनि उनलाई धकेल्दैछ भने डी अब एनबी को साइडतर्फ चेक गर्दैछ अरे ये तो अलग मौज होगी टुरलव सर की अलग मौज होगी है भाई लो भाई फिनिश उठाउन खोज्दैछ टुरलवको डिफरेन्ट एंगल त्यहाँबाट उनलाई
लिएर जानेछ सेक रहनेछन् एकजना प्लेयर भने फिस्ट बोय उता रहेका छन् जसको एचपी लो भइसकेको छ कन्टिन्युअस शट गइरहेको छ ओके आइसीलाई डाउन गरे सेकले चाहिँ बीचमा फिस्ट बोयलाई प्लेयरले डाउन गर्छन् डी को लागि एलिमिनेसन नम्बर 10 आइसकेको छ नम्बर 11 अगाडिपट्टि रहेको छ तर ट्रु लभले त्यहाँ आइडिया नै पाएनन् ओके अब अन टप पोजिसनमा उनी आउनेछन् अन टपको क्यूबीजी सेकलाई लिएर जान्छ एलिमिनेसन नम्बर 11 डी को नाममा राम्रो म्याच गइरहेको छ डी का लागि उनीहरुले यो म्याच लिएर पनि जान सक्छ अलमोस्ट जितिसकेको छ म्याच किन भन्दा कम्पाउन्ड छ उनीहरुसँग अगाडिपट्टिको कम्पाउन्डमा केही गरिकन जान पाए भने झन क्लियर हुने थियो उता स्टालवर्डले रिकभरी हर एक टाइम गर्न पाइरहेको हुन्छ नक हुन्छ प्लेयर फेरि आएको गर्न पाउँछ फेरि नक हुन्छ आउट अफ द टपिक यता स्टालवर्डको दुई जना प्लेयर डाउन थिए दुईटा एसटी मिनवेल स्टेबल होगी सरीले एक नक एकदम नूरको खोला निकाल दिएको छ एसपी उनको कम भएको छ हिल गर्नु छ उनले चारी लास्ट बन्दा है चारी गर्न भ्याए पनि बट उनलाई स्पटेड गरी उनलाई फिनिश गर्यो अब 4v3 को फाइट एक जना प्लेयर डाउन छन् भनेपछि 4v2 को फाइट रहेको छ यहाँ डी को लागि अलिकति क्लियर हुन पाए स्टालवर्ड को प्लेयर आउट अफ द जोन रहेको छ हेभी ड्यामेज युनिट को लागि रहने छ भने एसटी बट कंसिस्टेंट मैच #2 पे एंड करा यहाँ पे एसटी ने एंड अगेन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बाय टीम STE and also a well played by team Dada guys well played and anti to team ASL I8 बहुत बढ़िया एक बार हर एक टीम के लिए ओपी इन द चैट कर दो गाइस OPDE OPSTE OPASL OPDE सारी टीम्स के लिए गाइस ओपी ऑन द चैट DBS is unfair yes guys let's go and guys अगर आप चैनल के अंदर नए हो so make sure to hit the like and subscribe to the channel 13 elimination chicken dinner banger overall standing पे #9 के ऊपर डाटा है guys आ चुकी है बहुत ज्यादा बढ़िया नॉइस यस अरु भाई GGOP yes GGOP 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 Ninja Hattori like and subscribe to the channel guys like and subscribe to the channel if you are new to the stream 1000 लाइक का टारगेट है गाइस वो कंप्लीट करवा दो अगर आप स्ट्रीम को देख रहे हो भाई आई थिंक कहां खेल रहा है प्रतीक लो साउंड कर सकते हैं बट इनकी वॉइस भी बाय द वे इसके बाद गाइस हमारे 2 मैचेस और बच रहे हैं टीम के एक मैचेस बच रहे और हमारे 2 मैचेस ये हमको तो पूरा स्ट्रीम करना है ना इतना कम कैसे सारी गेम भी भाई एकदम बढ़िया आप सुनाइए आप कैसे हैं क्या हाल चाल है बढ़िया एकदम गाइस हमें अभी अपनी झूठ बोल रहा है आरू भाई झूठ आरू भाई ना मुझे पता है आतंकी मैंने कहीं ट्रायल्स दी ये भी बता आरू भाई आपकी कौन सी टीम है आरू भाई बता कौन सी टीम चल रही है नोज गाइस गैस करो आरू भाई कौन सी टीम यहाँ पे ट्रायल्स दे रहे हैं गैस करो सब लोग गए आईपीएल अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ 7:30 होता है आईपीएल स्टार्ट नहीं मेरे साथ हारो भाई फुल ग्राइंड योर टीम्स कौन है वाह भाई योर टीम्स कौन है ये कौन है नाबी ब्लॉग गेमिंग योर टीम्स कौन है भाई योर टीम्स कौन है आरू भाई योर टीम कौन है Here we go on top sir with the 5 elimination MVP rankings में top पे एवरेज सर्वाइवल 21 पॉइंट 11 का मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहे हैं यस गाइस मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रही है इंडिया में बहुत जल्दी एंड उसके आरू भाई ग्राइंड कर रहे हैं आज किसकी मैच है आईपीएल ब्रो आज का जो मैच है
कितनी देर में रुको, मेरे पास कितने मिनट है? टीम 23 मिनट है हमारी टीम बनाने के लिए। अभी लाइनअप आउट हो चुकी है, मैं चेक कर लूँ। रिद्धिमान साहा, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, शुभनम शर्माश, पटेल, दिव्या पांड्या, यादव, राशिद खान, और जो भी नाम है बंदे का। गुजरात विल बॉल फर्स्ट, गुजरात की बॉलिंग फर्स्ट है, तो मतलब गुजरात के लॉन्डे बॉलिंग। तो गाइस जब भी टीम बनाते हैं ना, पता है क्या देख के पता, चलो आज इसमें भी चीज, टीम जब बनाई जाती है तो टॉस को भी काउंट किया जाता है, देन देखा जाता है पिच की सरफेस कैसी है, कौन सी उसको वो हिट करेगा। अब कल का जो मैच था उस पे अगर मैं देखूं, कल के पिच के अकॉर्डिंग स्पिनर का रोल जो था, एंड ऑब्वियसली स्पिनर का जो सीन है काफी मतलब तगड़ा था अकॉर्डिंग टू द पिच एंड जो स्टैट्स वगैरह। आपके भाई ने कल मोइन अली को बनाया हुआ था कैप्टन। अब आपका भी चल रहा था मतलब जो मैंने कॉन्टेस्ट लगाए हुए थे बिल्कुल नीचे, मोइन अली ने लिए 4 विकेट, #1 गेम पलट दी एक ही बंदे ने। कल मैंने एक और लिया था सैंटलर, काफी बंदों ने सैंटलर भी नहीं लिया हुआ था। तो बढ़िया। तो आज 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 का जो मैच है दैट विल बी ऑन। अब यहाँ पे आ चुकी है बॉलिंग, ठीक है। बॉलिंग के अकॉर्डिंग जोसेफ, शम्मी शम्मी ने भी ज्यादा टाइटन करने वाली है बॉलिंग पर। जोसेफ, शम्मी, यादव भी रहेगा, राशिद खान तो लेना ही पड़ेगा, 3 बॉलर तो लेने पड़ेंगे। एक ड्रॉप डीसी से बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा कम, एक बैलेंस लाइनअप बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखते गाइस, बैठते अभी, हमारे पास है टाइम, वी हैव 21 मिनट लेफ्ट, टेंशन ना लीजिए। आई वांट टू सी संदीप अगेन इन आईपीएस। कोई दिक्कत नहीं। आरू भाई को ले लो डिस्कॉर्ड पे। ग्रिगनाड रेगेंट भाई, आरू भाई को ले तो लेंगे। मीनवाइल गाइस, ओवरऑल रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने। #1pest ऑलरेडी पोस्ट विद 30 पॉइंट, Dada guys 39, NB 25, T2 के 24, 23 Abrupt, then Seal, Miracle, DRS I8, and then Mab, Raw, Bad Intention, Elementrix, SITM, Venom, IHC, High Voltage, Skylights, and Kunyo TRZ। हाँ, तो आरू भाई को डिस्कॉर्ड पे ले तो लेंगे, बट हमारे माइक का इशू है, जैसा मैंने आपको बोल रखा है। हमारे माइक में वॉइस आती है जाती नहीं, मतलब जाती है आती नहीं है, बिल्कुल लिटिल लिटिल वॉइस आता है। तभी मैंने बोला है कि अपन को माइक पे करना है। टोकनिस्ट का हैंड कैम सेंड करो। चाहिए क्या आपको? आई विल ट्राई। सही में चाहिए क्या आपको? सही में, या आप सार्केज्म में लिख, अगर आपको चाहिए सही में तो आई कैन ट्राई, और हो भी जाएगा, मिल जाएगा अगर आपको जेन्युइनली चाहिए। बाकी इनका इसका चैनल है डॉग का, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो कोई नहीं, जुगाड़ करवा देंगे आपके लिए। SITM आउट, ओके। अगर आपको जेन्युइनली चाहिए बता देना आप, मतलब मैसेज कर देना DM, बात लूंगा, अगर हो सकता होगा तो बता दूंगा आप। मैच 4 STD रॉ, यस यस सही, ओके आरू भाई। मुझे देना डॉग को, इसका मैं करता हूँ सीन। बाकी इनके चैनल पे देख लेना, उनके चैनल पे कुछ अगर वैसा नहीं है तो बताना मुझे। क्या चैनल है डॉग का? देखते हैं ब्रो, जोकर गेमिंग है, टेंशन की क्या हद। आज स्ट्रीम बड़ी चैनल पे नहीं है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ आरू भाई, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं फाइट करता हूँ, ठीक है। टोमेटो को गाइस, मेरे लेवल की टीम बनाने का टाइम है अभी, 7 बजे से 7:30 बजे तक। आई एम लिटिल बिट थोड़ा ऊपर नीचे। नो मनीष पांडे इन आर कमिंग। कोई बोल रहा था कि हैक लगा के खेल
कौन बोल रहा था? जो अच्छा खेलता है वो हैकर ही होता है ब्रो। कि इंस्टा आईडी दे आईडी चाहिए आप। इन्ना ना भाई आज के दिन तो भाई अलग ही चल रहा है भाई। कोई ना कोई इशू वन वी वन हो जाए। अरे अरे भाई आरू भाई आपके साथ 1v1 करेंगे जब आप उनको लाइक वो रखोगे कि हारने पे या जीतने पे 1k 3k ऐसा। आरू भाई परसेंटेज डिवाइड कर लेना ठीक है। चलो भाई मैच नंबर 4 द सेकंड लास्ट गेम ऑफ डे स्टार्ट हो चुका है आपके स्क्रीन के सामने। And that's what we want from them. चलो भाई आ जाओ भाई एग्जाम है। अरे big thanks from all these teams, and the flight path this time is going from the side of El Pozo towards the southern side of El Hazar. That means VenomD, they have to go for a very long journey towards Puerto Piracio. Even for Los Leones, you have to glide a bit more. Valle del Mar is not so easily glidable. Chumacera better find vehicles as soon as possible. All the best, and we saw last time in Due, so few of the players were taken out pretty early in the game. So Miramar is never so safe out in the open. Yes, the terrains are there, the ridges are there. At the same time, you have to be very familiar with the geography of this map. Otherwise, players like me, they can't survive for very long. But thankfully, there is no player like me. They are very experienced players. Thankfully, yes. I mean, you're talking about me. I have zero chance on the map of Miramar. There's a reason I avoid playing this map, and the reason is I'm neither good with the long range weapons nor with the shotguns. So mid range fights hardly happen here. It just puts me in a very bad position. 14 मतलब very bad positions. के बाद the teams that do like to drop all the way to Chumacera, Minas del Valle are gonna be in bad positions. Look at that. चलो भाई आ जाओ लॉन्डो फुल एनर्जी के साथ। जोन आपकी स्क्रीन के सामने। ये जोन हमने पीएल के अंदर बहुत बार देखा है, जो कि लास्ट में क्लोज इन होता है हासिंडा के आसपास या क्रूज डेल वेल, जहाँ पे मैप है कहीं इधर उधर ही क्लोज इन होता हुआ दिखाई देता है। मैप टू वाटर सिटी टू हासिंडा का जो रोड है कहीं यहीं कहीं आसपास हमको देखने को मिलता है, कंपाउंड्स के पास। देखो आज का जोन कहाँ पे जाता है। It's too early to say bad. There is a northern circle, Maptex Esports and Skylar's Gaming. They usually perform really good because rotations from both these teams come from the northern side. And this time again, the position in which Maptex Esports are, yes, they can capitalize, yes, they can be the dominating force, even for the players of IHC. They have the entirety of El Hazar. That means they are going to have good resources in their hands. The circle is in their favor. They can try and see control from the eastern front. But the teams like 4MB or the players who like dropping into the side of Los Leones, like the players of City Esports, I8, well, I8, they again have one more rivalry in Miramar. There are too many rivalries. Unlike Pakistan region, South Asia, these teams like to have healthy banter, healthy rivalry. In Los Leones, 14 minutes left. We have I8 and System Esports. They tend to go against each other so many times. So let's find out if again this time they are going to do so. Well, we'll see. As of now, bad intentions. Jelly bhai आइजल नहीं है भाई। That time they know the whole area is all theirs. क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे जिनको नहीं पता है। I do want to know from you though. In the map of Miramar, which is your favorite drop location and why?
the house of the boss, Hacienda del Patron, because, oh, come on, we get the golden Mirado. I'm always up for the Hacienda. Yeah. It's the house of the boss. So, yeah. But at the same time, when you have the center, Saint Martin rotations come pretty easy. Not so easy, because even if you're in an extreme circle, if you're somewhere towards the side of Saint Martin as compared to the side of Chumacera or Veldinmar, and you have a Torre Emu, the circle rotations are going to be a bit easy. That is also a reason. Okay, the main reason is you get good resources. Talking about good resources, my favorite pick generally for drop on this map is Los Leones, because I mean, I did talk about prison earlier, but that's just to compliment my dress. But going back to the actual thing, yes, I do like Los Leones. It's a huge city, and I mean, I never play Pro League. I couldn't, even if I tried. I mean, if I ever got selected for a Pro League team, I would definitely be serving them water. That's going to be my duty. But in the general games that we play, Los Leones is generally flooded with people, and that just makes it, you know, a quick game, because I don't like being the only person dead in the team, just sitting there watching the rest of them playing. So if we drop in Los Leones, we can all die early and all re-queue again. I mean, makes sense? Does it? Does it? Does it? Thankfully, Los Leones is a big city. Two teams can coexist in harmony. They're going up against each other, but not in South Asia Spring 2023, because I8, Symptom Esports, every time they go up against each other. But talking about other teams as well, in the epicenter, we have the players of DRS, and we know for sure whenever the players of DRS, they have the zone, they have a good position, they perform really better. We saw it in the very first game where DRS, they came on the second spot. So maybe this time again they can do so. But on the periphery of the circle, on the western front, we have the players of Seal Esports. They may try and gatekeep all the traffic that is coming from the western front. But again, like I said, I8 City Esports, again, back to the city, Los Leones. But I'm just waiting for the potential fight, because both these teams never disappoint. They always go for each other, but right now they have to go for the basic loot, basic resources. Then we have the players of High Voltage in the city of Picado. High Voltage, first week they got a chicken dinner. In the fourth game, in the map of Miramar, Erangel with 9 finishes. But after that, they started losing the confidence from the mid of week number 2, and they have not been able to step up the game. Even the start of week 3, the 3 games they played, none of them went in their favor. Well, I guess this is the one that will. They are gonna switch it up. They're gonna surprise you and all the viewers and win the hearts of their fans one more time, because this is the time when I've predicted they'll win. Not like any of my predictions have gone right so far, though. But in any case, talking about map picks, I'll just switch the topic before I get too far and deep. They're in a pretty city. They can take their time. They can go ahead, make sure they have the best possible opportunities. It just feels like on a map like Miramar, our teams just take their sweet time to try and figure out what they want to do. And the amount of time they're taking this time just makes me feel like the strategies are going to be out of the box completely. And once the cat is out of the bag, it is going to be a real fiasco that we might just witness. Because come on, look at this. The first stage is closing in already, and we have not even the first blood, let alone a team elimination. Makes sense because it's Miramar, but then doesn't make sense because it's Pro League. Miramar is supposed to be a slow-paced map, so that's why we are seeing a dull moment. And but then I'd like to ask you, since you are so familiar with the Pakistani teams, what change do you notice right now? Since Pakistan is supposed to be a very aggressive region, what change are you seeing in Pakistan region and South Asia region? Well, that's quite a difference, and I'm very happy you brought up this question, because here's the thing. Pakistan region is generally aggressive no matter what map. We do see quite a few fights begin in this early phases as itself, and towards the last circles, there's fewer teams left, and that is when the wait game starts. However, there's no long waits anyways for the fights to begin. But in the meanwhile, if you talk about SA region, there's quite some cold play going on during the beginning, and I'm not talking about the band. I'm talking about the way the game starts off, and going towards the last circles, it keeps on becoming,
more and more patient, while I was not expecting that. I mean, even in a map like Sanhok, even when we had 7 teams remaining towards the tiny little circle, we still did not see as many fights aggress at the same time as you would in the Pakistani region. They're just those games last way less longer than these. They are just way too faster towards the pace. It's only if you have like a 1v1 in the last circle when you would see a dead air where there's literally nothing happening and everyone is just waiting for the right time to peek out. But yeah, there's more thought going in here, because I feel like when you go to a place where the regions have shifted, the whole meta changes, because there's multiple regions coming in, multiple types of gameplays coming in, and the mindset of the other region is a little bit harder for a person to find out. So there's more time that you need to read the team and strategize accordingly. गाइस So I वेट feel अ like मिनट that यार, चैट definitely वगैरह भी मिस हो puts रही होगी थोड़ा सा, मैं अभी कर in a रहा हूँ। very challenging 7 मिनट place बचे, बस 7 मिनट for दो the मेरे को। teams to actually go ahead and capitalize in a place where regions merge. And I feel like that gives a great opportunity of learning तो as मैच well अभी to तो all तब these तक teams. मैच भी So हम एंड पे पहुंच जाएंगे। no matter 2 मिनट what रुकना। position they're holding, they're definitely improving their gameplay quite a bit. तो गाइस मेरी फाइनल जो टीम होने वाली है उसमें But talking about SA region, well, we have IHC डेविड might वार्नर go up है, against for the plus of DRS, because गिल both है, are पृथ्वी looking to शॉप take the पे देख control of सकते the हो, same प्रो सोले से compound. And अपनी let's चॉइस है, see अपनी Demo ऑफिशियल अक्षर पटेल, trying to find an डेमो opening with a क्या बात है, grenade. And DRS a players. नॉक होने This वाला है grenade कोई तो। can be so very deadly for the players of DRS, especially Delta. But Demo is going to miss the perfect projectile, and the cavalry reinforcement are there to help Demo in this situation. Demo might go for the flank angle. Godless, he is a god player from the side of IHC. The grenades are coming in, the molotovs are coming in, but there is no opening that has been created on the other side of the Meanwhile, map. Rick We have Paji ने T today Assassin, going up against the players of high not a good day voltage. for us, And like Killer HC team YTT right now in अभी front तक of के लिए, us and goes multiple down. knocks, IFC क्या बात Demo है, having a Zone, perfect angle onto him, and Zoil with the molotov takes down Delta over there. So TRS not having the numbers advantage, भाई only 2 players. चल It's है, a 2v4 situation as knock Alex the goes and last shackles him along with guy his teammate. left, Takes and rolls I down think over there, DRS and के लिए TRS बेटी with only a Gante single भाई the player last guy है, Gyante. What it's can a he do in this 1v4 situation? He's hiding, but then who knows exactly where to and hide. The free fire लोन Corona HP is going to and Demo come ने यहाँ पे वाइप along करा with his teammate, DRS को। bring down तो the गाइस आपकी स्क्रीन के entirety सामने of सारी की सारी DRS टीम्स जो gaming, अभी की decimate इस the लॉबी को DRS शेयर gaming कर रही है। at 16th Meanwhile, we have position 6 with no minutes, points and at I'm all. just But waiting. IHC, a very good start, 4 defeat points already in their favor, but they have to be a bit cautious, as in the mini map I can see some team lurking nearby. Well, पहाड़ों के that lurk is ऊपर definitely gonna get जंगल in the के way a little. पार देखो और लाया But let's मेरे see how far they can conceal their position, because once you give away the position, that's like giving all of your strat plans away. It's like just shouting out your schemes at the top of your lungs. Concealing your position is definitely going to be something that you have to be very, very careful of. But in the same time, okay, I don't feel like भाई 5 मिनट बचे, टीम ही pointing नहीं this बनी भाई out मेरी। as much, because I'm not sure if that's the truth, but it feels like TRMZ आ is जाओ आ जाओ आ जाओ, unaware जोन आ of जाओ। the IHC presence क्या बात है, क्या बात है, क्या of the बात है, venom क्या around them. बात है, बहुत बढ़िया बात है। It feels like your prediction might just be a very good one as of this match, because NB Esports does have a great position for themselves. They won't be facing as much trouble trying to walk back in if the circle were to shrink against their favor as well. But the crowd is definitely increasing, and the real estate is gonna be falling short very quickly. I'm a little worried about Illuminate, because it just feels like I am not seeing them coming the right way. They are all the way outside the zone. They're taking a much longer rotation, obviously with a plan in hand, but that's just the kind of damage that will make you utilize a lot of your medkits already early on in the game, and might just not leave you with enough utility to be able to reheal yourself once you're into the actual fights that are going to pick you off. That's not only damage taken, that's also frag points given to another team, and that's just something that you need to be very, very wary of when these points collectively actually make changes in the standings that you hold in this game. Actually, I disagree. NB Esports, they have to face all the teams that are coming from the western side, and they might have to go for too many fights. On the other side, Mapex Esports and Skylight's Gaming coming from the northern front, they have a good position. IHC, they do have a very good position in this particular circle. So these three teams are the ones I am eyeing on. But right now, T2K, they are going up against the team Esports, sitting on the low ground, and the blue is also catching up. Both these teams, they have to prioritize the rotation at this point. Otherwise, well, they both will be at the mercy of the blue, and it won't go well in their favor.
But Sandesh has no idea about the position of the players of high voltage. All the 4 vehicles are ready, but 4MV Dog comes into the process of QB with an UMP 45. I don't think it's the best range to use that weapon. 4MV Dog is going to survive, but Sanhok has been brought down to 10 HP. Certain Esports fighting from the blue, but we have Elementrix also going up against the players of Seal. And looks like Solus has been taken down. Rock is going for the confirmation. Astra bleeding. And Orangey has also been taken down by Arrow over there. Arrow went a little too aggressive from the back lines. Incus is going to come in with the big weapon AUG and take him down. Sancher, he knows he can't do anything in this situation and have to come with the mature decision to leave the fallen teammates to lead to death. But Sancher having the upper ground, not going to come so very handy as Incus with AUG is going to bring him down as well. And see Esports well down to only single player, that is going to be Rogue. Well, Elementrix Esports is also going to be in quite some trouble. 2 men already lost. There's not much on their boards to go for. Only 2 defeat points to their favor. With that, they, even though make good out of this fight, won't be able to make good out of the overall condition that they have to find themselves in. There is definitely some healing available to the players, but that healing is not going to be enough to make themselves quite some good position inside the circle. 4MV on the other hand, trying to make the best of the situation, goes ahead, takes fights with multiple different teams at the same exact time. How does a team go ahead and do that? They have to be super dominant and super confident at this point. However, we aren't seeing some impressive performances coming in from the side of 4MV, at least as of today. So I'm not sure where this confidence is coming from, or if this one is even going to result in the best favor of 4MV. 4MV, they have to move from the southern side, and look at the congestion, the traffic that is present on the periphery of the circle. We have the players of high voltage. They can try and gatekeep 4MV at the same time, I8 and T2K as well. On the other side, Northern Front, Matrix and Skylers, they are just enjoying the safety net of the circles. Easy rotations coming in for these players. T2K also struggling along with the players of 4MV. The numbers of 4MV are down to 3. D Venom, good position to these particular players, but right now we have the players of NV Esports up close to Mr. Smokey. Look at the position of Mr. Smokey, not in a very good position, but he's going to bring down not just one, 2 players of NV Esports. NV Esports had no idea Mr. Smokey is hacking, and Liquid with that buggy is trying to go for the flank angle. Yes, Mr. Smokey has been taken down, but his teammate is there to help him out, and Liquid, well, what can he do? NB Esports, they were not expecting Mr. Smokey at all. Liquid is right in the crosshairs for Akaza, and well, there he goes with the shots. All right on point, resulting into a complete annihilation for him, but Leo will have backup coming in. Haitami already on his work. Exactly what's expected, and there he goes. The revival is not going to be possible at all. NB Esports now falling on the back foot, taking quite a lot of damage. Not looking like the team that can actually win this one. There he comes. 2 people, both on literally negligible HP. Getting back into the fight. The vehicle is going to provide some cover, but how long? How long? Oh no, he comes out of the cover and actually capitalizes, shuts down the other player, and now Leo versus NB goes down to a 1v1, resulting in complete elimination of Leo. This did not seem possible at all, but it happened, and we saw it. And this is what you call an impressive gameplay. But now NB Esports, yes, they have managed to turn the tables. They have to go for the rescue mission, the revival onto the fallen teammates. But now again, we have high voltage. Yes, they do have a compound. Look at the position of East. He's so very close to the players of T2K. Jane with the Scarrel. East with an M416. But play zone won't bring the happiness to the players of NB Esports. They are going down. But Red also goes down through East over there. And 4MV. Where is the backup? Where is the cavalry? Because East all by himself is going for the compound. East doesn't know that the players of high voltage is already having an occupancy over there. Now Jane might go for the rescue mission. Well, East being the lone man survival did fall out of cover and got shot down by high voltage. How high voltage performing way better than what was expected of them at the beginning of the match, and I guess we might just see this team stepping up to the occasion and actually going ahead for the chicken that they've been waiting for in a while. That performance might just go ahead and accelerate itself all the way like the Golden Mirado does on the map of Miramar.
In the same time, however, T2K losing members left and right with one and only one man surviving on all four. हाँ जी गाइस की हाल चाल। अरे यहाँ चेंज में आ जाएगा this सबको team फाड़ के देंगे और actually यूटिलिटी either do क्या some चल रहा है भाई मैच miraculous के अंदर, क्या चल clutches रहा and है? make themselves way out, or just fall short of every ability and just die to the time. The positioning for T2K is not looking the best. The only sole survivor is way far away from the rest of the team, won't be able to make his way back. However, the later it gets to find his position, the more chances they have at earning more position points for the team. IHC on the other hand, trying to look left and right everywhere, trying to spot the player. They do, and well, connections are not getting made just yet. That van is coming in. Getting out of the van, trying to get some cover, but there it is, a burst of vehicle happening. Not going to result in much damage still though, because a fallback coming in from the side of Sandesh is going to save him from the radius of the vehicle damage. Still looks like he has some fight left in him. It's not going to be the end. Not for Sandesh, not for T2K. Smoke cover being deployed is going to find some angles to try and take a few frag points. I, in this position, would have been so scared to even peek, but there it goes. There's the confidence that they're bringing to the table, and at the same time, Matrix Esports annihilating, eliminate to the core, making sure that there's no breathing room available for the team. Maptex Esports challenging the compound of the plus of I8, and I8 not looking good. Skylar's Gaming also doing a perfect third party as they take down PSA in this situation. And Valley with a grenade is looking for some opening, but Woof is all by himself. What can he do? He takes on few players, find few trades, but before getting the confirmation, Valley is going to eliminate him. Now I8 has been eliminated. Maptex Esports, they can go for the rescue mission, but 7 teams, 22 players remaining. IHC, they are being absolute demon with 6 elimination of their own. TRZ on the low ground. Can they fight with a plus of TRZ? But look at the position of Mad Cat. He's going for the flank angle, which Demo and Zoil are not expecting at all. But Mad Cat, with that spray, he's going to give away his position. guys, क्या चल रहा है? Way better. चलो भाई, all sorted. The plus of IHC. But now हमारा last match है TRZ, ना? they are at the mercy of the blue. They have to move in, they have to reposition, otherwise this circle is going to dish out a lot of damage. With that buggy up close to Zoel, Mancat give the distraction, but that is not going to be enough. Godless has been taken down, but Demo being the aggressive force in this one, trying to take down Degree as his teammates are falling down. Well, currently it seems like we might just see a lot of trouble just raining from the side of IHC onto the opponent team. There they go, trying to create as much possibility as possible for the side of IHC to actually go ahead and capitalize on this, but there it won't result in the way that they wanted. IHC gets shut down completely with 6 elimination points, heads back to the lobby on the 7th position. Not enough to actually go ahead and make a wave, but there they are. They gave their best, and I guess that counts somewhere in some books, but not on the leaderboard. 4M gonna make sure that they have the best of the opportunity. It was a tough fight. They did their best, and well, the solo the position keep on getting worse and worse. All these players trying to make the best of the situation, just trying to release all of their horses at the same time. Maptex Esports in a very good position right now, having shots that can be taken from the third party position onto DE Venom, while HV collects their own fair share of the cake. And Krita has been taken down. Maptex Esports showing on their doorsteps. DE Venom, they are not prepared for this fight. And Krita, there is no time to go for the revival. Domi, can he take down the plus of Maptex Esports? Can he do some damage? But no is the answer. Perfect crossfire coming. And yes, he takes on Valley, gets a confirmation as well, gets a second one as well. Can he get the third knock onto the plus of Maptex Esports? Maptex Esports, but no. Well, valiant efforts from the side of Domi, solo survivor. He was able to bring down the numbers of Maptex Esports. A very good fight, and all this commotion was heard by the plus of high voltage. Now they are chiming in, closing in distance towards the side of Maptex. And Maptex, well, they are not prepared. We are left with only 4 teams, 14 players remaining. Skylar's Gaming with a 2v2 split, having the complete control from the northern side, but they have to be a bit cautious from the players of TRZ coming from the western front. Well, the positioning here is definitely going to be a very, very tricky thing. TR7 has a great
great height advantage as long as the hill stays inside the circle. However, they're going to be easy to spot for the side of Skylights Gaming. Maptex Esports have a great compound to their favor. While talking about high voltage, as of now, they're just running savage, trying to find as many frags as possible before the circle starts closing in. Because once it all gets crowded, it's going to be very unsure where the bullet is coming from. The third parties will get having more and more probability of happening, and that will just result in a much tighter situation. So you would want to create as much man count advantage as you can for your team at this point. चलो भाई वी आर बैक चलो बन गई टीम भाई टीम भी लगा दी थोड़ा सा फक हो गया यार एक प्लेयर जो लेना था लास्ट मोमेंट पे वो ले नहीं पाया लिटिल बस वो चल गया तो समझ लो अपने लग गए चलो अब क्या कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है चलो आगे चल क्या रहा है मैच के ऊपर ध्यान देते थोड़ा क्या सिनेरियोस चल रहे हैं हमारे Steel shot also getting few shots in his direction. He can't go out in the open, but AJ is watching that flank angle. It's going to be a 1v1 fight. M416 in the hands of Steel shot. His helmet has taken a lot of damage. All he has is a vest to rely on and a perfect spray. Well, the sprays might very well be on point, but who shoots first is going to be the question, because both of these players definitely have quite a lot of artillery that can happen them. As of now, TRZ and Skylights Gaming taking it slow, taking it all the way from the top, one step at a time. All they need to do to survive is breathe right. The buggy has been picked off. They are going to be rotating quite a bit. Gonna make sure that they do not fall into the crosshairs of TRZ. The height advantage has been sacrificed. All the way back into the circle. And now the capitalization completely lies towards TRZ. On the climb up itself, if TRZ has their eyes at the right position, might just be able to end this one. The circle shifts again and the teams move back. TRZ, they don't have the circles. At the same time, they have grabbed the attention of the players of Skylights Gaming, and now Skylights are trying to pepper few bullets in their direction, but safely TRZ, they have moved inside the circle. But Skylights Gaming, one side, then other side, we have the players of high voltage. Things are not looking so very promising for the players of TRZ right now. No Fear has also taken hefty damage. He needs to patch himself up as soon as possible. The split of Skylights Gaming, I have questions for that, but maybe it can work in their favor because Skylights always loves to play in a split position. Well, we'll see how many heads they can split with the split position, because that's exactly where their crosshairs are going to be, knocking every single skull out of the lobby. 3v4, v4, v3. A difficult situation, a difficult time. Desperate measures might be taken from every team that survives. Going further is difficult. Skylights Gaming in a very risky situation, to be very honest. It's a very are collectively fueled and already acquired by 3 other teams. If the next circle doesn't favor Skylights Gaming, they might just walk into a minefield filled with players eager to pick them off. Anyone who's outside the circle, outside the compounds, might just become a much easier target to go for. Once the push comes to shove, Skylights will have to move. As of now, it seems like out of all the compounds, the one that survives inside the circle is going to be the one that TRZ has. The tricky situation here is high voltage and Maptex. They will have to leave that compound soon enough. And when they do, they might fight with each other. And when they do, they will get third-partied. The punishment is completely ready to be served from the side of Skylights Gaming. They are going to be absorbing the role of judge and jury when it comes to moving back into the circle for the side of Maptex and high voltage. The one with more numbers on the board will make it into the circle and into the fight.
The team that is going to reap the maximum benefit out of the situation is going to be the players of Skylights Gaming, as remaining three teams are going to go up against each other, and it is a battle of grenades and molotovs. But Baron, perfect grenade comes in, takes down Praveen over there. They know exactly where Jiggle is, but Jiggle takes down one player, and he also gets traded down. Malik at the mercy of the blue and goes down with that high voltage. Not looking good. They have been eliminated after a valiant effort. Mapex Esports, they have some breathing room. They can go for the rescue mission or to the fallen team. At TRZ having the numbers advantage. Skylar is being so very cautious and careful and silent in this situation. They're letting the remaining teams fight amongst each other. They have the position. This is their game to lose. But TRZ, well, they takes on Leo. Perfect grenade comes from Mamba. Baron also on a very sliver of HP. Kese out there in the open. The smokes are down to deny vision to the plus of TRZ. At the same time, Mapex Esports, how they are going to fight the spores of TRZ. Well, it's definitely going to be a very, very difficult situation. But once the fight initiates, now that we have only 3 teams left, we might see quite some shots coming in. Oh, he's not aware of the position of Degree, and then Degree will do the 3rd degree damage onto him. Walking into the molly, it's going to be a shutdown coming in for the side of Maptix. They are going to be taken off the charts, and now it's all DBZ and Skylights Gaming. Man count advantage, height advantage, everything is falling in favor of Skylight Gaming. They're going to be using a molly. They're going to be using all the throwables they have to try and make sure that the area is cleared out, while one of their teammates just goes ahead to take a head-on fight. Ooh, Steel Shot is going to get the first shot, but still the HP is not going to be the best on his GG. Nice one, nice one. Nice one, team. As nice one टीम SG, अगर मैं गलत नहीं हो तो, अगर मेरी नजरें गलत ना गई हो, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैच मिस हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा टीम बनाने में बिजी हो गया था. हाँ, यस, SG चिकन डिनर 7 एलिमिनेशन के साथ टोटल 17 पॉइंट, #6th रैंक के अंदर. एंड गाइस, नेक्स्ट मैच पे हम फुल अपना कंसंट्रेशन देंगे क्योंकि हमारा लास्ट मैच भी है. इस मैच पे मैं थोड़ा सा टीम बना रहा था D11 पे, एंड थोड़ा सा गला भी बैठ गया, पानी का है मेरा. आ जाओ गाइस लास्ट मैच के अंदर, गोइंग टू बी फन. ब्रो दिस इज बांग्लादेशी चिकन, प्लीज बांग्ला कास्टिंग. ओके भाई. हाँ, उसमें वो रॉबर्ट वाला कितना पतला है सूट, क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारी अलग ही टॉक चलिए, इन टॉक तुम्हारी अलग इन टॉक चलिए भाई. एंड गाइस, अगर आप चैनल के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट मैच पे फुल बूम बम कंसंट्रेशन के साथ फोकस करेंगे. आ जाइए, आ जाइए. हैव बीन एबल टू स्लीप और सिंग लिखा है. ब्रो आयोगी के डीसी ज्वाइन करके, अरे हाँ रे, अगर करना है तुमको कमेंट्री करना है क्या, बताओ. यू वांट कमेंट्री? इफ यस तो देख लो, आ जाओ कमेंट्री कर लो इस मैच में. किसी को भी मौका दे रहा हूँ. एनीवन कास्टर हियर हु वांट टू कास्ट दिस मैच, लास्ट मैच, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये मैच स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस मैच को कास्ट करना चाहोगे. मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को सुनेगा नहीं. अगर आप सिंगली सोलो ही ऐसे ही कास्ट करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बताओ. डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन कर लेना, लिंक दे दो. मॉडरेटर्स अगर एक्टिव हो हमारा, सो जो भी बंदा कास्ट करना चाहता है लास्ट मैच, फुल्ली अपॉर्चुनिटी, आ जाओ कास्ट कर लो. फुल बूम बम अपॉर्चुनिटी. एंड फिर मेरे को सुनेगा नहीं, मेरे को फिर दूसरे फोन पे सुनना पड़ेगा कुछ. आई वांट टू डू इट. करते हो कास्टिंग? पहले कभी कास्टिंग करिए. सो गाइस, एमवीपी. ओके ब्रो, निमा पाजी, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग निमा पाजी. मैं भूल गया टीम चेंज करने को. द विजन भाई सेम सीन हो गया. मैं ओ शामी भाई ने उड़ा दिया पृथ्वी शॉ. मैं सोच रहा था मैं शॉ को ना लूं. फक मैन, मैं सोच ही रहा था कि मैं शॉ को ना रखूं टीम, बट रिस्क था, मैंने रखा. जगह मैं सोच रहा था रूसो को लेने के लिए, एंड आई थिंक मुझे रूसो या डेविड मिलर को रख लेना चाहिए. बहुत बढ़िया. नाम यार ब्रो राहुल लिप्पी करके होगा यार.
ऐसे सर्च कहीं होता है जस्ट भाई पीएमएसएल करना है क्या स्ट्रीम? पीएमएसएल कर लेंगे, कोई दिक्कत पैसे गए कैसे यार आयुष भाई? आज मैंने जब पूरा क्या बोलूं, छोड़ो आज एक मेरा बंदा वो हो गया, जस्ट किडिंग। ओके, सर्च कैसे होता है इसमें? बंदे भी सर्च कर सकते हैं क्या ड्रीम 11 पे? ये तो पता नहीं था ऐसा भी होता है क्या। माय गॉड, आई हैव द ड्रीम कॉन बैलेंस। माय गॉड, मेरे यहाँ रिवॉर्ड पड़ा है ब्रो। We have the rewards, dream coin balance, and guys here we go after match number 3 and last match बचे अब सारी टीम्स के। एनबी स्पोर्ट्स के सारे मैच खत्म हो चुके हैं। डाडा गाइज एंड स्टॉलवर्ड के पास मौका है, अगर डाडा गाइज ज्यादा अच्छा खेल जाए एंड स्टॉलवर्ड डाउन खेल जाए तो डाडा गाइज ऊपर आ सकती है। देखो इस मैच में क्या होता है, टी2 के हैव अ चांस, then Mab have a chance, ASL have a chance, Skylights have a chance। for Miracle Vibes के सारे मैचेस खत्म। आज का दिन इतना डिसेंट नहीं गया है, काफी सारी टीम्स अभी बकल अप करेगी क्योंकि काफी सारी टीम्स के अभी 4 मैचेस पूरे नहीं हुए। मिशन मार्च तो आया है हमारे भाई, क्या करते हैं मार्च। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं जो है। या इट का वाइपर ब्लाइंड जोकर जैसा लगता है, ब्लाइंड जोकर आइट ऐसा है क्या? आयुष सिंह भाई ऐसा है क्या? ऐसा है गाइस, प्लस करो, जो मैं एक चीज बोल रहा हूँ उसको प्लस करना, ठीक है? छोड़ो यार, तुम क्या प्लस करो। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन आज कौन जीतेगा? एरेंगल है नो चांस फॉर एसटी। ये राइट वाला मुझे इनका है। ओ भाई, जोशुआ ने लिटल ने 4 लगातार डॉट दे दी भाई, विकेट आने के चांसेस, या फिर बाउंड्री या फिर विकेट। विकेट ना आया बस यार, क्योंकि यही प्लेयर मेरा इंटरचेंज करना था, मेरा यही रह गया बस, लिटल को आज कोई विकेट ना मिले भाई। बाजी कितने मैचेस है? और लास्ट मैच है मेरे भाई, लास्ट मैच बचा है, लास्ट मैच, द लास्ट मैच। मैंने वही बोला था गाइस, किसी को कास्टिंग करनी है इस मैच पे तो वो आ सकता है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, लॉग इन करना पड़ेगा और तो कुछ, -30 कर लो।
करे -30 किस लिए? ओ भाई एक और जोशुआ भाई बोल रहे भाई 5 डॉट ऑफ तो है भाई का। देखो भाई आपकी टीम का काम खराब हो रहा है, वो तो हो ही गया है ब्रो। भाई लगातार भाई ने 5 डॉट दे दी भाई। भाई मैं बीजीएमआई ईएसपी आना चाहता हूँ बट लो भाई लास्ट मैच आपकी स्क्रीन के Projected that we're gonna सामने। walk into the map with, गेम कभी खेलना and शुरू किया है पर डिवाइस में it शैरो just नहीं। seems like we might be seeing quite some, similar positioning for the teams, because again it's a very चलो भाई similar चौका मैंने playing आपको path, बोला था जब obviously going the बाउंड्री opposite way, आएगी but similar या playing फिर path, and विकेट the teams are उठेगा, going to have quite some एंड वैसा ही fun going हुआ to their लिटोला places. And as जोश है Shadow भाई। said, even in the Pakistan region I was seeing way too many southern circles, so if it happens to be another southern circle, we might just see a few teams actually trying to capitalize on the bridge holding this time. The last time it did not result in as much favor as it should have, but I'm expecting that to happen if the circle goes that way. However, the teams are already dropping way too quickly as of now. Makes me wonder if anyone is even going to glide to Georgia Pole. It's a great city, great loot, a very good position to actually coexist in. Vehicle positioning is also not far away, so you could actually go ahead and make sure that you have the best rotations coming in for you. I'm also keeping an eye out for a team that भाई goes to क्या Grim Mosque, हुआ because पूरी that's बात going to be बोल। one of the very शौर्य premium प्लीज spots भाई for a जो team to आपने actually बात go ahead बोली है and make यार sure मैं क्या that बोलूँ very इसके peer लिए यार। dropped teams become one of their first targets. And that's just a fight that comes by डिवाइस इज द surprise इशू ब्रो, sometimes, because डिवाइस इज द इशू। those two क्या locations, बोलूँ even भाई though मैं they इसके are आगे, very close बताओ by, are ऑडियंस में क्या separated by a रिप्लाई करूँ भाई distance, को, so बताओ। there's no disruption in your loot. But once your loot is done, you can actually go ahead and capitalize onto a fight. And there it goes, a northern circle. So no more military base for me, but an opportunity for you to see what you wanted, isn't it, Shadow? चलो भाई जोन आपकी स्क्रीन के सामने लास्ट Maybe मैच a है, chance चलो for भाई the फुल players of एनर्जी के साथ T2K to ऐसी अपनी showcase न्यू what they ड्रॉप के showcased in the very ऊपर first स्टाइलबर game, because कैमेश this की is their ऐसा circle. टाइम क्योंकि यासना They पे जा like रही थी, dropping in फ्लाइट towards पाथ the बहुत side of बढ़िया था Savani, and एंड this time एजिस से again एग्जीक्यूशन they will एसजी showcase का a देखने को very good मिलेगा। performance. देखते Leo क्या अपना Esports ये again going for a split drop नॉर्थन towards the साइड से side of एंट्रीज Gatka डालती है। region. काफी Eliminatrix, ज्यादा अगर हम well, बात this करें time जोन they की, have no target. वन ऑफ 4NE द is लाइक अगर हम not इस in the जोन की बात picture, करें, दिस so जोन that इज means वन they ऑफ are द going for the loot. लाइक Split ट्रिकीएस्ट loot जोन। from the side देखते of हैं कि Kori सेकंड and शिफ्ट Ferry हार्ड Pier. शिफ्ट कहाँ Then जाता we है इस have जोन का, IHC and जो Milta Power. सबसे No big ज्यादा change coming हमेशा in से मैंने terms of the बोला है drop न्यू मेटा के location setup. अंदर जो Esports again लाइक going towards the चीजें side of रहती है। Yasna, but सेकंड we जोन can डी have a ने अभी potential काफी अच्छी first लाइक blood situation एंट्रीज brewing पकड़ up रखी towards the है, side of बट मैं Rozak, जिगल पाजी where को we देख रहा have हूँ the गाड़ी players of लेके मोस्ट Deadive प्रोबेबली and अपने High टीममेट्स के Voltage पास ही जा रहे होंगे। in यस a very एग्जैक्टली split position. गाड़ी उठाई है उन्होंने ऊपर से स्क्वाड हाउस से, एंड वो ऊपर अपने Well, लाइक I अपने mean, टीममेट्स I'm के not पास जा even रहे going हैं to question split स्क्वाड हाउस के positions आसपास anymore, से। considering the मीनवाइल way the रोजोक की game बात went for करें तो Skylinks डैड है gaming गाइस, the काफी last time. सारी This is टीम्स too यहाँ पे early साथ to साथ actually आपको go देखने को ahead मिल for रही है। that. डैड But है yeah, गाइस, I'm आई not going to वोल्टेज, question साथ split में आपको positions anymore ever in my डी life. सॉरी I have डी learned देखने my को मिल रही lesson, and I'm just होगी। going to stick with that, तो because देखो आगे God क्या होता bless है the गाइस। players who actually came up with the idea of splitting and playing. It's actually working out. Specifically helps you divert the attention of the other team from multiple directions, and specifically when it's this early in the game, you can भाई अपना वाइस actually कैप्टन create भी है, an चलो भाई illusion of बहुत ज्यादा बढ़िया। being two और separate teams, चलो भाई and that एक just भाई प्लीज makes the नोवा other को पील team जितवा so दो। much अरे more अरे हम कहाँ से afraid. जितवाए They यार have to नोवा be को, so much नोवा more खुद ही alert, आज and का in टाटा that गुड बाय। diversion, you could actually go ahead and find yourself an opening that lets you in into that team very easily. However, गो ऑन। the teams that have reached all the way here, they definitely know exactly what's happening when and where, because once you start playing the game enough and once you start reading the teams enough, you do have an idea of which teams opt to drop in which locations. And unless and until someone randomly goes ahead and chooses to go for a completely different drop, which hardly happens in this lobby, you would actually know that this spot is generally capitalized only by a couple of teams, so it cannot be uh 4-4 on both sides. It is just a 2-2 or whatever the situation be. But yeah, that was quite a long explanation. Nobody needed it, but it was in my head and I blurted it out. So there it is. How do you feel, Bhavna? How's the day going? हाउ इज द Well, extra knowledge is जोश? always क्वेश्चन मार्क। helpful, and I'm always up for it.
So deliver any amount of knowledge you want, feel free for it. But right now, certain esports, they're also feeling very free and very calm and cool because they drop in देखिए भाई Yasna. एजी के No, जैसे nothing to worry about at all. You can get the अब best of the एसटी को resources. भी You सिखा can देना get ठीक है भाई everything. There is no need एसटी for को a भी सिखा secondary देंगे एसटी loot. अच्छा खेलेगी भाई टेंशन And ना even the circle, first circle is also favoring them, but they have to be a bit cautious of the players that might come in from the eastern side that are the एसटी players का of टीम Skylights भाई Gaming, because ठीक है Skylights, well, they are towards the side of Kameshki right now. I'm talking about other teams as well. DRS Anna. Very first game, DRS, they came on the second spot. There is a very high possibility and probability that DRS can also get a chicken dinner for themselves. Yes, they are not the aggressive force, but still, there is a very high chance. The rotation, the way the rotations come in from this particular team, always so very promising. Well, let's see how it works out for them as of now, because I am expecting a lot of gameplay changes coming into this week, because even though the drop locations may not change as much, because once you start getting used to a location, you just want to be there. It feels like home, just like Erangel feels like home compared to all the other maps, because टूर्नामेंट it's the टोटल one that you 473 start off with. including points and ST I feel like and still the actually fights just keep getting easier 27 and points easier if you're डिफरेंस है able to एसटी stay का at the same 27 पॉइंट्स place, डिफरेंट लगा because you देगी know the क्योंकि वो place मैच नहीं like the खेल back रही of है your hand. आपका अगर हम बात करें And गाइस yeah, अगर I आप mean, लोगों our को नहीं teams पता है might just capitalize on that. However, the टीम जो है rotations आपकी वो might मैच be a नहीं little खेल bit रही है different than what we 4 are एमबी है used to of 27 seeing, पॉइंट का because a डिफरेंस है lot of teams, एसटी टू 4 now एमबी that अगर they आज have के read दिन each को other, कलेक्ट might want करना to switch है up a little. 27 पॉइंट एसटी को लेने But yeah, पड़ेंगे in any जोन के case. अकॉर्डिंग अगर देख के ऊपर काफी ट्रिक Do you like the bike system of this game? I generally prefer bikes over cars. It's more व्हाट इज द risky, but बेस्ट it's फोर also लर्न बीजीएमआई more 4 agility, so helps me. Oh, I love it. Whenever I am the Nice. solo player remaining from my team, even भाई if I'm जितना not the solo मैं player, तो ये बोलूंगा always in the classic फर्स्ट ऑफ gameplay, I ऑल used to इट्स go for the लाइक bikes because of टीम the गेम speed that comes in. Even if any team is अगर आप having a बीजीएमआई की बात process करते हैं onto पबजी वाली you, स्पोर्ट्स की you बात can करते हैं टीम escape गेम to the है पहले safety, you आपको can settle back to the करना safety पड़ेगा so very देन easily. The जब आपको टीम speed मिल with जाएगी देन which it moves, especially in case पहले आप of the अपने आप bridge पे camps. वर्क I'm करो अपनी always a खुद fan की of फाइंड bike, आउट करने का and that ट्राई is करो something my बट आर यू teammates hate about कहाँ me पर आप because, चोक करते हो come एंड on, क्या आपकी की sometimes you need क्या आपकी backup. चीजें I'm स्किन there, कहाँ पे आप out चोक there, ट्राई when करो knocked उनको out by someone, ठीक करने का and they have to force a देयर आर लॉट ऑफ fight which थिंग्स they अगर आप don't गेम की want. बात So करते हो एक दिन not मुझे याद है always the जब ideal situation, कॉन्फिडेंस का इशू but आता still, I'm a bike fan. नॉलेज Not With in real हम life बात though. करें मैप with me, नॉलेज my teammates एरंगल have zero मिरामार problems with me आर यू going on bikes, because it's शुड नो literally like when they मैप start off the नॉलेज game, they आपको know it's a 3v4 every single time. मैप पे कहाँ से They know I'm not gonna survive long enough, so they're like, आप okay, यूज you know कर what? सकते हो Just grab yourself a bike, run मैप around the map. नॉलेज If you गेम find सेंस someone, let आईक्यू us ये know. That's the आप best you जितना can do गेम anyways. खेलोगे So उतना ज्यादा ही ये चीजें go आपकी away. पड़ेंगी And I'm left like a free bird, which टर्म्स I का यूज already करा है am. सोलो वर्सेस Just स्क्वाड not इज द able to बेस्ट fly. थिंग टू Been प्ले गाइस flapping my अगर आपको hands since कॉन्फिडेंस morning. बिल्ड करना है अगर आपको देखो Still, सोलो वर्सेस still on स्क्वाड डुओ ground वर्सेस because स्क्वाड of the जितना heavy ज्यादा weight I खेलोगे carry. टफ In लॉबी any के अंदर case, तो आप talking अपने about आप को heavy उतना weight, ज्यादा ग्राइंड कर there's a पाओगे lot अगर of आप heavy स्क्वाड भी खेल रहे हो weaponry that will ट्राई come करो in from the डिफरेंट side चीजें of high करने का voltage. Now फॉर that एन they have एग्जांपल started फाइट stepping एंगेज up, ऑफ I'm एंगल्स वगैरह expecting कैसे them to क्रिएट किए जाते actually हैं surpass हाँ their है ना own performance अगर in आप the अपनी last टीम map and साथ ही go खेल ahead for a much टीडीएस गेम more, प्ले क्या होता है higher ट्राई damage करो चीजें नई costing नई करने का देन game. गलतियां करोगे तभी What do you चीजें feel? हमको पता Will that लगेगी be a क्या possibility? है क्या नहीं है मैं कहाँ पे स्ट्रगल क्या नहीं करता Could be, but at the बेसिक same time, जस्ट Hana, as बेसिक we were फंडा talking about the vehicles, I have to tell you, in competitive जो मैंने आपको scenario, you बताया have to तो go भाई for the buggies or the कैप्टन साहब आगे vehicles or the कैप्टन cars, साहब Dacias, because you need the cover, especially if you have a Gatka circle or a southern circle of Yasnia. These vehicles come very handy if you need the cover. So ओके भाई players 2x like करो लो me, भाई 2x कर bike देते is a बाकी never गाइस go इफ यू आर go. न्यू टू द Is a स्ट्रीम always a लाइक एंड सब्सक्राइब टू never, even though in a competitive चैनल scenario. So Well, thankfully, we are the classic, आरदी we are भाई the को classic चौका डेविड gameplay वार्नर साहब ने people. I wouldn't be bothered by what goes on for best for the competitive gameplays, specifically when it comes to me, because I am literally the player with the rank of paper. Like PUBG literally came up with a different जोन rank for अ me so that I शिफ्ट could survive, आय हाय हाय मैंने आपको बोला था यार ये because I जोन बहुत wasn't the ट्रिकी जोन है caliber that बढ़िया even survives in the lowest category of ranks in PUBG. So they were like, you know what, for you specifically, we'll make paper ranks that you can go for, which are literally कि paper डैडा thin, है ना पहले like से my अगर survival आपको याद skills. हो मैंने आपको बोला था उन्होंने काफी Enough about me, अच्छा talking about the teams. The circle has सीन gone पकड़ के all रखा the हुआ है way एंट्री से बात towards करने के लिए Georgia Pole, क्या and करती है it's gonna वैनम की be बात a कर रहा हूँ huge rotation for the team I predicted. It's already esports all the way in कास्टर्स Nova की वॉल्यूम Repnoy कम is gonna have लो to भाई go कास्टर्स की वॉल्यूम कम crossing so many people all the
way into the circle. This is going to be very difficult. However, look at Skylights Gaming. Their position is so premium.
They can literally go towards shooting range and enter from there. There's literally zero passage obstacles for them. How optimal can a ठीक है situation get दाची for a भाई, team? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं, स्पैम मत करो भाई इतना. Yes, they are going for late rotation, but Stalwart Esports tend to go for late rotation. Ahana, time and time again. It's just the very first circle. The blue is not going to give you so much damage, but on the other side, Raw officials, they're taking a lot of damage. Yet Uta has been taken down. They were not anticipating I8 in this position. अरे यार I8 cheeky angle takes down not just 1, 2 players of Team I8, bringing their numbers also down. But he's the only man standing with the last first aid popping in. The Molotov coming in his direction. He survived that. He has to reposition. And Sky, well, what can he do in this situation? Kancha has to buy some time. He has to go for the rescue mission. But टॉप 3 कौन चल रहा है? there is no STE chance that they आपकी दूसरे can नंबर go पे for the डैड है revivals. गाइस. Kancha can't go out in the open. And Sky trying to lob a grenade that can be very deadly, but Sky will miss the perfect projectile. It's a 1v1 situation. Kancha is going for the rescue mission, and Sky decides to do the same. Well, the nade definitely did cause a little bit of trouble. Lost a player from the side of Raw officials. Kancha is still going to be in a position to actually take the fight, but there he goes, being shut down right through the window with the shots going crisp and sharp across the window. Through that tiny little slit. SSLN हुआ तो डिवाइसेस पता नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली स्पॉन्सर की बात है. स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो फिर क्या अपने डिवाइस पे खेलेंगे और क्या? स्पॉन्सर इज द की ब्रो, स्पॉन्सर इज द की. स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है तो लॉन्डो को फिर अपनी डिवाइस पे खेलना पड़ेगा ना. Right in about time. Like I had zero chances of actually going for the rescue mission, as you mentioned earlier. They had to finish up the fight quick enough to be able to create the wiggle room where they can actually go ahead and reset their players. And that's exactly what was done. The team delivered exactly what was expected of them. And I am just happy to see a team go ahead and give their best in starting this quickly. So Team Esports Desert has been taken down, and 2 players showing on the doorsteps of QB. QB ready with a grenade, but Molotov coming in from the side of I8C. QB has to reposition. He survived with Molotov. Now it's a 1v2 situation. SMG very potent in close range. On the other side, we have Godless. He has to patch himself as he's down to 2 HP. QB with 4 first aids, but there is no time as Godless comes in and takes QB down. He heard the sound of the first aid being popped. Perfect timing coming in, and Team Esports things not looking so good. There is no chance to save QB in the situation. On the other side, I8C is also not looking so very fantastic as Zoil has been eliminated. Godless has to heal up. And they are 1400 meters away from the circle, Ahana. What stage? Not looking good with 0 healings. Well, this is going on getting more and more difficult for the teams, and with the position that you just mentioned, we might just see one more team getting shut down out of the game without any frag points or any capitalization into the game. Skylights Gaming, on the other hand, having the time of their lives as expected from all the way towards shooting range. They are going to be making their presence felt inside the circle soon enough. Not much to worry about for them, but at the same time, high voltage definitely has high risk right in front of them. TRZ, okay. TRZ Degree did try to get back into the fight, but could not. Jiggle actually just went back in and made sure that the capitalization was possible for the side of high voltage. This was an unexpected move coming in, but Leo is going to be walking into the situation soon enough to get a chance at making the best of this mix. They do have long ways to go, but let's see how far they can carry themselves. A third party waiting to happen onto TMRZ. I'm confusing up the names. I'm so sorry. So sorry. That's okay. It happens when so much action is happening on the screen. It's so hard to catch up. And right now the players of TRZ, well, they have 2 players remaining. They have the control of the warehouse. The players of high voltage, they are susceptible to the grenades, and Probeen was taken out. Multiple barrage of grenades is coming in, but TRZ don't have the numbers. They don't have the numbers. We have Leo Esports also in the close proximity, so there is a chance of a third patterning, whereas we have the players of Maptex Esports, Baron taking down Domi, getting the confirmation as well. Mr. Smokey
takes on Assassin. This can be an opening for the players of TRZ because now Leo Esports, they are also doing a third party. And look at the position of Mr. Smokey out there top on the big tower, grabbing so much information that is helping his teammates to rush towards the side of high voltage. But Malik with a potent grenade takes down Liquid over there, gets an instant confirmation. Well, that's quite a good performance coming in from the side of high voltage. They have already taken the upper hand into the fight with a perfect grenade coming in that actually shut down a player from the side of Leo, forcing them to fall back. Morris and Smokes coming in constantly to try and cover the Leo players to go back and recombine with Smokey so that they can actually come in with a better man count. Right now, the man count disadvantage is pushing them further and further behind. And look at that, Siddim is also trying to come in and have a piece of the party. This cake is not going to be distributed between 3 teams alone. The 4th one has already arrived to the occasion. And at the same time, this has created an opening for TRZ to actually make their way out of the भाई साहब क्या जोन बना है भाई Oh ho, what a zone! Oh भाई क्या crazy zone बना है भाई, crazy zone. The third party, the 4th party literally combined into creating an opening for the one that was about सारी to entries lose blocked है मेरे altogether. भाई, entries are Oh blocked. goodness, this is getting better and better. 4 teams going up against each other and it is looking so very chaotic. Look at the players of TRS. बहुत Looks like they are also crazy joining the zone है fray, भाई, but we have बहुत Starlet ज़्यादा Esports actually crazy going up zones against the है. players of Deadeye. मतलब ऐसे जोन And आपने with a बहुत vehicle कम देखे होंगे explosion, guys. the numbers are not Meanwhile, failing दामी in भाई को high डैमेज, Pmwi. चलो आ जाओ भाई. Well, don't थोड़ी peek सी हम कर again लेते हैं, because he just survived the shots that were थोड़ी coming साउंड कम from the करते हैं side guys. of Let's the go, players of थोड़ी high सी हम वो कर voltage. At लेते the हैं. same time, T2K also joining the fray from the northern side. But Casting आ जाओ. Sitim and TRZ. Let's go boys, full TRZ energy being के साथ in a एक fire remote situation, spam कर दो. fish in a barrel. If you want, And the moment आ the जाओ players of energy, Sitim थोड़ी सी Esports energy spots भरते the हैं players of TRZ, मैच well, के अंदर. they are down. They are down. They are pretty much handicapped अगर मैं out सच there में in बात the करूं, water. मैंने बहुत कम ऐसे Trying for the zones देखे survival हुए game, हैं but now and Leo one Esports and high of the voltage jiggled right in interesting front of zone High आपको Army. भी देखने को मिल रहा Playing the है. patient जोन game एंडिंग play, कहीं भी हो but सकते हैं. Jiggle मीनवाइल has दामी gone भाई low. ने यहाँ It's पर punished जिगल the पाजी को city नॉक and एंड High फिनिश Army करा है. gets हाई a वोल्टेज confirmation के as लिए well, and the बिल्कुल भी numbers of high सही voltage चीज are नहीं dwindling है down क्योंकि now. वन That ऑफ sure द is happening, फाइनेस्ट but it प्लेयर seems फ्रॉम like हिज High प्लेयर Dami is इज going to be in a very tricky एलिमिनेटेड. दामी situation right भाई now. के Look at ऊपर the पूरी position from the नजरें. side of यहाँ पे high यूटी voltage. का Both यूज the किया जा रहा है, entrances नेट्स points पुल इन किए that जा रहे are हैं. दामी available भाई in this अगर बात compound करें can be फायर देने के capitalized by बाद them. They यहाँ पे are going अपनी to have लोकेशन their को eyes एक्सपोज set कर on चुके हैं. both पीछे the मिस्टर entry स्मोकी भाई points of this बुक्स compound. किए And जा रहे once हैं. High एचपी Dami का टारगेट decides to रहेगा move कि out of किस here, तरीके there's से going to इस be an वेयर हाउस easy के frag ऊपर coming पुश in किया from जाए. the बट side of high voltage. लिमिटेड अपने कवर्स Assassin, को रह के he लाइक has अभी अगर आप already देखते हो left ओवरऑल the सिनारियो पे position दे of हैव an अ entry जोन. point. This is not अगर हम looking बात like करें the पीछे best से strat for डीआरएस the की side of एंट्रीज high आपको देखने voltage को मिल रही unless and होगी. until they डीआरएस decide आपको to दिख रही होगी actually टीम. एंड combine, ये सिनारियो देख के मेरे को go ahead पीएमजीसी and का एक actually मैच याद take आ जाता है. a यहाँ पे डीआरएस rushdown ने fight बहुत ही with लेट Leo head on रोटेशंस head. मारी थी एंड TRZ जिसके बाद वो still पीछे से surviving घूम with के आए थे. उन्होंने some आपका जो ability to सेकेंडरी make sure ब्रिज that है they have उस a पे पहले standing in the होल्ड game. करा था. High देन voltage इसी using कंपाउंड पे nades इसी and वेयर हाउसेस abilities को to पकड़ा go था. ahead तो वही and चीज make मुझे sure that they are रिपीट able होते to हुए दिखाई दे empty रही थी. out the चलो कोई नहीं, कोई compound दिक्कत and की बात create नहीं. some मीनवाइल fear एचवी of their presence एचवी while नोज they की आगे एक actually टीम keep है जिसका looking for नाम a है way आपका out of the fight. टीम लियो. There are दे way too एग्जैक्टली many नो द teams in this सिचुएशन. दे area, एग्जैक्टली नो and कि this टीम whole कहाँ कहाँ पर है. number दे is हैव द going to परफेक्ट keep on कवर ऑफ surmounting कंटेनर्स. with आगे the देखते हैं किस amount तरीके of से क्या noise सीन that is होता है. being created near these containers. Can these containers contain the fight that जोन is की बात करें about गाइस, to happen? This नेक्स्ट is way जोन too टीम की many फाइट्स teams, एंगेजमेंट Shadow. करने वाला है. प्रवीण भाई ने Well, ऑलरेडी certainly स्मोक they कर दिए are. हैं There अपनी are way एंट्रीज too के लिए. many teams, मीनवाइल and from एसटी the back lanes, एक्शन TRS is एंड also डेड chiming in, but we गाइस. have DE going up against the स्लेयर players of Starlet सर Esports. बहुत Starlet बहुत advantage, बड़ी but जीजी. valiant effort from the side of Slayer Sir, bring down the members of Starlet Esports, न्यूज takes एट on 2 हील plus करके care. पुश करेगा. Slayer Sir going for the revival, going for the rescue mission, but before that, नहीं he's नहीं going to get the नहीं नहीं. confirmation onto गैंगस्टर the भाई fallen नॉक्ड. teammates of Starlet Esports. And Zed, what can he do in this situation? A grenade in his hand. बढ़िया नो, What is बढ़िया happening? नेट, They बढ़िया have नेट, to बढ़िया नेट. sell, काम but he काम takes गेम on प्ले. Slayer मैनूज एट Sir काम over गेम there, प्ले. and Deadeye guys, they have been eliminated at 15 spot, but the problems are not over. Idiots, एसजी का पुश एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे न्यूज़ेट को होगी दिक्कत. लो 1 एचपी. मॉली करी है, मॉली लगेगी. नॉक, न्यूज़ेट नॉक एंड फिनिश्ड. एंड ट्रेड पे यहाँ पे आई गेस टॉप ने ही यहाँ पे इडियस उठाया. यस, टॉप ने ही यहाँ पे इडियस उठाया एंड बग्गी पकड़ी एंड started catching up. He's on going to him. Now the Super in. has taken northern ship. All the teams in the Challange city, they have to go for the rotation, and
the bridge area, the riverbank area is going to be full of bloodbath. Well, that's definitely going to turn. तो भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। Meanwhile HP, oh 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 oh,
be having quite some damage that is going to be taken and delivered at the same time across. Now high voltage. They have already used a lot of resources. Malik all by himself. Malik Assassin is still bleeding. Malik close frontal battle with Mr. Smokey, and that weapon is so potent in the close range. Takes on Mr. Smokey over there. नाइस वन मलिक भाई, नाइस वन। लोन एचपी है, हील करना पड़ेगा बहुत जल्दी एंड जल्दी से आगे मूव इन करना और आगे का प्लान भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जोन बहुत ही जल्दी से यहाँ पे क्लोज इन होना स्टार्ट कर चुका है। एंड एग्जैक्टली 1 मिनट है अभी टीम के पास, अभी मौका है। 1 मिनट 40 सेकंड है टीम्स के पास। लास्ट बंदे बचे हुए अपने हाई वोल्टेज के। अगर आप देखते हो व्हाट अ लॉबी इट इज। अगर आप कंपटीशन की बात करते हो गाइस, 5th सर्कल इज अबाउट टू क्लोज। मल्टीपल टीम्स यहाँ पर मूव इन करना स्टार्ट कर चुकी है। अब काफी सारी टीम्स एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। मीनवाइल अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 11 टीमें जो आपकी अभी भी लॉबी के अंदर जिंदा है, जो कि कंपटीशन का लेवल आपको बता रहा है कि क्या यहाँ पर हो चुका है। मीनवाइल गॉडलेस नॉक्ड गैंटे बाय द नेट। घंटे का फिनिश लेंगे एंड यहाँ पे डीबीएस बाय एलेक्स एंड यहाँ पे डीआरएस हुई है एलिमिनेट बाय टीम आईएचसी। यहाँ पर हो चुके 4 एलिमिनेशन आईएचसी के। किल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मैं भी वही देखना चाह रहा हूँ। किल मैसेज क्यों नहीं आ रहा, मैं भी बहुत लेट किल मैसेजेस आ रहे हैं। मीनवाइल एनिमेट्रिक्स एंड एसजी आपकी स्क्रीन के सामने। एजिस में ये फाइट्स है। एस्ट्रा को माफिया निंजा ने गिराया है, पीछे से एडियस है इनकस का। निमा भाई ऑल्सो नॉक्ड है। नो फियर स्पॉट हुआ तो दिक्कत रहेंगी। माफिया निंजा भाई निमा का फिनिश लेने का ट्राई कर रहे हैं। फ्रैग भाई मीनवाइल नो फियर नॉक्ड। गलत सीन, आई थिंक नॉट अ गुड थिंग फॉर टीम एसजी। माफिया निंजा ऑलरेडी स्पॉटेड है, स्मोक वहां पर हुआ है ऑलरेडी। पीछे मुझे देखने को मिल रहे हैं संदेश पाजी भी। काफी नेड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्पैम होते हुए। इनकस भाई बहुत लो ऑन एचपी यहाँ पर बचे हुए हैं। हाय बड़ी क्या सीन है अभी आईएचसी का? बस आपके नाम लेने की देरी थी ब्रो, बस अभी एलिमिनेट हो जाएगी थोड़े टाइम के ऊपर। मजाक कर रहा हूँ। बाय द वे दे हैव अ जोन, दे हैव अ कंपाउंड, मोस्ट प्रोबेबली रहेगा नेक्स्ट जोन के अंदर भी। जोन आपका जॉर्ज ओपल पे ही यहाँ पे एंड करा है, बट इंटरेस्टिंग जोन था ये बहुत ज्यादा। बात करें आपका यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है TRZ SITM एंट्रीज मारने के लिए ब्रिज की तरफ को जा रही है। मलिक भाई आई डोंट नो उनका क्या आगे का प्लान होगा। रिकपाजी टॉप स्टिल वॉच टावर उन्होंने पकड़ा हुआ है। ठीक है भाई, सियोक पाजी आपकी स्क्रीन के सामने। SITM के प्लेयर्स यहाँ पर आना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे TRZ का जो एक प्लेयर था उसको यहाँ पर करा है फिनिश। सॉरी वो TRZ का प्लेयर वो इस पे नहीं था, वो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो मिस्टेक हो गया गाइस हमारा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमने चश्मा नहीं पहना हुआ है। छोटा सा जोन देख के टॉप पे क्या होल्डिंग की है। टॉप भाई फायर एक्सचेंज करे T2K के प्लेयर्स को। T2K के प्लेयर्स को एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे कोई है जो इनको बीटी कर सकता है, क्योंकि टॉप भाई ने यहाँ पे फायर एक्सचेंज करे। टीम T2K के हाई वोल्टेज के मलिक भाई पीछे से जोन में एंट्री डालने की ट्राई। एलिमेंट्रिक्स unable to connect any shots as of now, and well falling out of the fight as quickly as he invested. This is a quick termination, but the rest of the players from the side of T2K are going to make sure that they get the best of the situation, while Stalwart Esports comes in for a third party and secures some for themselves, unknowingly actually making things easier for T2K. तो लोग DRS को देखने आ has गए a grenade right in his hand, and he has revealed his position. A shot comes in, does not connect, but there he is with a shotgun right on point. अरे Down the player from the side of T2K, and with that knock capitalizes the man count. But look good at that, thing, this good thing for top. 1v2 actually still survives. Whew. The players of T2K, they are not gonna be forgiving. There is no mercy coming in from the side of T2K for Elementrix. The position keeps getting भाई कितनी टीम्स PMW आ जाएगी ब्रो? विनर टीम तो जाने ही वाली है, बाकी स्टिल अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हर एक रीजन के PMPL के विनर्स को PMWI पे खेलने का चांस मिल सकता है। बट अगर आपको याद हो लास्ट टाइम शोडाउन टूर्नामेंट भी था, जहाँ पे डिफरेंट टीम्स आपको देखने को मिल रही थी, तो क्या पता इस बार भी शोडाउन टूर्नामेंट है, उसके क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। मीनवाइल T2K ने यहाँ पे एलिमिनेट करा है एलिमेंट्रिक्स को। एंड SITM मलिक पाजी के बीच में बसड़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे SITM
टीम के प्लेयर फायर एक्सचेंज कर रहे हैं मलिक पाजी को। frags to themselves is gonna be a solo player टॉप surviving. भाई Tobbs स्टिल is gonna स्टिल have to ही हैव top द this जोन, up स्टिल for his स्टिल team स्टिल to make जोन sure है। that he has ही इज more and more ट्राइंग frags coming in for कि कुछ himself. एंट्रीज आए। Right now, T2K in his ठीक है भाई, crosshairs, नेट not गया है, best नेट to गया है, fight with that नेट गया है। position when you're the solo ओके player. ओके ओके, डुबू जो है Very पानी ready में to अपना go for अपना a फिनिश charge in बोल सकते whenever हैं, आपने possible. नॉक पानी पे ही दे दिया। IHC on the other बहुत hand बढ़िया। is also gonna be having a clear ऑल्सो shot गाइज, अगर X आपके against अगर आप Tobbs. स्ट्रीम पे नए हो तो मेक श्योर टू द Tobbs लाइक trying एंड to सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल However, अगर आप there स्ट्रीम is के अंदर no नए हो। rush कैसे as of now. टॉक्ड जेन बाय द Let's मिनी, see. जहाँ पे जेन भाई को रिवाइव देने का फुल प्रोसीजर रहेगा। टॉप की एक्शन ऑलरेडी नोन है क्योंकि उसने फायर पहले एक्सचेंज कर And दिया था। Mapex T2K नो Esports, बैटर they do की have यहाँ the पर numbers टॉप है। advantage, ओए they होए do होए have होए the होए circle, होए, and so do the जोन players of IHC, but they don't have the जोन numbers हल्का in their सा favor. But this particular वॉच। Tobbs, is there any stopping to him? हा Because हा he's not stopping at any cost. The solo domination that is coming from this particular जोन के individual, अंदर जाना पड़ेगा। already looking so very मैम strong. ने यहाँ पे 8 पूरा स्पॉट elimination करके points रखा है Mapex T2K को। Esports. देखते हैं T2K Well, का the क्या smokes are मूव grabbing the attention of Mapex यहाँ Esports पर and पॉइंट T2K. पे But they रहेगा। have to move डुबू inside the डूब circle. गया, It's यस not भाई going to be डुबू an डूब easy गया। journey to get forward. The smoke wall is there, but can it help the players of T2K? That's the main question. On the other side, Sitim are being so very patient. ठीक है भाई। And the vehicles are ready. So are the players of Mapex Esports and they're Okay. entering Krita, but T2K, well, they have T2K, made it to the nice safety with entries, Jane bold move. Well, right now it seems like there's quite a few Map bloods spotted D dropping Krita. down onto the star floor. And there it is. Mapex Esports is gonna have the opportunity किल फीड to go काफी ahead काफी and डिले actually चल रही है, काफी revive चीजें the पता one नहीं लग fallen पा रही comrade ऑन from their पॉइंट, बट side. कोई दिक्कत की बात नहीं। They are SITM पीछे still से अगर आपको standing पता होगा 4-man एंट्रीज strong. मारने No का other ट्राई करा था। team फराद has all भाई 4 यहाँ पर players नेट on the करा है board. एंड ऑन Three पॉइंट, Venom ऑन trying to पॉइंट टीम यहाँ से उठ के गई है। make sure that the man count gets ये नेट भी equalized बहुत प्यारा eventually. नेट हो सकता है Trying to एंड make ये sure that हुआ his है। team ओ when it comes to the हो man count. अच्छे से कुक होता तो However, talking शायद about कुछ Stalwart यहाँ पर, Esports, they do have शायद enough कुछ यहाँ पर utility to कुछ यहाँ actually पे go एंट्रीज मिल ahead सकती। with. Mapex चलो कोई Esports, दिक्कत की however, बात नहीं है। working in a 2-2 split makes me worry about them a little because one of their split, the T2K की one that एंट्रीज consists of बहुत Kessie ज्यादा and Wally, प्यारी, can be बहुत ज्यादा। squeezed in from 2 different places instantly. And once the gun T2K might Desert just want to capitalize on that Duke को as नॉक well. दिया, Currently, it Godless seems like one of our teams is still रिले को नॉक दिया, outside the दैट ऑफ circle एंगल and गाय। not going to survive for long अलग अलग either. Right टीम्स now, अलग अलग Sanhok टीम्स को Esports बीटी देती हुई cannot गाइस। make it मैप back की टीम in. एडवांटेज उठाने का And फायदा there it कर रही, is, the दे हैव द shutdown coming in पोजीशन, from the side तो of फिनिशेस Mapex उठाने हैं। Esports. The एसआई top टीम की टीम 5 यहाँ पे 6 teams एलिमिनेशन remaining. के साथ A एलिमिनेट 2-2 हुई है। split coming अभी in टीम बची हुई from गाइस मैप Mapex T2K Esports. IHC A वेनम 1-1 split NSTE, coming in क्या from बात the है। side अगर हम of बात करें मैप के 8 फिनिशेस है, T2K के 4, Venom IHC के DE 4, and वेनम well, के 1, it NST just का seems 8 like एलिमिनेशन जोन another बहुत circle shift ज्यादा is gonna क्रेजी start. जोन बना था 8 हमारा। seconds to go. The squeeze is gonna be pressurizing. अगर This हम बात is करें पूरे not the PL best का वन ऑफ द position क्रेजियस्ट for the जोन के teams. बारे में, तो MAB ये has गलत definitely नहीं gone होगा ahead and बोलना tried कि to वन ऑफ द recollect all of their क्रेजियस्ट जोन। players, squeeze जिस into one तरीके से single टीम्स की location, while एंट्रीज हुई है, जिस IHC तरीके still से working जोन on की the split करवटें with थी, only शिफ्ट one थी, man on कंटेनर्स में each. टीम फंसी जो वहीं पे फंस के रहेगी। Whew, जिन टीम ने this चूज is करा कि getting वो जाएंगे जॉर्जिया पुल सिटी की rustier साइड and को, उन टीम्स rustier. को बेनिफिट अर्ली स्टेज पे। यहाँ पे DRS ने भी काफी अच्छी Leo एंट्रीज with डाली a थी, बट grenade IHC trying का to वो find some डिफेंड opening काफी onto the बढ़िया players हो of गया D वहाँ पे। Venom. D Venom एंड in a DE single building. DE Two वेनम players DE not looking रिले so very भाई promising. Rayleigh स्पॉटेड, out there in the opening. This is रिले भाई रिले भाई। you could have taken down Rayleigh over there, but he's going to be a bit late in pulling the trigger. But Baron with a grenade is ready to bring him down, and this grenade is going to be so deadly. रिले भाई Right क्या on कर his रहे थे face, रिले and Rayleigh भाई, goes down. रिले भाई, And now फराद भाई। Denim VE, Farad is the only थोड़ी man देर standing. पहले So how long इन्हीं can he stand टीम्स as ने Baron ही goes तो for a यहाँ पे पीटी confirmation? करी A थी। just मैप की 6 लोकेशन single उनको man ऑलरेडी से army. पता है। But Mapex Esports 9 defeat points, still the unstoppable force in this particular one. Leo knows exactly where Farad is. जेन भाई but Jane ने is going यहाँ to पर bring down एंड the करा demise है। of टोटल Tobbs 8 from the side of एलिमिनेशंस Stalwart के साथ Esports टीम हुई after a एलिमिनेट। very dominating performance. Stalwart Esports wins by at 5th spot with total of 8 eliminations. Now we have Mapex Esports, IHC being so very silent. At the same time, T2K. एंटी टॉप यस मेरे भाई, एंड गाइस 800 लोग देख रहे हैं। इफ यू आर न्यू टू द three स्ट्रीम players मेक श्योर टू लाइक who द have a वीडियो good एंड position, सब्सक्राइब टू द but चैनल the chances of Mapex getting this one are so very गाइस। high.
Well, right now 3 teams survive. We have 9 players on board. It's a 4v3v2. The man count advantage goes with Maptix, obviously. IHC is still working. On a very silent note, T2K trying to control more and more area of the map. T2K has 3 different compounds, 3 different places to peek from.
they are gonna be the biggest problem for IHC चिकन देखो IHC. भाई क्या होता है, इट्स अ मैप वर्सेस Matrix still not paying much heed to IHC, and well, with these smokes, they are gonna be able to create themselves a little bit of cover to walk ओ भाई through. आपकी But स्क्रीन is के that सामने gonna be enough मूवमेंट for both the players to मिड में actually go ahead T2K and make एक themselves साइड way IHC, इट्स अ inside the center of the 4v3v2 zone? फाइट There मैप aren't gonna be वर्सेस any more T2K वर्सेस circles, IHC. so IHC it's के a प्लेयर्स ने यहाँ पे squeeze स्मोक that just वॉल pushes बनाना everyone स्टार्ट in. कर दिया है. ये जो जोन है आपका, ये But कोई जोन still, नहीं it's रहेगा. not just अब one team, two जोन धीरे teams, धीरे खुद 5 क्लोज इन plus होना looking in the स्टार्ट होगा. direction of जो IHC, टीम and these सेंट्रलाइज smokes are रहेगी not उनको going कहीं to ना be कहीं enough बेनिफिट यहाँ to पे रहने hit वाला their है. case. The grenades are coming in. The teams are expecting the players of Team IHC to come out in the open, and Alex is already on a little bit of low HP. Seog trying to find some opening, and IHC, they're in such a difficult situation right now. From the rooftop angle, Leo is keeping a close eye onto the players of IHC. Multiple barrage of grenades is coming in, not letting IHC breathe for a moment, and then Alex goes down and gets the confirmation as well. Godless is the only man standing, and Leo is not stopping. He still has 5 more grenades. Ahana, how many resources do these guys have? And Godless also goes down. UMP coming in action from the side of Leo, and now Matrix Esports and T2K are the only two teams standing, and but Seog is going to get some opening as he takes down Leo over there from the side of Matrix Esports. Well, Matrix Esports is definitely trying to walk back into the compound and try and squeeze T2K into the compound. But there it is. Oh my god, that lack of awareness is definitely going to be punishing. But this mercy is not going to result into anything. Right now, the jiggle is coming in from the side of Volley. Shuts down T2K. There's a couple of knocks already on board. It's literally just one man from the side of T2K that can actually make a difference. But is it going to be enough? There's 3 coming in. Charging it onto ओ him. And एंटी there with एंटी the एंटी shotgun. एंटी That's एंटी टीम the डीआर final. एंटी टीम T2K बहुत बढ़िया. तो गाइस अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो सबसे पहले ओपी लिख दिया टीम मैप को, ओपी लिख दिया टीम T2K को, IHC को. बहुत बढ़िया गेम प्ले हमको देखने को मिला इन टीम की तरफ से. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस टीम आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. बहुत ज्यादा मजा आ गया. अगर आपने नोटिस करा हो सिनारियोस को देखे, चुम्मा भाई बहुत प्यारा. ओ भाई बहुत प्यारा, भाई बहुत प्यारा, भाई बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. जी के स्वागत नहीं करोगे हमारा? यस मेरे भाई. एंड ऑल्सो चैनल के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब. लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. भाई कोई आईएससी चिकन बोल रहा था, उनको रोस्ट हो गया, चिकन नहीं हुआ. अरे कोई नहीं भाई, मैन एडवांटेज पोजीशंस. देखो पीछे से जोन क्लोज इन होने वाला था, जो एजिस पे थे उन्होंने स्मोक करे आगे, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी चीज दिक्कत की. चिल 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 बाबा चिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है. शाउट आउट दे दो राइजन भाई, गेमिंग भाई, बिग शाउट आउट टू यू मेरे भाई. बाय द वे गाइस 327 लोग देख रहे हो. स्ट्रीम के अंदर नए हो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब. एमवीपी आपकी स्क्रीन के सामने. ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे जो भी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी. मैप टैग दिस वीक #2 आ गई, क्या बात है. अभी डे 1 ही हुआ है, बट डे 1 डे 2 डे 3 भी देखने दो. बाकी गाइस एलिमिनेशन लीडर बोर्ड की बात करें, कैसे बैरन टॉप्स डेजर्ट एंड गॉडलेस जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं.
अगे भाई जा तो इंस्टा दार रही है, मतलब अगे भाई जा तो इंस्टा दे रही है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो भाई? थोड़ा खुल के बोलिए भाई, थोड़ा खुल के बोलिए मेरे भाई, खुल के बोलिए प्लीज, थोड़ा सा खुल के बोलिए भाई, थोड़ा सा खुल के बोलिए। विशाल रया माझी भाई, हेलो विशाल रया माझी भाई, की हाल चाल, सत श्री अकाल। और किसी को कुछ पूछना है? मीनवाइल सारी चीजें आपकी गाइस स्क्रीन के सामने ही आ रही है। भाई बीजेएमआई कब आएगा? बीजेएमआई कब आएगा ब्रो, मेरे को नहीं पता इस बारे में भाई। आई डोंट हैव एनी कनेक्शंस विद द ऑफिशियल्स वन ब्रो, के बारे में वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 23 पॉइंट मैप टेक्स निकाले, 13 पॉइंट T2 के ने, देन स्टॉलवर्ड, देन आईएससी, देन आईएसआईटीएम जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। अरे कास्ट ब्रो, वो आर्यन मेरे भाई, वो कास्टर्स क्या प्लेटफॉर्म किया जाता है, सबके साथ किया जाता है भाई, ये नहीं समझे? एसटी का पोजीशन क्या है? एसटी का पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली #1 ही है आज के दिन पे। एसटी इज इन #1 श्योर, फॉर श्योर मेरे भाई, एसटी #1। एसटी का पोजीशन #1 ही होगा भाई, बाकी देख लेते हैं अभी। जितना मुझे लग रहा है #1 ही एसटी ने एंड करा है। #2 पे मैप आ गई होगी इस परफॉर्मेंस के बाद। जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैप ने निकाली है वैसी परफॉर्मेंस एसटी निकालती तो एसटी अभी ओवरऑल के ऊपर भी #1 पे आ जाती। मीनवाइल एसटी ने काफी गैप शायद कम कर दिया है अभी भी, कल के दिन पे हो सकता है एसटी आपको ओवरऑल के अंदर भी #1 पे देखने को दे। इन केस इसमें एक प्रोबेबिलिटी आती है कि 4MB को थोड़ा डाउन खेलना पड़ेगा, बट 4MB देखा होगा अगर आपने वीक 2 के अंदर भी, डे 1 उनका डाउन था, देन डे 2 3 4 5 ऐसे वो ऊपर 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 बढ़ती गई है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट एनी टीम गाइस, किसी टीम को जज मत करना इस स्टेज के अंदर, कुछ भी पॉसिबिलिटीज आगे हो सकती है। डोंट जज एनी टीम बाय एनी नंबर्स गाइस। हियर वी गो, आपकी स्क्रीन के सामने ओवरऑल रैंकिंग एज यूजुअल। फर्स्ट डे की अगर हम बात करें, जैसा हमने आपको बोला 61 पॉइंट के साथ स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स, देन मैप टैक्सी स्पोर्ट्स दिखने वाली है, एंड T2 के स्पोर्ट्स थर्ड रैंक के अंदर है। दीज आर द टॉप 3 टीम्स फॉर डे 1। एंड इसके साथ साथ गाइस किसी भी टीम को अभी अर्ली जज मत करना, अभी आपकी कंसिस्टेंसी की काफी टीम्स ऐसी होगी जो भी कमबैक भी करेगी। इनमें से काफी टीम ऐसी हो सकती है जो नीचे भी आए, काफी टीम जो मिड टेबल चार्ट या बॉटम से भी उठ के आने का ट्राई करेगी, ट्राई हार्ड करेगी, क्योंकि आपका लास्ट वीक है। हर एक टीम को रहेगा कि हमको एटलीस्ट यहाँ पे टॉप 16 के अंदर आना है, क्योंकि टॉप 16 के अंदर आप रहोगे बोनस पॉइंट्स इंक्लूड करके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रैंक लेके ही आपको अच्छे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, वही टीम आगे क्वालिफाई करेगी फॉर द ग्रैंड फाइनल्स। तो गाइस बाकी आपके व्यूज क्या है रैंकिंग के, देखिए एक बार नीचे कमेंट करके बताना। 4th रैंक पे डाटा है गाइस आज के दिन पे, काफी अच्छा गेम प्ले, स्काईलाइज गेमिंग, अब्रप्ट स्लेयर, सीली स्पोर्ट्स, आईएससी स्पोर्ट्स, एंड 10th रैंक पे दिखने वाली है आपको I8 क्रू की टीम। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंसेस की, तो 2nd to 4th रैंक की डिफरेंस की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा कम डिफरेंस है। स्टॉलवर्ड से मैप का तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, बट 6 पॉइंट का डिफरेंस है। #2 to 4 अगर आप देखते हो 46 40 पॉइंट, देन 31 पॉइंट, 24 23 20, ज्यादा गैप नहीं है। अगर आप जितना नीचे आप आते रहोगे उतना गैप जो है वो ज्यादा कम होता रहेगा। अगर हम बात करें #10 पे जो टीम है, ये यहाँ पे अगर गलत न हो तो 18 पॉइंट है। बात करें गाइज अपने सेकंड चार्ट के बारे में, सो सेकंड चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आज का दिन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा वाइब्स का रहा नहीं है, तो 4 मिरेकल वाइब्स इज इन 11th रैंक, देन लियो स्पोर्ट्स, TRZ, DRS गेमिंग, हाई वोल्टेज, देन वेनम, SITM, एलिमेंट्रिक्स, रॉ एंड बैड इंटेंशंस वंस अगेन ऑन द बॉटम रैंक। बट इट्स ग्रेट लर्निंग रहेगी ये बैड इंटेंशन के लिए इस सीजन, जो भी रहा है अप्स एंड डाउन्स, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि जब आप खेलते हो, लाइक एक तो आपको समझ रहे हो ना गाइस, एक्सपीरियंस टीम्स के सामने आते कई बार चीजें ऊपर नीचे रहती है, न्यू मैट है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड होप सो आगे आने वाले दिन पे वो अपनी लाइक जितनी की तरफ से जो गलतियां हो रही है उस पर फोकस करके देन हमको एक अच्छा परफॉर्मेंस बैड इंटेंशन की तरफ से देखने, वेरी बेस्ट टू बैड इंटेंशंस। बात करें गाइस ओवरऑल रैंकिंग की भी, वो भी बहुत ही जल्दी दिखा देनी चाहिए। यस गाइस, हियर वी गो, द ओवरऑल रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने। गणित मैथ लगा लीजिए, 4 मिरेकल वाइव्स 473 पॉइंट, सॉल्वर्ड स्पोर्ट्स 457 पॉइंट्स,
तो आप गणित मैथ लगा लीजिए, काफी ज्यादा गैप कम कर चुकी है स्टॉलवर्ड। आज के दिन की बात करें 59 पॉइंट का डिफरेंस था आज का दिन स्टार्ट करने से पहले, अभी का डिफरेंस आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थर्ड पे गाइस बात करेंगे, ओवरऑल हम बात करें तो T2 के स्पोर्ट्स 316 पॉइंट है एंड बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से बकल अप कर रही है ये टीम, जो कि देखने में मजा आ रहा है। बट गैप अगर आप देखते हो 1 और 2 का अलग है, थर्ड रैंक से अगर आप नीचे देखते हो वो गैप बिल्कुल अलग है। मैसिव खेल रही है वाइब्स एंड एसटीई। परफॉर्मेंसेस गाइस बात करें, यहाँ पे आपको मैटर करता है ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचना, बोनस पॉइंट्स, बट ग्रैंड फाइनल्स की परफॉर्मेंस एक ऐसी परफॉर्मेंस है सबसे, क्योंकि वहीं से आप विनर बनोगे, वहीं से आपको पीएमडब्ल्यू आई की टिकट, वो भी ध्यान रखना, वहीं से आपको साउथ एशिया चैंपियनशिप का टिकट मिलेगा। सो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी आप अपने व्यूज नीचे कमेंट करके बताते रहिए। बाकी अगर बात करें T2 के DRS वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम, अभी तक कंसिस्टेंट निकल कर आ रही है। अगर हम नेपाल से बात करें IHC स्काईलैश गेमिंग, क्या बात है, स्काईलैश गेमिंग ने भी काफी अच्छा यहाँ पे कमबैक करा हुआ है। लाइक आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट एंड ओजीएस्ट रोस्टर है स्काईलैश गेमिंग का, बहुत अच्छा। इस टीम ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है, दैट इज लियो स्पोर्ट्स। काफी बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। डे वन से अगर हम इनको आज तक देखें, इनके ऊपर हमने इंप्रूवमेंट ही देखी है। फर्स्ट एंड सेकेंड डे वीक 1 का था, काफी अच्छा खेला, देन एक डाउन फेज आया, देन इन्होंने फिर से अपना फाइट करा, देन फिर से इन्होंने चीजों को बिल्कुल करेक्ट करने का ट्राई करा, देन ऊपर उठ के आए अपनी गलतियों से सीख के, एंड दिस टीम इज डूइंग टू ग्रेट। दे आर फ्रॉम नेपाल टू, एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको एक राइजिंग स्टार्स इनमें देखने को मिले एज अ टीम। देन मैप टैक्सी स्पोर्ट्स I8 क्रू, वीक 2 वाज गुड फॉर देम, वीक 1 अच्छा नहीं था। जैसा मैंने आपको बोला, जब भी टीम कोई लाइक फर्स्ट एवर टाइम खेलती है लॉबी में, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, टीम सीख के आती है। लाइक वीक 2 देखा होगा आपने, काफी इंप्रेस करा। I8 क्रू टील अगर हम बात करें अभी के टाइम पे डिसेंट है, 18 पॉइंट है, अभी 4 दिन और बचे आपके पास, 4 या 12 मैचेस और है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हाई वोल्टेज गाइस आपकी 10th रैंक की टीम है एंड 251 पॉइंट के साथ। ST ओनली 4 चिकन ओवर MV 9 चिकन, यस मेरे भाई, यस मेरे भाई। बाकी गाइज अगर बात करें सेकंड लीडर बोर्ड के बारे में, तो डाटा गाइज है गाइज 240 पॉइंट्स, NB स्पोर्ट्स 235, सील 219, अब्रप्ट स्लेयर्स 209, वेनम डी 199, देन कुन्यो TRZ 198, रॉ ऑफिशियल्स 177, SITM स्पोर्ट्स 174, एलिमेंट्रिक्स स्पोर्ट्स 159 एंड बैड इंटेंशंस 97 पॉइंट के साथ अभी आपको रैंकिंग देखने को मिल रही होगी। ओवरऑल स्टैंडिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अगर कुछ स्टैट आते हैं तो वो आपको दिखाया जाए, कुछ स्टैट लाइव स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। एलिमिनेशन लीडर बोर्ड, ईस्ट ऑन अनदर लेवल, डॉक ऑन अनदर लेवल विद 19 एलिमिनेशंस एंड 82 एलिमिनेशंस। पीछे पीछे टॉप पाजी यहाँ पे द ग्लोबल राइजिंग स्टार और MVP आप बोल सकते हो, एंड एक्शन भी पीछे नहीं है, एंट्रीज डल रही है 91 एंड 87, एंड यहाँ पर नो फियर 72 एलिमिनेशन। काफी अच्छा लगा गाइस यहाँ पे। आई वांट कि और रीजन की टीम्स भी एलिमिनेटर लीडर बोर्ड पे आए एंड और ज्यादा कंपटीशन देखने को मिले। लाइक 4 नंबर्स यहाँ पे मंगोलियन रीजन के, एक नेपाल रीजन की टीम दिख रही है। आने वाले टाइम पे हम चाहेंगे कि और टीम्स ऊपर आए, बकल अप करे एंड फाइट करे। बाकी आप अपने व्यूज नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी एलिमिनेशन लीडर बोर्ड के साथ डे समरी, अगर हम आज के दिन की ओवरऑल सिनारियो की बात करें, फर्स्ट चिकन बाय T2 के, देन स्टॉलवर्ड, देन डेडा गाइस, देन स्काईलैश गेमिंग एंड मैपटेक्स। आज के दिन के पूरे 5 मैचेस में 3 चिकन डिनर है नेपाल रीजन के, 2 है मंगोलिया रीजन के, दैट इज ST मैपटेक्स। बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए आई गाइस हमारा हो चुका है कंप्लीट, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन रिस्पेक्ट एवरी रीजन, रिस्पेक्ट एवरी टीम, रिस्पेक्ट एवरी प्लेयर। आज के दिन स्ट्रीम करके बहुत ज्यादा मजा आया। बाकी अगर आपके कुछ व्यूज अगर आप पूछना सकते हो थोड़ी देर के लिए, हम लाइव है, नीचे कमेंट करके जरूर। इज दिस फाइनल्स, दिस इज द लीग स्टेज मेरे भाई रे सलमान भाई, दिस इज द लीग स्टेज। फाइनल्स, ग्रैंड फाइनल्स आपका अभी होगा, जो कि आपका नेक्स्ट वीक होने वाला है। ब्रो ऐसे में वीक 3 क्यों है ब्रो? फॉर्मेट है, जहाँ पे जैसा सीन वहां पे वैसा होता ही है, समझ रहे हो, टेंशन ना लो। ब्रो ऐसे में वीक 3 क्यों है? बता दिया ब्रो, बता दिया मैंने, है क्यों नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्राजील में भी 2 ही टीम हमेशा जीती है, A7 और लूप्स। अभी के टाइम पे गाइस फ्लैमिंगो, यार भाई फ्लैमिंगो भी बहुत अच्छा खेल रही है। एक टीम और है वहां पे जो अच्छा खेल रही है, 4-5 टीमें हैं जो अभी के टाइम पे ब्राजील पे काफी अच्छा खेल रही है। अगर आप अच्छे से नोटिस करते हो गाइस, देयर आर लॉट ऑफ टीम्स।
थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको अच्छी चीजें और देखने को शायद मिल सकती है आगे आने वाले। बाकी इसके अलावा कुछ गाइस यूनिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहो तो आप जल्दी से पूछ सकते हो हमारे चैट बॉक्स के अंदर। हमारा चैट बॉक्स बिल्कुल खाली है। ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल कॉल कर देना। बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग चीज है भाई, एक और बंदे का टीम अभी रिसेंटली बैन हो गया है, अकाउंट बैन हो गया है पीएमपीएल यूरोप में, ऑन गोइंग टूर्नामेंट वाला, जैसे उसका हुआ था। इस बार इंडियन टीम्स होती तो मजा आता है ऐसे सीन। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, आने वाले टाइम पे सब शॉर्ट शॉर्ट चिल रहने का, चिल बाबा, चिल रहने का बाबा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना चिल रहोगे उतना चीजें उतनी बेटर रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा चिल उतना ज्यादा बढ़िया सीन। तो गाइज एक बार जाने से पहले जो भी आपकी फेवरेट टीम है, चाहे वो पीएल हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो बीजेएमआई की टीम्स हो, चाहे वो पीएमपीएल कोई भी रीजन का हो, तो एक बार साउथ एशिया हो, नेपाल रीजन की टीम हो, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है एक बार नीचे कमेंट करके विद द लाइक पॉजिटिव रेड हर्ट के साथ स्पैम कर देना। अगर आप पीएल में लाइक नोवा को भी सपोर्ट करते हो तो नोवा एंड एक रेड हर्ट के साथ स्पैम कर देना। इफ यू आर सपोर्टिंग लाइक हेयर एसटी तो एक बार रेड हर्ट के साथ स्पैम कर देना। बीजेएमआई में आपकी बहुत सारी फेवरेट टीम्स होगी तो एक बार उनके साथ भी स्पैम कर देना। लाइक सोल गॉडल हो गई आपकी, लॉट ऑफ टीम्स। एक्सो की बात करें, ओजी है हमारी यहाँ पे टीम 7 सी, लॉट ऑफ टीम्स, बहुत सारी टीम्स है। ब्राजील में आपकी अल्फा 7 होगी। सो जो भी आपकी रीजन की फेवरेट टीम है, स्ट्रीम एंड कर रहे हो जाने से पहले एक बार हर्ट स्पैम करके आपकी फेवरेट अलग अलग रीजन में कौन कौन सी टीम है एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। लेट्स गो बॉयज, हर्ट भी स्पैम करना वो मत भूलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज गाइस एक बार स्पैम करते रहना, उसके लिए और हम एंड करेंगे अभी स्ट्रीम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट ब्रो। आईपीएल देखो जाके यार, हम भी आईपीएल देखते जाके अभी। आपको क्या लगता है चाइना से कौन सी टीम आएगी ब्रो परफॉर्म? यार वहां का नहीं आप बता सकते बिल्कुल भी, क्या पता लास्ट मोमेंट कौन सी टीम है शॉर्ट टूर्नामेंट पे क्या जाए। ऐसी टीम भी हो सकती है जिसने अभी तक कंसिस्टेंट ही नहीं खेला है वीकली फाइनल्स में रैंकिंग में, एंड वो शॉर्ट टूर्नामेंट में कुछ आउट आउट ऑफ द लाइक आउट ऑफ द बॉक्स खेल जाए एंड परफॉर्म कर जाए। तो बहुत अलग से सीन हो सकते हैं। सो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी यस, जैसा मैंने आपको बोला, लव यू टू मेरे भाई रे सलमान भाई, लव यू टू, लव यू थ्री, लव यू फोर भाई, लव यू फाइव। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइज। आज के लिए स्ट्रीम करेंगे ई एंड करेंगे ई एंड, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं कल 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 मिलेंगे गाइस। एंड शुभांकर दास भाई अगर आप देख रहे हो, रिलैक्सिंग भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट्स फॉर द डे। गाइस जल्दी से अगर आप देख रहे हो 188 लोग हो यार, जल्दी से इसको 1000 करवा दो। 873 है, क्या कर रहे हो गाइस? एक साथ दबा दो, मेरे को पता है काफी लोगों ने 200 लोगों ने लाइक एक साथ नहीं दबाया होगा, दबा दो एक साथ और इसको 200 लाइक करवा दो। बाकी आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन रिस्पेक्ट एवरी रीजन, रिस्पेक्ट एवरी टीम, रिस्पेक्ट एवरी प्लेयर। तब तक मजे मारे यार, बाकी कल मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।